ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को आपापल्या प्लेयर्स आपापल्या डगआउटान येवन बसचे। आमी ओपनिंग सेरेमनीक आता रोखडेच सुरवात करतात। हांव रिक्वेस्ट करता इस्माईल बाब शेख, वायस प्रेसिडेंट ऑफ जीसीसी फाटोडा आनी आयचे मानाचे सोयरे योगीराज बाब कामत हांकां सन्मानान माचयेर व्हरचें।
तसोच हांव रिक्वेस्ट करता मुश्ताक बाबाक माचेर व्हरपाक प्रमोद बाब मामरेकर सेक्रेटरी जीसीसी फातोर्डा आणि तांकां मुश्ताक बाबाक सन्मानान माचेर व्हरचें. CEC has a owner and one of the main sponsors Mushtaq Bab Ahmed देव बरें करूं. तशेंच ट्रेजरर ऑफ जीसीसी फातोर्डा शमीम उलाल म्हाका रिक्वेस्ट करतात आणि अनेक स्पॉन्सरर आमचे इजाज शेख ओके तशेंच करीम भाई हांकां रिक्वेस्ट करता अभिजीत हांव रिक्वेस्ट करता जितले जे टीम ओनर्स ऑर मार्की प्लेयर्स आयचे दिसाचे खेळटात ना जाल्यार टिमीचे प्लेयर्स ऑफ डिफरंट टीम्स मातशे या मातशे मुखार सगळ्यांक रिक्वेस्ट मातशे जी स्टेज घाल्या तेजे मुखार मातशे येवन बसात द ओनर्स द मार्की प्लेयर्स ऑफ ऑल द टीम्स
You are requested to please come near the stage. पहिली मॅच जी जातली ती ऑक्सफर्ड टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा हांचे मदीं जातली. हांव मागता रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डाचे ओनर्स आशिष बाब इरेकर तशेंच मार्की प्लेयर विकी नायक आणि ऑक्सफर्ड टायटन्साचे नसर मुल्लम आणि सरफराज नवाजो तांचो मार्की प्लेयर आसा. हांकां रिक्वेस्ट आसा मातशे आपल्या टीम रेडी करात आणि बाकीचे जे ओनर्स आसात अमेझिंग सुपर जायंट 6 स्टार 6 सुपर किंग्स आणि रोहित इंडियन जे आयचे मॅच पयली दिसा खेळटले तांकां रिक्वेस्ट तांणी मातशी माचे कडेन येवचें along with their marquee players and the owners as well. So starting the opening ceremony in just 5 to 10 minutes time.
परत एकदा रिक्वेस्ट करता फर्स्ट जो टीम मॅच खेळपाची आसा ऑक्सफर्ड टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा. प्लीज नोट तुमची पहिली मॅच जातली आणि ओपनिंग जेन्ना टॉस जातलो तेन्ना दोन्ही टीमी हजर आसपा जाय फॉर द टॉस अँड इनॉग्रल सेरेमनी. सो प्लीज नोट करात ऑक्सफर्ड टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा हो कॉल तुमकां वता. तशेंच बाकीचे ज्यो टीमी आज खेळटात अमेझिंग सुपर जायंट्स, 6 स्टार, 6 सुपर किंग्स आणि रोहित इंडियन्स हांकांय रिक्वेस्ट आसा मातशे तुमचे ओनर्स आणि मार्की प्लेयर जे कोण आसात ते मातशे स्टेजी कडेन येयात. रिक्वेस्ट करता जे प्लेयर्स हांगा पाविल्ले आसात, जे प्लेयर्स आयची टीम आज मॅची खेळटले तांकां रिक्वेस्ट मातशे जाता तितले बेगीन स्टेजी कडेन येयात. जे टिमी हांगा आनी प्लेयर्स पाविल्ले आसा तांकां रिक्वेस्ट करता विकी मार्की प्लेयर आनी ताजी टीम जी आसा जाता तितले बेगीन जर्सी चेंज करा. तुमी पयली मॅच खेळपाचे आसात. सो प्लीज डोंट वेस्ट टायम. मागीर तुमकां वॉर्म अप करपा जाय. पूण इनॉग्रल सेरेमनी जी जातली ती ऑक्सफर्ड टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा हांचे मदीं जातली. सो तुमी नोट करात फर्स्ट मॅच तुमची म्हणटा तुमकां टॉस उडोवपाक ग्रावंडा मदीं येवपा जाय अलॉंग विथ द गेस्ट.
हांव मागता प्रेसिडेंट जीसीसी फातोर्डा मुझफ्फर बाब शेख तशेंच तशेंच ट्रेजरर शमीम आलम आनी सेक्रेटरी प्रमोद बाब मांद्रेकर हांणी आमचे आयचे दिसाचे मुखेल सोयरे श्री विजय बाब सरदेसाय, गोंय राज्याचे आदले उपमुख्यमंत्री तशेंच फातोर्डेचे धडाडीचे आमदार विजय बाब सरदेसाय हांकां सन्मानान माचयेर व्हरचें. सो आमचे सगळे मानेस्त स्टेजीर बशिल्ले आसा, चीफ गेस्टूय पाविल्लो आसा, मुखेल सोयरे मानाचे सोयरे सगळे हांगा पाविल्ले आसा. हांव मागता तशेंच मुझफ्फर बाब शेख प्रेसिडेंट जीसीसी फातोर्डा, तशेंच इस्माईल शेख वायस प्रेसिडेंट जीसीसी फातोर्डा, प्रमोद बाब मांद्रेकर सेक्रेटरी जीसीसी फातोर्डाचो, तशेंच शमीम आलम ट्रेजरर आनी सिनियर जीसीसी मेंबर करीम भाई आनी आमीर भाई हांकां रिक्वेस्ट करता तांणी मातशे माचयेर बसका घेवची. चड टायम काडना कारण गेस्ट हॉलिडे राविल्ले आसा आनी गरमी जाता, माटवान चड गरमी जाता म्हणून बेगीन या आनी मुखार या. चल या फुडें. हें सांगून हांव मागता मुझफ्फर बाब शेख हांणी आमचे आयचे दिसाचे मुखेल सोयरे श्री विजय बाब सरदेसाय फातोर्डेचे धडाडीचे आमदार हांकां एक बुके दिवन तांचो सन्मान करचो. तशेंच इस्माईल बाब शेख वायस प्रेसिडेंट जीसीसी फातोर्डा हांकां रिक्वेस्ट करता तांणी आयचे दिसाचे मानाचे सोयरे श्री योगीराज बाब कामत हांकां बुके दिवन तांचो सन्मान करचो. तशेंच प्रमोद बाब मांद्रेकर सेक्रेटरी जीसीसी फातोर्डा हांकां रिक्वेस्ट करता आमचे एक बरे मागपी आनी बरे स्पॉन्सर मुश्ताक बाब अहमद हांकां एक बुके दिवन तांचो सन्मान करचो. तशेंच ट्रेजरर ऑफ जीसीसी फातोर्डा शमीम आलम हांकां रिक्वेस्ट करता इजाज बाब शेख हांकां एक बारीकसो फुलाचो तुरो दिवन तांचो मान वाडोवचो. तशेंच आनी एक आमचे जे स्पॉन्सर आसा हांव मागता करीम भाई हांचे लागीं तांणी आयचे आनीक स्पॉन्सर्स बरे मागपी अभिजीत बाब हांकां एक बारीकसो गुलाब दिवन तांचो सन्मान करचो. फुलांचो परमळीत येवकार जाल्लो आसा आनी येदो व्हडलो टुर्नामेंट जो फातोर्डा घडटा, गोवाज बिगेस्ट टेनिस क्रिकेट लीग साउथ गोवा प्रिमियर लीग जो ऑर्गनायज केला जीसीसी फातोर्डा. भव्यशी दिव्यशी स्पर्धा जातली 3 दिसाची आनी हाचे डिटेल्स सांगपाक आनी सगळ्या मानेस्तांक येवकार करपाक हांव मागता प्रेसिडेंट जीसीसी फातोर्डाचो मुझफ्फर बाब शेख हांणी येवकाराचे उलोवप करचें. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हणटा. 10:30 स्टार्ट जावपा आशिल्लें, मातशें वेळ जालो आमकां. 10:30 11:30 जाली. जीसीसी फातोर्डा तर्फे आयची आमचे मुखेल अतिथी आसा बाब विजय सरदेसाय तांचो हांव स्वागत करता आयचे हे साउथ गोवा प्रिमियर लीग येदो व्हडल्या टोर्नामेंटान. तशेंच आयज आमचे मदीं बाब योगीराज आसात, आमचे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिगंबर बाब हांचे सुपूत, तांचो हांव स्वागत करता. तशेंच आमचे मांचेर आसा बाब एजाज आनी बाब आमगेलो मुश्ताक भाई आनी अभिजीत. तशेंच आमगेले सगळे जे कमिटी आसा ऑर्गनायझींग कमिटी आनी हांगा आयिल्ले सगळे पार्टिसिपेटींग टीम्स, तांचे ओनर्स, तांचे मार्की प्लेयर्स आनी जे ऑडियन्स जे आसात आनी आमचे जे मॅच ऑफिशियल्स जे आसा सगळ्यांचो ह्या टोर्नामेंटाचो स्वागत करता. गांवठी क्रिकेट क्लब जीसीसी आमचो हो एक ड्रीम प्रोजेक्ट. गेल्ल्या वर्सा जेन्ना आमी टोर्नामेंट गेल्लो म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत लेवलीचेर तेन्नाच आमी एक क्रिकेट प्रेमी जे आसा गोंयकारांक तांकां सांगिल्लें की फुडल्या वर्सा आमचे तर्फे एक व्हडलो इव्हेंट येतलो म्हणून. आनी आमी जे उतर दिल्लें तें आमी उतर आमी राखून दवरलां आनी राखलें तें उतर आमी आनी येदो व्हडलो टोर्नामेंट आतां तुमचे मुखार आमी हाडला. गोंयांत पयली फावटी असो एक प्रिमियर लीग जातलो साउथ गोवा प्रिमियर लीग. हे कन्सेप्ट सारको IPL भशेन 10 टीम्स थ्रू दी ऑक्शन ओनर्सां सेल केले. तशेंच गोंयचे टॉप 220 प्लेयर्स, गोंयचे जे लोकल प्लेयर्स जे आमच्या गांवांनी आमच्या शारांनी खेळपी जे प्लेयर्स आसात
तांकां एक बरो प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर तांचें लेवल वाडोवपा खातीर जें आमचें इंटेंशन आसा आनी टेनीस क्रिकेट जें आसा तें खंय ना खंय बरे लेवलीचेर हाडपाचो इंटेंशन जो आसा त्या इंटेंशनान आमी हो टोर्नामेंट केल्लो आसा आनी त्या इंटेंशना मुखार व्हरत आमी जे प्लेयर्सांचें रेजिस्ट्रेशन करून घेतलें आनी तांकां ऑक्शनान घातलें आनी तुमी बिलीव करचें ना की इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो की सगळ्यांत म्हारग प्लेयर जो आसा ह्या टोर्नामेंटाक 19,500 गेल्लो आसा. जे आमचे गांवचे आमचे शारांचे जे लोकल प्लेयर्स टेनीस खेळटाले तांकां कोणूच एक प्लॅटफॉर्म दिनाशिल्ले तांकां कितें इतली रिकॉग्निशन मेळनाशिल्ली पूण जीसीसी फातोर्डान तांकां रिकॉग्निशन दिवपाचो एक प्रयत्न केला आनी हो जो इव्हेंट आसा आमगेलो फुडल्या वर्सा हेज्यानी व्हडले लेवलीचेर जातलो आनी आमी आयज तुमकां आनी एक हें आश्वासन दिता की जे लेवल जी आसा हेज्यानी 10 पट वयर आमी लेवल करतले आमच्या टोर्नामेंटाचो आनी खऱ्यांनी जो टेनीस क्रिकेट जो आसा ते दुसरे स्टेट्सांनी जाता कर्नाटक जावं महाराष्ट्रा जावं एक टेनीस क्रिकेटीचो लेवल आसा थंय आनी जायते जे कॉर्पोरेट्स जावं इवन जायते लोक जावं ते टेनीस क्रिकेट प्रमोट करतात ते तो कल्चर आमी गोंयांत हाडपाक सोदतात. अशी जातलें कितें की बऱ्यांतल्या बऱ्या प्लेयरांक बरो एक संदी मेळटली आपली परफॉर्मन्स दाखोवपाची. चड वेळ घेयना मॅच स्टार्ट करपा जाय गरमी चड आसा चड्याचो परत एक फावटी येवकार करता आनी बरे भशेन एक टोर्नामेंट खेळया आमी लोकांक बरो एंटरटेनमेंट दिवया आनी लेट्स प्ले इतलेंच म्हणून म्हजी 9 काबार करता. देव बरें करूं. बरी सुरवात म्हणटा ती लेट्स प्ले. हांव ताचे पयलीं रिक्वेस्ट करता जे टीम ओनर्स आनी मार्की प्लेयर्स आसात जे आज खेळपाचे आसा ऑक्सफोर्ड टायटन्साचो ओनर बाय नसर मुल्लम आनी मार्की प्लेयर सरफराज नवाज रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा आशीष शिरेकर ताजो मार्की प्लेयर विकी नायक अमेझींग सुपर जायंट्स केतन नायक आनी ताजो मार्की प्लेयर मतीन खान नाजाल्यार नरू तशें 6 स्टार 6 सुपर किंग्स दीपक नायक हो जो ओनर आसा आनी मार्की प्लेयर आपाली कलंगुटकर रोहित इंडियन्साचो शेखर बाप्पिले तशेंच मार्की प्लेयर संदेश ठाकूर जे कोण आसात हांगा ताणें मातशें मुखार येवचें. सगळ्याक रिक्वेस्ट ओनर्स आनी जे बाकीचे आसा प्लेयर्स तांकां रिक्वेस्ट परत एकदां ओनर सगळ्या ऑर्गनायझरा वतीन मातशें मुखार येवचें तुमचो भोवमान करपाचो आसा तुमचो सन्मान करपाचो आसा. एक पाल मुखार वता. आयचे आमचे मानाचे जे सोयरे आसात योगीराज बाब कामत खरें म्हणल्यार तांचे बापूय जे आसा जे आदले मुखेलमंत्री गोंय राज्याचे दिगंबर बाब कामत येवपाचे आशिल्ले पूण कांय कारणास्तव पावले ना पूण म्हाका दिसता योगीराज ही सोशल वर्कांत तितलोच इनवॉल्ड आसा प्लस ताका क्रिकेटीचो मोग आसा. म्हाका खबर आसा की ते बाकीच्या एक 2-3 लिगां भितर तांचो पर्सनल इनवॉल्वमेंट आसा आनी खेळटाय बी ते आनी क्रिकेटी कडेन तांचो कल मातसो चड आसा. सो हांव मागतां आयच्या दिसाक मानाचे सोयरे बाब योगीराज कामत हांणी आपली उतरां संबोधची. सगळ्यांक हांगा माचयेर बशिल्ले हांकां सगळ्यांक पयलीं हें करता आनी जीसीसी हांकां इतलो व्हडलो लीग ऑर्गनायज केला म्हणून कॉंग्रेच्युलेशन्स. बरे भशेन आमकांय हांगा अशें आउटडोर रातचे बी येवन पळोवपाक मेळटलें लायटींग बी बरें केलां तांणी आनी अशेंच एवरी इयर तांणी असो बरो इव्हेंट करचो म्हणून कॉंग्रेच्युलेशन्स. इल्ली उतरां पूण मोलादीक उतरां आनी वेट आशिल्ली उतरां अशी दिल्या योगीराज बाब कामतान. नेक्स्ट आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे तांचे बद्दल सांगपाचें म्हाका गरज ना कारण अख्खे फातोर्डाक खबर आसा की आज आमी पळयता की तांणी एक स्वप्न साकारिल्लें की फातोर्डा म्हणटा ती नगरी एक अशी जातली भव्य दिव्य आनी सुशोभीत आनी फ्युचरिस्टीक डेवलॉपमेंट तो जावं खंयच्या बाबतींत जावं डेवलॉपमेंट आमी म्हणटात की रोड्स हे ते म्हणजे कॉमन डेवलॉपमेंट पूण डेवलॉपमेंट म्हणटा तो इंडिविज्युअल डेवलॉपमेंट आनी ओवरऑल डेवलॉपमेंट फातोर्डाचो जातलो तो तांणी मनान चिंतिल्लो आनी म्हाका दिसता खंय तरी तें ध्येय सादे जालां. गोंयकारपण मनान घेवन आनी चल या फुडें म्हणजे सदांच मुखार वचपाचो ध्येय घेवन आसता तो फातोर्डेचो धडाडीचो आमदार गोंय राज्याचो आदलो डेप्युटी सीएम श्री विजय बाब सरदेसाय जे जावन आसा मुखेल सोयरे. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तांणी ह्या वेळार आपली उतरां संबोधची. माचयेर आशिल्ले बाब योगीराज दुसरे सगळे मानेस्त आनी जीसीसीचे वांगडी हांगा पार्टिसिपेट जाता त्यो सगळ्यो टिमी भावांनो आनी भयणांनो. मुजफ्फरान सांगला ते भशेन जीसीसीन जें कितें सुरवात केल्लें तें फुडें गेल्लें आहा. फुडें म्हणल्यार ताणें म्हणलें की एक आमी एक कॅलेंडर इव्हेंट कसो क्रिकेटीन टेनीस बॉल क्रिकेटीन बरे लेवलाचेर आमी ऑर्गनायज करतले अशें ताणें उतर गेल्या वर्सा दिल्लें तें ताणें ह्या वर्साक करून दाखयलेलें आहा. हाजे खातीर ताका हांव परबी दितां
आनीक उतर दिवंक सोदता की जो सपोर्ट GCCक आनी तांकां सगळ्यांक हो टोर्नामेंट हे जाग्यार करपाक म्हजो आज मेरेन तेंको तांकां मेळ्ळा आनी तो सदांच मेळटलो हें हांव तांकां उतर दितां. GCC म्हणल्यार गांवठी क्रिकेट क्लब मरे, पुणून ऑर्गनायज केले ते भशेन गांवठीशें कांय दिसना. सगळें नॅशनल इंटरनॅशनल स्टायलीन केल्लें आहा. सो इवन गांवठी इज गोईंग फॉरवर्ड. सो तें पळोवंक सगळ्यांक बरें दिसता आनी अशेंच जावचें आनी ऑल द बेस्ट टू ऑल द टिम्स. थँक्यू. देव बरें करूं. तशेंच जी आयची टीम पयली मॅच खेळपाची आसा तांकां रेडी रावपाक लायता. जाता तितले बेगीन टायम वेस्ट करपाचो ना. ऑक्सफर्ड टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा हांची पयली मॅच जातली. सो तुमी मातशे रेडी रावात. ताचे पयलीं इंट्रोडक्शन ऑफ टीम एंड इट्स ओनर्स, स्पेशली द ओनर्स जाणी खूब हातभार लायला. हांव रिक्वेस्ट करता वन बाय वन ओनर्स ऑफ डिफरंट टीम्स कोण आसा ते 6 स्टार 6 सुपर किंग्साचो बाब दीपक नायक हांगा आसात. हांव तांकां माचयेर येवन एक बारीकसो गुलाब घेवन तांचो सन्मान करपाचो सोदला. हांव मागता योगीराज बाब कामत हांणी तांकां एक गुलाब दिवन तांचो सन्मान करचो. तशेंच शेखर बाब पिले हांगा आसात. हांव शेखर बाब पिलेक रिक्वेस्ट करता माचयेर येवचो आनी तांचो भोवमान करपाक हांव रिक्वेस्ट करता बाब मुश्ताक अहमद हांणी तांकां एक बुके दिवन तांचो येवकार करचो. ओनर ऑफ रोहित इंडियन्स. तशेंच इजाज बाब शेख हांकां रिक्वेस्ट करता तांणी सन्मान वाडोवचो. बाब नसर मुल्लम जर आसा हांगा, शी इज कमिंग सो वी कॅन वेट फॉर हर. तशेंच बाकीचे जे दोन ओनर्स आसात केतन बाब नायक आनी आशीष शिरेकर हांणी मातशे रेडी रावचें. माचे कडेन येवन रेडी रावचें. IPL ही सुरवात जाल्ली आसा आनी धबाक्यान बरी सुरवात जाल्ली आसा शेनवारच्यान आनी तोच IPLाचो बारीकसो कॉन्सेप्ट घेवन हांगा आमकां 3 दीस सामको एंटरटेनमेंट आनी जो क्रिकेटीचो मोगी आसा टेनीस क्रिकेटीचो तांणी हांगा अवश्य येवचें आनी येदो व्हडलो भव्य दिव्य असो टुर्नामेंट पळोवचो. नसर मुल्लम हांव रिक्वेस्ट करता तुवें तुजो भोवमान एक बारीकसो गुलाब घेवचो. तशेंच अभिजीत हांकां रिक्वेस्ट करता तांणी बाब केतन नायक ओनर ऑफ अमेझींग सुपर जायंट्स हांचो भोवमान करचो. नाल्यार अमेझींग सुपर जायंट्साचो आनी कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा? ओके. तसोच आशीष बाब हिरेकर रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा हांचो भोवमान करचो. आशीष आयिल्लो आसा. एनीवन फ्रॉम अमेझींग सुपर जायंट्स? एनी रिप्रेझेंटेटीव फ्रॉम अमेझींग सुपर जायंट्स? कोण ना जाल्यार मुक्तो मार्की प्लेयर्स तांचे इंट्रोडक्शन त्या मागीर घेवया. सगळ्यात पयलीं गेस्ट ऑलरेडी आसा आनी म्हाका दिसता गरमी आसा आनी स्टेजीर मातशी गरमी चड जाता आनी स्वेटींग चड जाता. हांव रिक्वेस्ट करता माचे वयले जे गेस्ट आसा तांणी मातशे माचे वयल्यान देंवचें कारण आतां एक बारीकशी रिबन कटींग सेरेमनी तशेंच केक कटींग जो ऑर्गनायज केल्लो आसा GCC फातोर्डान ताज्या खातीर आमी मातशे माचे वयल्यान सकयल देंवया आनी टुर्नामेंट जाता तितले बेगीन सुरवात करया.
आता आमी हांव रिक्वेस्ट करता दोनूय टिमी ज्यो पयली मॅच खेळपाची आसा ऑक्सफर्ड टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा मातशे रेडी रायात आनी जात तितले बेगीन पिची मदीं येयात. दोनूय टीम ऑक्सफर्ड टायटन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा आतां रिबन कटींग सेरेमनी सुरवात करता. हांव मागता आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे विजय सरदेसाय हांणी रिबन कट करून एक उक्तावण सोहळ्याक फुडाकार सगळे जीसीसीचे मेंबर्स आनी बाकीचे जे गेस्ट आसा योगीराज बाब कामती हांगा आसात जे मानाचे सोयरे सगळ्यांनी मेळून हे रिबन कटींग करचें. विजय बाब सरदेसाय राविल्लो आसा ऑलरेडी. Three, two, one, go. फुडले सुवातेर बारीकशे म्हणल्यार केक कटींग सेरेमनी हांगा आमी दवरिल्ली आसा. हांव मागता मानाचे सोयरे बाब योगीराज बाब कामत हांगा येवचें. योगीराज मातसो मुखार येवचो. योगीराज बाब कामत. योगेश बाब मातशे मानाचे बाकी बरोबर रावात. मातशे मुखारल्यान सायडीन रावात कारण वयल्यातल्यान युट्यूब रावल्या कांय दिसपाना. तेच केक कटींग जाल्लो आसा. केक पयली कोण कांय सकाळ प्रेसिडेंट केक आनी बलून रिलीज करता. सगळे गेस्ट बलून रिलीज करता. हांव मागता जीसीसीचे मेंबर हांणी मातशी ही स्टेज आसा ती मातशी क्लियर करची केकाची. आनी बॅटिंग मलिटीज members please take table outside. Muzaffar bhai clear करपा जाय स्टेज. so let this table be taken outside. तशें आमचे गेस्ट आसा बॅट आनी बॉल हाडा मातशे. requesting organizers please get one bat and ball for the guests to play and start the inaugural ceremony. दोन्ही टीमी मातशे बेगीन यात. दोन्ही टीमी बॅट आनी बॉल मातसो बेगीन हाडचो. This match going on YouTube live. It's a wonderful feel here on the ground. This will be a great start for a wonderful tournament that we are waiting for. One of the biggest in Goa. So requesting Vijay Bab Sardesai to have a little bit of batting. मातशी बॅटिंग करची कारण रुलिंगान आनी ऑपोजिशनान बॅटिंग बरी केल्ली आसा. आतां पळोवया क्रिकेट फिल्डाचेर बॅटिंग कशी करता. विजय बाबाचे
जे फादर आसा आकू तेय एक बरे प्लेयर साम बरो क्रिकेटर आणि म्हाका दिसता ताचो एक रायट हँड म्हणटा तो रामनाथ बाळी तोय बरो क्रिकेटर आणि बरो विकेट किपर. सो उमेद आसा आणि एक बाउंड्री पहिल्याच बॉलाक. अनेक बॉल सर, अनेक बॉल. बरो बॉल. विजय सर म्हणटा लेट समवन ट्राय. सर लास्ट मोमेंट हांव दोन्ही टिमी लायनअप करपा लायता. लायनअप करपा लायता आणि नॅशनल एंथम प्ले जातली. जो डीजे आसा ताका रिक्वेस्ट आसा मातशी नॅशनल एंथम रेडी दवरची. बोथ द टीम्स प्लीज लायन अप. योगीराज बाब खेळटा आता ते पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता दोन्ही टिमी एक टीम अशी स्ट्रेट लायनअप कर. अशी स्ट्रेट लायनअप कर. अँड अदर टीम मातशे बेगीन येयात. फ्रॉम द कॅप्टन सारको स्ट्रेट रावत. स्ट्रेट लायनीन रावत. गच करून राव नाका मातशे स्प्रेड जावन जाय. बॉल स्विंग केल्या अनेक गल जायल्या. करीमबाई बॉलिंग घालता. जबरदस्त शॉट मारिल्ले आसा एक बाउंड्रीक. आणि दोन्ही टिमी मातशे लायन जाया. मुख्तार कादरी साहेब आणि बाकीचे सगळे मातशे प्लीज लायन अप फास्ट. दिस टीम्स स्टार्टिंग फ्रॉम कॅप्टन. कॅप्टन मदीं आसपा जायना. कॅप्टन खंय तरी स्टार्टिंगाक आसपा जाय. कॅप्टन ऑर मार्की प्लेयर हुएवर इट इज. हांव मागता आमचे गेस्ट चीफ गेस्ट आणि मानाचे तशेंच आमचे बाकीचे स्पॉन्सर्स आणि मातशे मुखार येवचे आणि ग्रीट करचे प्लेयर्साक. स्टार्टिंग फ्रॉम द कॅप्टन अँड द ओनर. आणि रिक्वेस्ट करता तुम्ही एका प्लेयराचे नाव सांगचे. इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ. योगीराज बाब कामत तशेंच मुश्ताक अहमद जा शेख आणि बाकीचे ऑफ फातोडा आर ग्रीटिंग आणि म्हणून अलॉंग विथ गेस्ट continues his players to the teams. DJ मातशे नॅशनल एंथम रेडी दवर. 5 4 3 2 1 म्हणटकीच लावपाचें जाल्लें आसा. गेस्ट चीफ गेस्ट रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांनी मातशें मदीं येवचें विकेटी कडेन. गेस्ट आनी मदीं येवचें हांगा रावचें. ऑल द गेस्ट अँड स्पॉन्सर्स. टीम विकी आशिष तुमची टीम आसा ती अशी क्रॉस रावची मातशी. ओके यू हॅव टू फेस देर. त्या कॅमेरा फुडें आसा ताका फेस करचें. तुम्ही स्ट्रेट सुद्धा रावपा जाता. स्ट्रेटी रावपा जाता काय प्रॉब्लेम ना. इट लुक्स नायस. गोविंद बाप्पा
सगळ्यांनी एक लाईनी स्ट्रेक चप्पू मातशें क्लोज गेस्ट मातशें बेगीन यात हांगा along with the guest Shamim bhai. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. सगळे मातशे उबे रावात. So now both the captains are requested to come in front for the toss. Captains. Umpire Aslam Sheikh. Babu, must begin here. So captain, it's time for the toss. Discussion. So coin, a special coin adilla sa for the toss. हांव मागता योगीराज बाब कामत ताणें मुखार येवचें आनी पयलीं तांकां सिलेक्शन दिवचें. ना पयलीं सिलेक्शन. सो तूं मागतलो हांव मागता विजय बाब सरदेसाय मातसो मुखार यो आनी टॉस कर फॉर match between Royal Challengers Fatorda and Oxford Titans. Wait. Is the कितें करपा चिंतलां? पहिले बॉल बॉलिंग कित्याक? मातशें आमी सुद्दां मातशें बरें करपाक मेळटलें. कोण इम्पॉर्टंट प्लेयर्स आसा तुजे टिमीन भितर? फर्स्टूच मॅच अजून पर्यंत लोकांक खबर ना पूण एक कॅप्टना कडल्यान आयले जाल्यार लोकांक मातशें इंट्रोडक्शन वतलें. आमचो आउटस्टेशन प्लेयर मागीर गंगाराम इंगोले आसा हे आमचे मातशे इम्पॉर्टंट आसा. तशे बाकीचे प्लेयर आसात जशी गेम वता तशें सगळ्यांक कळटलें. आनी स्कोरान रेस्ट्रिक्ट करपाक फर्स्टूच मॅच तकलेन कितें आसा? आमी 6 ओव्हरीक एक आमी बिलो 50 दवरपाचो ट्राय करतले इतले आमकां चॅक करपाक मेळटलें की आमगे बॉलिंग कशें आसा बॅटिंग कशें आसा ती. Okay, good luck to you, Mukhtar Qadri. What you would have done if you had won the toss? Yeah, of course, I was fielding only because this is the first match. We don't know. We don't have a prediction of the pitch. Let's hope the toss is not important. Match is important for us. And your mind also is very important for your team. Yeah, we having a good lineup as well, batting as well bowling also. That is a toss. Toss is not a game. One playing match, that's important for us. And what are the special players in your team? Yeah, we brought a 3 outside player, 1 genuine batsman, 2 all-rounder, and we having a local good team also. No doubt, Japo is there, Shakil is there, Nonad is there, local players is there, Nodib is there. All over we are also good, they are also good. Who will play good, they will win the match. Hoping to start this inaugural match in a grand fashion. Good luck to both the teams and thank you from my side.
Check. Good morning. A very good day to all the viewers and the players. This is a beautiful tournament organized by County Cricket Club, Fatorda Margao. This is South Goa Premier League, where players from South Goa has been auctioned and been taken by 10 teams which are going to battle out for this 3 days fight, I must say. And what a beautiful arena for the game of cricket at the SAG ground of Fatorda. Meanwhile, requesting the batting team captain to kindly come and select the match ball right in front of the commentary box. So Oxford invited to bat first by Royal Challengers. So requesting captain of Oxford kindly come and select the match ball which is going to be taken for your match. So meanwhile, let's go throughout the rules and regulation of this beautiful tournament. A player So all the players will be briefed by umpires as we are going to play the matches on the ground. Thank you, DJ. Check. Check this. Requesting extra players of both the team kindly join our scorer to write all the stats as the names of the players will be flashed. And it's a compulsory, it's a mandatory for both the teams to kindly send you extra player so that the names of your players will be added on the score sheet.
and it is mandatory for both the teams to kindly send extra player right in the commentary box. So this is a beautiful day, and along with me, we have a team of officials. Senior commentator Ashok Naik has joined in the commentary box, and even Harish Kagodkar is also joining as one more commentator. Meanwhile, two officials out in the middle. Siddesh Naik and Aslam Sheikh, two dashing umpires out in the middle. And now we are waiting for extra players. This is a mandatory. So requesting both the teams, kindly send your extra player in the commentary box. So this is a notice sent out by the organizers that a match to be held if extra players are not there in the commentary box. So requesting both the teams, kindly send your extra player to assist our scorer with the names of your players. As we can see, two teams are fighting out in the opening match of this tournament. Two good teams playing the opener. Royal Challengers Fatorda versus Oxford Titans. And after winning the toss, Royal Challengers Fatorda have invited Oxford to bat first. The match is going to be played for 6 overs, in which there will be 2 power play. First will be compulsory power play, then the option will be with the batting side to select between 2 to 5 overs. Only one bowler will be allowed to bowl 2 overs as per the rules of the tournament. 5 bowlers are compulsory. So all the captains have to note so many things. Meanwhile, we are about to witness the first and the opening match of the tournament. We can see pool of players in red and black spreading out to take their positions. And meanwhile, we can see 2 players out in the middle with the willow in the hand in blue jersey playing for Oxford Titans. Sarfaraz Nawaz is on this striking end and his partner Shai Sheikh. Meanwhile, requesting extra player of the batting team. Captain, kindly send your extra player, otherwise the match may be delayed and there may be so many things that will be into the consideration. Requesting extra player of Oxford Titans. So here we are, inches away from the beginning of this beautiful tournament. What a lovely delivery, equally well played. One is the call, definitely. It is going to be a single. What a setting to start the tournament. Starts with a single. But definitely there will be some of the areas that are to be taken care while playing this beautiful game, as this is a fresh wicket and the tournament has resumed after a very long interval. So definitely that will be a concern for both the captains, as what and how to carry on with the proceedings. What is going to be the total? That will be the main concern. So here we go with the second delivery. Another stylish batsman on the striking end to the keeper. What a lovely delivery. No chance for Sarfraz even to get bat somewhere closer to the ball. Meanwhile, what a delivery bowled by Gangaram. The outstation player has been given the responsibility to start the proceedings by Royal Challengers Fatorda. And what a bowler he is proving to be. Another good attempt. A ball racing away from the fielder. Whether it is going to cross the fence? Yes, it is. And that's the first boundary from the bat of Sarfraz Nawaz. The local guy striking the runs, getting the boundary from nowhere. And with that boundary, score moves to 6.
Still, power play over is on. And definitely there will be some messages in and out for the teammates by the captains as a match is going to be played for only 6 overs. So let's see what is going to be approached from here on. Right now, 52 is the number of Gangaram. Another good pacey delivery, slightly outside the off stump. No chance for Sarfraz as ball goes with immense pace straight to the keeper. So resulting in a dot ball, a short answer by Gangaram. If you are going to pull me, then I also can correct my line and length. Meanwhile, on to his run-up mark with a very long run-up. Right arm over the stumps. Oh my dear, this is a gift offered. Full toss and even no ball is the signal. So total 5 runs into the account. Shake off head by Siddesh, and it's time for DJ. DJ. Well, what a free gift offered. Wanted to do something different. Change in pace, not working for the fielding side, but free gift for Sarfraz Nawaz, and he is a shrewd all-rounder. He is not going to miss such opportunities. Oh my dear, what a hit! Ball has been hit miles in the air, traveling the orbit, and finally landed on the very ground of Fatorda. That's a sixer. And what a way to finish. Thank you, DJ. What a colossal hit towards the square leg, right from the middle of the bat to take the ball out of the boundary rope. And that sixer takes the total to 17 without any loss. What a start. And yesterday we have witnessed the match between RCB and Punjab. What a match that was. Meanwhile, the signal has come that it is going to be the second power play. Batting power play opted by the Oxford Titans immediately after a good start. The power play proving in favor of the batting team. And let's see who is the bowler. It's none other than Brajesh Naik, popularly known as Vicky, a shrewd all-rounder. No need of introduction for this name. Let's see what he can do for his team. And this is going to be batting power play. And we can see 3 fielders being kept out of the 30-yard circle. So these are some modern rules of this modern game, played by the modern players with the modern technique. Let's see what is going to happen. Meanwhile, second over in progress, and it is a batting power play. Good delivery. Oh my dear. And the story continues. First delivery has been called a no ball. Meanwhile, couple of runs. Batsman wanted third. But a good strong throw from the fielder denies the chance of further run. Meanwhile, 3 runs into the account. That sums up the total to 20. And even butter on the bread as no ball awarded a free hit. Shahid is on the striking end. Let's see whether he can strike. He can continue the beating. Or Prajesh, a shrewd bowler. Oh my dear, lovely connection. Fielder inside the circle running, but won't be able to stop the ball from crossing the fence as the full toss deliveries. A brand that have made a beautiful tennis ball that helps the batsman to ease the ball towards the boundary, and that boundary takes the total furthermore to 24. Prajesh feeling the pressure as the batting power plays on and the power hitting continues.
Oh my dear, what a delivery. Vicky is not going to keep quiet for a long time. A brand in Goan tennis, Vicky Naik, showing for what he has been taken in his team as a marquee player. Delivered a good delivery after being hammered for a boundary. Short comeback, whether it is going to prolong. Meanwhile, there's a chance of a catch. Fielder running. Ball lands in no man's area. Meanwhile, a good stop by Rajesh Gaonkar towards the square leg. Another couple of runs. Scoreboard gradually moving to 26. Second over in progress. So definitely this is going to be a high scoring match as both the openers are still out in the middle doing the damage for the fielding side. Meanwhile, Prajesh Naik, right arm over the stumps. Setting the field, wants the fielder to be at the proper place. After doing the much needed setting, here we go with the next delivery in the second over, that is the batting power play over. Another good strike. Ball has been hit over the circle towards the point area. Fielder after the ball only runs and jumps to avoid the injuries of above the advertising board. That's a boundary, DJ. Thank you, DJ. Meanwhile, score moves to 30. This is a delicacy for the viewers, but not for the camp of Royal Challengers Fatorda, as a hammering is on. Another good strike, only to the fielder from the deep at the square leg. Collects the ball quite comfortably. A single takes the total to 31. What a start that have been produced by Sarfraz and Shahid. What a lovely cut shot between the fielders. Lovely effort, but won't be able to stop the ball as ball races towards the boundary in a flash. That's a signal from the umpire, swinging his arm hard. Aslam Sheikh signaling to Viraj Tendulkar to add 4 runs. With that boundary, score moves to 35. And that concludes over number 2, DJ. Thank you, DJ. So this is a beautiful start provided by both the openers. Sarfraz have kicked off with a boundary and then followed by Shahid Sheikh. 2 openers doing the job that has been given to them. But as we have witnessed IPL matches yesterday, both were high-scoring matches and both were chased. So let's see what is going to happen. As we can see, the similar jerseys that have been introduced by GCC on this very ground in this very tournament. As the fielding side, Royal Challengers Fatorda replicating Royal Challengers Bangalore at the IPL level. And even Oxford Titans replicating Gujarat Titans. Similar sort of jersey, similar attitude, and similar batting and bowling. So here we go, as Gaurish Nagwekar, the bowler. Good delivery, chance of a catch, where the keeper is going to get it. No, my dear. Ball goes away from the keeper. Meanwhile, leg bias is the signal. So lovely delivery, delivered by Gaurish with the jersey number 333. That was of another former international player, Chris Gale. Let's see whether he can do justice for this 333. Right now with the ball, right arm over the stumps.
Lovely delivery, lovely cut shot, and no fielder in act, and that's a boundary. Sarfraz Nawaz is not going to spare, and meanwhile, DJ. Thank you, DJ. So what a lovely cut shot. Knew where are the vacancies on the ground, immediately getting the job done. That's a beautiful cut shot from Sarfraz. Another good delivery. Yorker equally well played. One is the goal. There was a chance of a run out, but keeper was little late to react. That allows both the batsmen to take a single. That single takes the total to 41. We are into the third over. So this match definitely is leading towards a very high score. But not to forget the man in action behind the stumps. Outstation player for Royal Challengers Fatorda. Sumit Dekle is popularly known as Bahubali because of his batting. So let's see what he can do. We are going to witness in the second inning, but right now, Gavresh to deliver. Another good strike along the carpet. Fielder in act. Ball is going away, equally well fielded. Some football skills displayed to stop the ball from crossing the fence. Meanwhile, appreciation from the captain as well as other players for the fielder at the square leg. Another couple of runs to take the total to 43. Shahid is on striking and let's see whether he can do something, or Gauresh is going to get at least a wicket. There's a better connection, chance of a catch, fielder under the ball, whether he's going to hold on, no my dear. Ball wins the race, travels the distance, and that's a biggie. Thank you, DJ. That sixer takes the total to 49, just a short of a half-century mark for the team. So Gavri is definitely feeling the pressure as a monstrous hit has been hit over the long on area. The match ball has been retained, and here we go into the third over. Sarfraz is playing at the individual score of 24. And Shai Sheikh, lovely helicopter in act as the lower full toss has been placed towards the wide long on area for a single. With that single, team total moves to half century, and Shai Sheikh moves to 23. So meanwhile, it's time to invite the senior commentator Ashok Naik with his wonderful voice with the details in the further half of the first inning. DJ. Hello. Thank you, DJ.
धन्यवाद सागर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन, एक बढ़िया शुरुआत मैदान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन बिना किसी नुकसान से। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बढ़िया साझेदारी। इस बार रिवर्स का प्रयास सफल रहे, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए। सत्ताईस पर खुद के व्यक्तिगत शाहिद से बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर से रिवर्स का प्रयास, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेंद ने हरकत की। स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद कट और बाहर की तरफ निकली। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं मैदान पर। चौथा ओवर जारी, 6 ओवर का मुकाबला। एक बहुत ही शानदार आयोजन, एक बड़ा आयोजन इस टूर्नामेंट का, और पहला मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। आगे निकलकर गेंद को फ्रंट फुट पर ड्राइव किया। इस बार डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री की तरफ। पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए निकले, और जब तक एक्स्ट्रा और बाउंड्री से गेंद को उठाते, फील्ड करते, तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 56 रन बिना किसी नुकसान से। एक ओर से सरफराज नवाज और चप्पू और शाहिद शेख, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। इस बार फिर से रिवर्स का शॉट, गली पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, सिंगल बना। थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर थी विकेट कीपर के साथ, लेकिन उतनी दूर नहीं निकली गेंद। 2 रन का मौका बन सकता था। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में इस सिंगल के साथ। 57 टोटल स्कोर। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक शॉर्ट टर्न मैन पर, एक गली पर फील्डर, एक कवर पॉइंट पर। यह फील्डिंग की जमावट मैदान पर। ओवर पिच गेंद, इस बार देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद हवा में खड़ी हो गई। फील्डर गेंद के नीचे कैच को तब्दील करते हुए, और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ। थैंक यू डीजे अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ साउंड के साथ जुड़ चुके हैं। न्यू बैटर मैदान पर अब्दुल सलाम। बहुत ही शानदार शुरुआत मैदान पर। टॉस जीता रॉयल चैलेंजर्स फातोडा क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करने का फैसला, और सामने बल्लेबाजी को मौका दिया ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम को। 24 रन आउट होकर वापस। सबसे ज्यादा कीमती से जो कि खरीदा हुआ खिलाड़ी मैदान पर अब्दुल सलाम, न्यू बैटर। उन्हीं के साथ शाहिद शेख, एकमात्र विकेट, पहला विकेट। 57 रन एक विकेट पर सरफराज नवाज 4 चौके 1 छक्के लगाकर आउट होकर वापस। खुद के व्यक्तिगत 24 पर सामने शाहिद शेख एक शानदार बल्लेबाजी करते हुए, और उनका साथ निकले 1 डाउन बैट्समैन अब्दुल सलाम अंपायर से गार्ड लेते हुए। असलम शेख और उन्हीं के साथ सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, ये जोड़ गोली अंपायरिंग के साथ मैदान पर। विराज तेंदुलकर हमारे साथ स्कोरिंग में। और इस बार सफल हुए, खेला गेंद को, रिवर्स का शॉट, फिर से एक बढ़िया टाइमिंग। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, वाइड गली पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। थैंक यू डीजे। साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2022 एक शानदार आयोजन, जीसीसी फातोर्डा। मंच पर बैठे सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत, और जो उपस्थित दर्शक इस टूर्नामेंट में पूरी 4 ओर दिखाई देते हुए, आप सभी का स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में
सागर गोसावी, उन्हीं के साथ सर हर्ष काकोड़कर और मैं अशोक नाइक, TennisCricket.in के सर्वा सर आदरणीय संतोष जी नानेकर, हमारे साउंड के साथ जुड़ चुके अजय सर, हम सभी के ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे तीसरे और अंपायर जो कि इस टूर्नामेंट के साथ मोहसिन तहसीलदार, असलम शेख और सिद्धेश उर्फ बाबू। स्कोर हो चुका है टोटल स्कोर बोर्ड पर, जो कि खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। बॉलिंग में परिवर्तन और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 61 लॉस ऑफ 1 विकेट, 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स के ओर से बॉलिंग में परिवर्तन, गौरेश नागवेकर खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए अपने बॉलिंग बार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। शफल वैसे बढ़िया शॉट, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन गेंद शायद आखिर तक कोशिश जरूर की, गेंद को रोक नहीं पाए, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 65 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शानदार शुरुआत बल्लेबाजी में, अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर लेन की कलाई का उपयोग का मोड़ा, गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर तेजी के साथ विकेटों के बीच में बहुत ही शानदार दौड़, 2 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक बेहतरीन क्रिकेट, शानदार आयोजन, हर टीम में 3-3 खिलाड़ी जो कि ओवरसीज देखने को मिलेंगे। पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं और आज का पहला दिन डे नाइट का ये क्रिकेट का बिल्कुल बड़ा क्रिकेट का महासंग्राम और पहला मुकाबला। शाहिद शेख बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार इनिंग, जो कि 35 रन पर अपने खुद के व्यक्तिगत, और इन 35 रन में 4 चौके 1 छक्का शामिल अब तक। और अब्दुल सलाम आते आते चौके के साथ आगाज किया मैदान पर, अपने खाते की शुरुआत की। एकमात्र विकेट सरफराज नवाज खुद के व्यक्तिगत 24 पर, जब स्कोर था टीम का 57 रन, 4 चौके लगाए 1 छक्का लगाया और 5वां ओवर मैच का मैदान पर जो कि जारी। और गौरेश नागवेकर जो गेंदबाजी करते हुए खेल इसी बीच में थोड़ी देर के लिए मैदान पर रुका हुआ। गोवा बिगेस्ट टेनिस क्रिकेट लीग टूर्नामेंट साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2022 जीसीसी पातोड़ा, पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा और उन्हीं के साथ ऑक्सफोर्ड टाइटंस, इन 2 टीमों के बीच में। टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग, 6 ओवर का मैच, पहला ओवर पावर प्ले का, बाद में दूसरे से 5वें तक और 5 गेंदबाज जो पूरे मैच के साथ। थैंक यू डीजे, धन्यवाद अजय सर। एक बार फिर से आपका थोड़ी देर के लिए बीच में रुका था खेल, जो कि थोड़ी सी दौड़ते हुए पैरों में निश्चित रूप से थोड़ी सी हल्की सी जो कि परेशानी जरूर थी, और अब ठीक ठाक। और एक बार फिर से गौरेश नागवेकर अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर, इस बार हवा में मार बैठे, देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद के नीचे फील्डर विक्की प्रजेश उर्फ विक्की नहीं कैच को दबोचते हुए और दूसरी कामयाबी मिलती हुई मैदान पर, दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ।
पहला विकेट 57 पर, दूसरा विकेट 67 पर, पहला विकेट सरफराज 89 पर, चप्पू 24 पर खुद के व्यक्तिगत, और अभी अभी आउट होकर वापस शाहिद शेख 35 रन पर, एक शानदार बल्लेबाजी अब्दुल सलाम 4 पर, और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर प्रीतम बारी सफलता हासिल करते हुए गौरेश नागवेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर स्कोर बोर्ड पर 67 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर टोटल अंपायर से गार्ड लेते हुए और सामना करेंगे गौरेश नागवेकर की गेंदबाजी का। शॉट ऑफ लेन गेंद, बहुत अच्छी गेंद, तेज गेंद, इस बार टिप्पा खाने के बाद गुडले स्पॉट पर थोड़ी से उछाल मिले इस बार गौरेश नागवेकर को। पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर से निकली, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम टॉस जीता। रॉयल चैलेंजर्स फातोर्डा क्रिकेट टीम ने और मैदान पर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आगे निकलकर बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, कमाल का कैच, और तीसरी विकेट का मैदान पर पतन होता हुआ। थैंक यू डीजे, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ओवर पिच गेंद थी, हाफ वॉले पर लेकर गेंद को लॉब किया था, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर शानदार फील्डिंग, एक बहुत ही अच्छा कैच शाहिद का। तीसरा विकेट वापस और न्यू बैटर मैदान पर सुहास पवार, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में बिल्कुल इनकी चर्चा हमेशा होती है, वो खिलाड़ी, और सामने बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है। गौरेश नागवेकर राइट आर्म ओवर द विकेट 15-16 कदम के रनअप के साथ अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर थोड़ा सा अपने रनअप पे चूक के वापस निकले। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए सुहास पवार के लिए, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करते हुए अब्दुल सलाम। अच्छी गेंद, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद निकली ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, एक सिंगल जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। एक अच्छा ओवर, कामयाब ओवर, सफल ओवर, जिस ओवर में रनों पर रोक लगा दी गौरेश नागवेकर ने और उसी के साथ विकेटों को भी हासिल किया। स्कोर 1 रन के साथ से 68 रन पर आगे बढ़ा। 68 3 विकेट के नुकसान पर, 68 रन 3 विकेट पर। सरफराज नवाज 24 पर, शाहिद शेख 35 रन पर, और आज बिल्कुल निराश किया अपने टीम के साथ तमाम दर्शकों को प्रीतम बारी 0 पर। अब्दुल सलाम 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, सुहास पवार 1 पर। खेल 5वें ओवर का समाप्त हुआ, 68 रन 3 विकेट पर। अंतिम ओवर का आखिरी ओवर का खेल बाकी, 6 ओवर का मैच, हर एक मुकाबला रहेगा इस टूर्नामेंट में, और आज पहले दिन का पहला मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। अंतिम ओवर सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर योगेश पवार, इस बार आड़े बल्ले से खेला, गेंद को गैप में बिल्कुल मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए।
बहुत ही शानदार शॉट, गैप में खेलने में सफल रहे, थोड़ी सी छोटी गेंद मिले और बहुत ही अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, दो फील्डर मौजूद थे लेकिन उनके 20 में से गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 72 रन पर, 72, लॉस ऑफ 3 विकेट। नो बॉल, और नो बॉल के साथ 1 रन भी मिला और 1 रन के साथ फ्री हिट का इशारा अंपायर का, तो 1 रन जुड़ गया और स्कोर के खाते में 73, 73 रन 3 विकेट पर। स्ट्राइक एंड पर सुहास पवार 5 पर खुद के अपने व्यक्तिगत, अब्दुल सलाम 4 पर और सामने से दूर वाले चोर से योगेश बोरकर अपने बॉलिंग बार पर। फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद, और देखना होगा फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है मैदान पर। फ्री हिट की गेंद उड़ाया इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक बेमिसाल टाइमिंग बल्ले और गेंद के बीच में, गेंद चले गई सी बारिका से बाहर 6 रन के लिए। फ्री हिट की गेंद पर बड़ा शॉट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79। इस बार ओवर पिच गेंद आप वाले पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर ने कोशिश बढ़िया की थी लेकिन गेंद को रोकने का मौका नहीं मिला, गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 83, एक सम्मानजनक टोटल। पहले मुकाबले में दोपहर के सत्र में कड़ी धूप, सूरज माथे पर थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस हो रही है मैदान पर। एक शानदार शुरुआत मैच में, 83 रन। छोटी गेंद इस बार, बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर गेंद, एक नजाकत भरा छक्का। सुहास पवार बिल्कुल आते आते छा गए मैदान पर, आक्रामक रवैया अपनाए और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 पर पहुंचा 3 विकेट पर। 89, लॉस ऑफ 3 विकेट। पहला विकेट 57 पर, दूसरा 67 पर और तीसरा विकेट जो 67 पर। सुहास पवार स्ट्राइक एंड पर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, सामने अब्दुल सलाम। इस बार हाफले पर लेकर एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर सीधे हाथों में, गेंद चले गई। चौथे विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन एक छोटी सी इनिंग लेकिन तोड़फोड़ की बल्लेबाजी मैदान पर। सुहास पवार की 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए अपने इनिंग में और आउट होकर वापस, लेकिन एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर दिखाई देता हुआ। जो पहले बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम, खुद का व्यक्तिगत जो कि सुहास पवार का व्यक्तिगत स्कोर 21 रन, 2 चौके 2 छक्के लगाए, टीम का टोटल स्कोर 89, 89 रन 4 विकेट पर और अब्दुल सलाम का साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर नवदीप गांवकर। थोड़ा सा महंगे साबित हुए आखिरी ओवर में, स्लॉग ओवर में योगेश बोरकर, लेकिन एक कीमती सफलता भी हासिल की उन्होंने। सुहास पवार को आउट किया इस ओवर में अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। ओवर पिच गेंद इस बार बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, एक लाजवाब फील्डिंग, बहुत ही शानदार कैच एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई योगेश बोरकर को। 89, 5 विकेट पर 89 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। स्कोर नवदीप गांवकर जो आउट होकर वापस बिना खाता खोले, उससे पहले प्रीतम बारी 0 पर 24 रन पर, सरफराज नवाज, शाहिद शेख 35 रन पर, अब्दुल सलाम 4 पर बल्लेबाजी कर रहे, प्रीतम बारी जिन्होंने धुआंधार बारी आज नहीं खेले, लेकिन बिल्कुल जो काम अधूरा था वो सुहास पवार ने पूरा किया। 21 रन बनाए सुहास पवार ने, 2 चौके 2 छक्के लगाए और अभी अभी आउट होकर वापस नवदीप गांवकर जो 0 पर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ और न्यू बैटर मैदान पर अभिजीत गांवकर। अंतिम ओवर का खेल जारी, 6 ओवर का हर एक मुकाबला। टॉस जीता रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा क्रिकेट टीम ने,
फील्डिंग करने का फैसला किया, सामने बल्लेबाजी को मौका दिया ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम को और एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पर। बढ़िया शॉट इस बार हाफ वॉली पर लेकर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर को बीट किया इस बार गेंद ने। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से निकलते हुए बाहर और इस चौके के साथ स्कोर होता हुआ 93 रन, जो कि पहला 6 ओवर का पहले इनिंग का खेल जो कि समाप्त होता हुआ। दूसरी इनिंग की शुरुआत जरूर, लेकिन उससे पहले जानकारी थोड़ी सी स्कोरिंग के बारे में। सरफराज नवाज 24 रन बनाकर शाहिद शेख आउट है, 35 रन बनाकर सुहास पवार 21 रन बनाए, अब्दुल सलाम जो कि 4 रन बनाकर नॉट आउट और अभिजीत गावकर जिन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपने टीम को 6 ओवर की समाप्ति के बाद 94 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए सामने रखा है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स फातोडा क्रिकेट टीम को। दो टीमों में बिल्कुल अच्छे अच्छे बेहतरीन एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, एक अच्छा मुकाबला जरूर होगा। गेंदबाजी की अगर बात की जाए थोड़ा सा अंतिम ओवर महंगा साबित हुआ, लेकिन 2 कामयाबी मिली और सबसे सफल रहे गौरेश नागवेकर, बहुत ही किफायती गेंदबाजी रही उनकी। तो ये लेखा जोखा था पहले 6 ओवर का। दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई मैदान पर कमेंट्री बॉक्स में जुट जाते एक बिल्कुल अंग्रेजी की मीठी जुबान सर हरीश काकोडकर के साथ। आइए सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में।
किंग्स कॅप्टन आणि 6 स्टार 6 सुपर किंग्स. Here is how the first innings fared for Oxford Titans. Sarfraz Nawaz scored 24. Shahid Sheikh, wonderful innings from him, just 35. Quick fire 35. Abdul Salam just 4. He was remained not out actually. And a wonderful cameo from Suhas Pawar to get his 21 with 2 sixes and 2 boundaries. That's why they could get 93 for the loss of 5 in 6 overs. Pick up the bowlers with 2 wickets. Gaurish Nagwekar. Other bowlers, Vicky Gangaram, slightly expensive. Vinay Satarkar was pretty decent as well. Yogesh Borkar was expensive but taking 2 wickets. So 94 is the run chase. We are going to see the run chase of 94 runs. The first match, the inaugural match between Royal Challengers Fatorda versus Oxford Titans. The batsman on the crease, Syed and Sumit Dekre. Bowler with the ball in his hand is Pritham Bari. So this is definitely going to be a power play over. That's the first over. Pritham Bari in goes to bowl to Syed. That was a quick ball. You waited, expecting the ball maybe to come a little bit slow off the deck and wanted to hit a pull shot quite late on to that ball. Just getting a feel of the first ball, how the wicket, how the surface is behaving. Even though this is a tennis ball cricket, you need to see what the different surfaces are playing. Wonderful to see. I was there in the inaugural ceremony. Great setup, wonderful feel of the ground, and it will come into more effect when the lights come into effect once the sun goes down. So Pritham continuing to the left-hander. To wait for the signal from the umpire. Wide signal. Easy decision going down the leg side, collected nicely by the keeper. So one man is placed deep in the mid-wicket region, one man is placed in the covers for the left-handed batsman, Sumit. Sumit. That was a slower ball and also a full toss ball. Should get a single. Good fielding there by the fielder in the deep covers, coming quickly on towards the ball and just giving a singles. Sumit is called Bahubali in cricket. Pritham Bari, so far so good. So again, not convincing shot, not that power behind. Once again, another single. The pace of Pritham Bari is definitely doing the job here for Oxford Titans. Getting a great start. Asking run rate somewhere around 15 to 16 runs per over. So again, cut away nicely. They're not taking any risk against Pritham Bari. They just want to get themselves to see about this bowling. Maybe if there is a weak link in the second, third or fourth over, maybe they are going to go. But anything less than 16 runs per over, job done by the bowlers. This is a big one. Humongous strike here from the bat. This was in the slot. Hit it beautifully for 6 runs. That's the first big one here for Royal Challengers Fatorda. So a mistake committed by bowling in this slot, taken full advantage by Syed. Once again he's ready against Pritham. This time, was it a top edge or off the legs? We have to see from the umpire. Says leg by. Quicker one that was right in the block hole. So that leg by, that single will finish over number 1 after completion of 1. The score is 12 without loss.
Well, what a setup this is. Goa's biggest tennis cricket league, South Goa Premier League 2022, organized by GCC Fatorda, one of the biggest event right now as far as cricket is concerned. And in comes Mukhtar Khatri. So power play is going to continue. That is what has been chosen here by the batsman out in the middle. And we get to see what sort of field being placed here by the batsman. So you get to see the fielders 3 down at long off, long on and mid wicket region. So pretty orthodox field in the batting power play overs. Sayed on strike against Mukhtar Kadri, who will be bowling around the wicket. Going for the switch hit, ball landing in the right area, going away from the right-hander who went for the switch hit as the fielders are inside. They should be wide down the leg side. Easy decision for the umpire. The reason why this wide because of the switch hit in the earlier ball. Maybe Mukhtar Kadri thinking that he might go for the switch hit again. And that is why he bowled down the leg side, which could have been a better ball if it went for the switch hit. But now conceding an extra, score moves on to 13. Once again, very nicely played in the gap. Easy getting a boundary. Good footwork and gets only a single. They don't move for the second. Sumit Bahubali says, I want a strike against Mukhtar Kadri, the left-hander. Left-hand, right-hand combination. So far, fair enough job, but not at the rate that is required to chase this down. So once left-hander comes and right-hander, the field changes. It takes a little bit of time to set the field how they want as a team. This time, very nicely played. Should be in the air and catch taken. Very nicely taken in the deep. The first wicket down of Royal Challengers Fatorda, RCF. That was very nice ball. It was a lower full toss and he drove it at the long on region, but he could not find the gap, nor he could not find the distance. Went straight in the hands, catch taken deeply, nicely by Pritam. And in comes the new batsman, Rajesh Gaonkar. Well, if you had seen the format and if you had seen the auction, followed auctions of GCC Fatorda, it was all about 7 minimum players of South Goa should be playing. And the remaining 4 can be any options. You can have one North Goa, you can have South Goa and North Goa options as well. And you can have outstation players as well. But maximum can be 3. So whatever options you have to have a playing 11, that was clearly given. So maximum 3 outstation players will be allowed per team. And 7 minimum of South Goa players should be in the playing 11.
Oh, that's a big one. Has he struck it out of the ground? Don't think so. Once again, nice piece of fielding. Are they going for the second run? Chance of a run out as well. But makes it easily in the end. Well, we have seen how well the hitting was there of Oxford Titans side. They were just crisply hitting the ball for boundaries and sixes. We're not seeing that from RCF at the moment. Oh, cracking ball. What a lovely slower ball. No answer from the batsman. Clean bowled and deception at the best from one of the best and experienced players of Goa, Mukhtar Qadri. Second wicket down in this over. So GCC's last year's municipality panchayat level tournament best batsman is out back in the pavilion. That was Rajesh Gaukar, and new batsman comes in is Vicky. And here is the time for the toss. Mushtaq Ahmed tossing, flipping the coin between 6-6 Super Kings and Rohit Indians. And Ijaz Qureshi is the captain and Vikas Desai. Bahu. Head was the call and tail is it. So let's see what is the decision. Ah, that's a cracking shot here. Moment it left the bat, everyone came to know it's a six. That's Vicky for you. Meanwhile, news out from the toss arena. Rohit Indians captain won the toss and deciding to field first. 22 for the loss of 2 after completion of 2 overs. They are still way far back. They required almost 16 runs per over and they are back by almost 8 to 10 runs. Royal Challengers Fatorda need a shift in momentum quickly and fast. They cannot wait till the last moment for that onslaught. The onslaught has to come right now in the third or fourth over maybe. And they have got Syed who is playing beautifully with his 1-6, and Vicky alias Prajesh, the computer cricketer of Kucharam, is arrived on the big stage hitting 6 of the very first ball. 6-6 Super Kings आणि रोहित इंडियन्स मातशे तुमचे प्लेइंग 11 लिस्ट मातशे हांगा धाडात. 6-6 सुपर किंग्स आणि रोहित इंडियन्स तुमचे प्लेइंग 11 जे लिस्ट दिला ते जातीतले बेगीन जी कॉमेंट्री बॉक्स आणि ऑर्गनायझिंग टीम आसा तांचे कडेन मातशे पावोवचे. रिक्वेस्ट तुमकां. In comes Suhas Pawar against Syed. Let's see. Third over. Number 10 jersey Suhas. Oh, that's a lovely ball. Left arm medium pacer, especially those leg cutters. If those land in the right areas, it's going to be difficult. Trouble for the batsman. First ball right in the slot, going away. Once again, this is good piece of bowling. Pace and cut. Accuracy is also there to accompany with pace and variation. Very good here from Suha. So far just given away single run. The scoreboard is not ticking along at the pace that is required. So far just at 23 when the asking run rate is around 16 and target is 94. Once again right in the block hole. Vicky went for that almost a helicopter look-alike shot. He wants the second. No, says Syed. He wants the strike. Once again another single. Bowling has been magnificent here so far from Oxford Titans.
But good to see here, not only the name of the teams is of IPL level or IPL team names, Royal Challengers, Oxford Titans, Amazing Super Giants, 6-star-6 Super Kings, Rohit Indians. Once again, right in the block hole, nothing much given away. This is fantastic super bowling here from the left arm bowler, by signaled here by umpire Babu. And I was mentioning about the names, but also the jerseys. You can see that he's just getting a feel that this is an IPL of tennis cricket happening in Goa. Once again, going for that big height. Once again, a dot ball. These leg cutters are proving to be very, very troublesome here for the batsmen. They are not getting of the meat of the bat. So far, too many dot balls, not towards the liking of the batting side. He goes for the big one. The ball is landing only near to the wicket keeper. Another magnificent and economical over from Suhas Pawar. And after completion of 3 overs, the score is just 25 for the loss of 2. And certainly I will take a break at a stage when the Oxford Titans are way ahead in this match. More 3 overs left, and they require blitzkrieg. They require quick fire sixes and boundaries to come back in this match. Royal Challengers Fatorda. Hand over the mic to Sagar Gosavi for further updates. DJ, and as well as thank you, Harish. So more 3 overs remaining, 69 runs to get. Target looks to be a huge mountain in front of Royal Challengers Fatorda, but nothing is impossible. Even the word impossible, if we split first 2 letters, then it also says I am possible. So let's see what is going to happen out in the middle. Meanwhile, a youngster from the fielding side, a promising all-rounder, has been given the responsibility to deliver into the 4th over. It's none other than Sarfraz Nawaz, who has opened for his side and now bowling the 4th over of the inning. Meanwhile, lovely delivery, equally well played into the covers. No chance for any fielder, and this is going to be a sensation as the first delivery goes out of the boundary rope. Couple of bounces to cross the fence to take the total to 29. Thank you, DJ. So finally, Said connecting. Thank you, DJ. So new man in is Vinay Satarkar strikes the ball. Again, chance of a catch, but ball drops way in front of Shakil. So Vinesh opens account for himself, and the team total moves to
30. So more 64 runs required. Another good strike. A fielder in act, patrolling the fence, stops the ball from crossing himself as well as the fence. Meanwhile, couple of runs to be added to the total to take the total to 32. Prajesh, the vice captain of the team, along with his partner, the captain of the side, Vinay Sadarkar at the non-striker's end. Meanwhile, another good hit, only to give a catching practice. Let's see who is going to take it. Oh my dear, wonderful effort from Sarfraz Nawaz, but could not held on. A strong throw missed by keeper. No harm done. That allows Prajesh Naik to be safe inside the crease at the striker's end. And with this, a couple of runs, score moves to 34. So one of the batsmen have to really accelerate more than what is happening at the moment. Target now looks to be much more than a Mount Everest at the moment for Royal Challengers Fatorda, and even Safraz is doing the trick, delivering into the perfect zone to make it difficult for the batsman. Meanwhile, some tricks have been applied by Sarfraz to deviate Prajesh Naik's concentration. Meanwhile, there's a wonderful strike. Chance of another catch. Two fielders out. Oh my dear, the catch has been dropped. Survival for Prajesh Naik. Meanwhile, couple of runs to the total takes the total to 36. With that, over number 4 concludes. After completion of 4, score is 36 for the loss of 4 wickets. DJ. Thank you, DJ. Sometimes it is a testing time for the scorer, and Virat Tendulkar is very much alert. Only 3 wickets back to the pavilion. So 2 more overs to be bowled. Another good delivery, lovely bowling continues from Suhas Pawar, not giving an inch for the batsman to even middle the ball. Meanwhile, a single to start into the 5th over. Score moves to 37. Switch hit attempted, no connection whatsoever. Leaves the ball safely to Govind Prabhu, nicknamed Bappa, who is behind the stumps. Standing like a wall, stopping the ball from crossing himself. Another good delivery, equally well played to the covers. Captain of the side, Mukhtiar Qadri, in act, stops the ball from crossing himself. Meanwhile, a single is on. With that, score moves to 38. Meanwhile, Suhas Pawar, left arm over the stumps, slight fumble onto his run-up, so decides not to deliver. Meanwhile, onto his run-up mark. Meanwhile, another pacey delivery, no chance for Vinay, shuffling towards the offside to get the elevation. No connection, leaves it as a dot ball. So dot balls are happening at the regular occasion in this match, in the second innings, but the target is of 94 runs.
Another cross-batted hit, no connection. Ball has been landed in the zone, slightly away from the off-stump, and that concludes over number 5. What a lovely piece of bowling been displayed by Suhas Pawar. Have bowled 2 overs and have been very miser while delivering the right areas. He has given only 4 runs in his 2 overs. What a all-rounder that Mukhtar Qadri has picked in his side. Has done a devastating knock into the later half of the first innings. Courtesy, the scoreboard has been 93 runs and the target is of 94. Meanwhile, we are into the final over of the run chase. And now the targets looks to be very, very much impossible. But only thing is, 2 batsmen who are out in the middle can gain some momentum. So meanwhile, let's see whether Prajesh Naik can get some confidence as this is a league format. Swing of the bat, ball has been pitched into the zone, slightly upside the off stump. This is the preferred area by the bowler these days, as ball doesn't get much elevation that is required. Meanwhile, Akshay Zogre, the bowler, meanwhile, what a strike. Ball was hit into the gap. Fielder managed to stop the ball from crossing the fence. A strong throw towards the keeper. Restrict the batsman from further runs. A couple of runs takes the total to 40. Well, let's see whether Prajesh Naik can hit some sixes out from this over, as he has been playing against Akshay Zogre for quite a longer time. And this is the home ground of Akshay Zogre. So this is going to be a good contest. Meanwhile, a wonderful strike. Whether the ball is going to cross the fence. Fielder standing tall under the ball and receives the ball quite comfortably. That is the departure of Prajesh Naik in form of the 4th wicket in the second inning. DJ. So new man in is Alvino Carvalho. And let me tell you one thing about this batsman. You can send him at any moment, at any situation. He is going to play his own game. Let's see what he can do on this very ground. There's a strong strike, but along the carpet, as he is not able to elevate the ball properly, resulting in a single. That single takes the total to 41. Now Vinesh is on striking end. Let's see whether Royal Challengers Fatorda can cross at least the half mark of the total. Vinesh, whether he has enough power to put the ball out of the fence. The time will tell us, as a shrewd bowler, Akshay with the ball. Swings the bat very hard. Again along the carpet. Straight to the fielder at the deep square leg. Meanwhile, Alvino settles for a single. Can Alvin connect and stay up to his reputations for his known? Let's see what he can do. Akshay, a shrewd bowler, right arm over the stumps. There's a better connection as Alvino strikes, and finally the sixer has come from after a very long decade. And what a way to finish the innings and to gain some confidence for himself. Meanwhile, congratulations to Oxford Titans for registering their first win in this tournament.
It's none other than a beautiful all-rounder who has done the trick with the bat as well as the ball. While bowling, he has given only 4 runs from the 2 overs, and at the time of batting, he has scored 21 runs from just 6 deliveries that he has faced. Is none other than Suhas Pawar, man of the match, requesting today's guest to kindly do the honors, Mr. Edmund Fernandez. Edmund Fernandez will be doing the honors. Man of the match, Suhas Pawar, kindly come and receive a beautiful trophy and a wonderful gift from the hands of Edmund. Meanwhile, we are about to witness the second match of the day, and over to Ashok G. Naik.
धन्यवाद सागर। 12th मैन आइए प्लीज। 6*6 सुपर किंग्स। 6*6 सुपर किंग्स आइए प्लीज। आपका 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। तो मुकाबला दूसरा मैदान पर शुरू होता हुआ रोहित इंडियंस और 6*6 सुपर किंग्स, इन दो टीमों के बीच में। टॉस जीता और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला रोहित इंडियंस क्रिकेट टीम का और बल्लेबाजी को मौका दिया। 6 ओवर का मैच है। 6*6 क्रिकेट टीम पहला ओवर पावर प्ले का, बाद में दूसरे से 5वें तक और एक ओवर जो पावर प्ले का। दोनों अंपायर मैदान पर सिद्धेश्वर पर बाबू नाइक और उन्हीं के साथ राजकिरण राठौड़ जुड़ चुके हैं मैदान पर। हमारे साउंड मास्टर सर अजय सर और TennisCricket.in के सर्वे सर्वा आदरणीय सर संतोष जी नाणेकर, विराज तेंदुलकर हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, हरीश काकोडकर अंग्रेजी और उन्हीं के साथ सागर गोसावी अंग्रेजी और मैं अशोक ने आप सभी के साथ इस टूर्नामेंट में। साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2022 GCC फातोर्डा, जिनसे और से एक बहुत ही शानदार आयोजन। 3 खिलाड़ी हर टीम में, ओवरसीज खिलाड़ी। और जहां तक हम बात करेंगे जो कि 6*6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम की, तो ओमकार देसाई, राजेश सोरटे और भूषण गोली, ये 3 खिलाड़ी। और दूसरी ओर से जो कि एजाज कुरैशी, बंटी पटेल और उन्हीं के साथ जिग्नेश पटेल, ये 3 खिलाड़ी ओवरसीज खिलाड़ी। बहुत ही शानदार आयोजन। और प्लीज 12th मैन प्लीज जल्द से जल्द 6*6 सुपर किंग्स, 6*6 सुपर किंग्स 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। बिगुल बजते हुए ढोल ताशा मैदान पर और एक अलग सा माहौल इस टूर्नामेंट के साथ। और क्यों ना होगा, क्योंकि इतना बड़ा शानदार आयोजन है। पूरे भारत भर के खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक जो कि रति महारथी इस गोवा की सरजमीन पर जो कि मडगांव पर दिखाई देते हुए, और दर्शक काफी भारी संख्या में। डे नाइट का क्रिकेट का ये संग्राम लगातार 3 दिन आपके साथ ये क्रिकेट का कारवां बिल्कुल चलता रहेगा इस मैदान पर। और दूसरा मुकाबला मैदान पर शुरू होता हुआ। थैंक यू डीजे। एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं 6*6 सुपर किंग्स 12th मैन आइए प्लीज। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर ओमकार देसाई और उन्हीं के साथ विकास देसाई उर्फ भाऊ। पहला ओवर लेकर सामने से दूर वाले छोर से संदेश ठाकुर गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहले गेंद स्लॉक स्लिप का शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, बेमिसाल टाइमिंग, गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। आक्रामक शुरुआत मैदान पर, पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज। 4 रन।
संदेश ठाकुर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। अच्छी गेंद इस बार अब स्टंप पे थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। शाहिद शेख और मुख्तार कादरी, आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। मुख्तार कादरी और शाहिद शेख। छोटे गेंद इस बार पुल किया बड़ी खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। थैंक यू जी, बढ़िया शुरुआत, 2 चौके, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली। ओमकार देसाई दूसरा चौका, खुद के व्यक्तिगत 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक एंड पर संदेश ठाकुर की गेंदबाजी का सामना करते हुए। मुख्तार कादरी और शाहिद शेख प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, इस बार रनआउट जो कि रन की संभावना को समाप्त कर दिया। पावर प्ले का पहला ओवर जारी, मैच का 2 ओवर पावर प्ले का 6 ओवर का मुकाबला। टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई मैदान पर रोहित इंडियंस और सामने 6 बल्लेबाजी करते हुए। और एक फुलर लेन की गेंद इस बार देखने होगा, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद के पीछे आखिर तक लगभग गेंद का पीछा किया और जब तक बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, बहुत ही शानदार फील्डिंग। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए और स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में तब्दील होता हुआ 10 पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान से। शाहिद शेख आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। शाहिद शेख इस बार छोटी गेंद हुक किया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद निकलती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। थैंक यू अजय सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 कैप है बल्लेबाज के लिए और उसी के साथ गेंदबाज के लिए। रोटेशन रहेगा, जो आगे बढ़ेगा उसको वो कैप जो कि जरूर मिलेगी। फिलहाल पहला ओवर, आक्रामक शुरुआत ओमकार देसाई पहले ओवर में एक शानदार शुरुआत, 3 चौके लगाते हुए खुद के व्यक्तिगत 14 रन पर और टीम का स्कोर 14 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से दिखाई देता हुआ जिग्नेश पटेल, मैन फ्रॉम गुजरात, एक अच्छे ऑलराउंडर, वो गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर और सामने बल्लेबाजी पर विकास देसाई उर्फ भाऊ। पहला ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, फील्डिंग में तब्दीली, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आते हुए बंटी पटेल, जो और एक टेनिस क्रिकेट का बहुत ही बड़ा नाम, वो जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी, और मुख्तार कादरी को जो कि कैप दी जा रही है, पर्पल कैप। मुख्तार कादरी, एक बार फिर से आपका स्वागत। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चलेगी, शॉर्टेड मैन पर फील्डर मौजूद, 1 रन इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, लेग बाइज का इशारा और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर सिद्धेश नाइक और उन्हीं के साथ राजकिरण राठौड़, ये अंपायरों की जोड़ गोली, उन्हीं के साथ असलम शेख और मोहसिन तहसीलदार। अगले गेंद इसी बीच में अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने ओमकार देसाई, थोड़ी सी बातचीत, मैदान पर खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त होने के बाद फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, 3-3 खिलाड़ी हर टीम में, ओवरसीज खिलाड़ी।
और आज बिल्कुल कांटे का टक्कर होगा मैदान पर, क्योंकि एक से बढ़कर एक रति महारथी है इस टूर्नामेंट के साथ। खेल फिर से मैदान पर जारी होता हुआ। ओमकार देसाई स्ट्राइक एंड पर, विकास देसाई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। पहला मैच की अगर बात करेंगे, पहली जोड़ी में बड़ी साझेदारी बनी थी, बड़े टोटल का मैच रहा था और एक बड़ी जीत मैदान पर हासिल की थी। और उसके बाद ये दूसरा मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। और इस बार बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच शॉट ऑन पोल का, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। धन्यवाद। 6 स्टार 6 सुपर किंग्स बहुत ही शानदार, और खास करके ओमकार देसाई बिल्कुल लय में, टच में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया शॉट, थोड़ी सी छोटी गेंद मिले, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे जिग्नेश पटेल। थोड़ा सा फील्डिंग को अपने सजा रहे, फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। और एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद इस बार, एक यॉर्कर लेन की गेंद, ऑफ स्टंप को छोड़कर हल्के से खेलना चाहते थे, स्टेयर करना चाहते थे ऑफ साइड पर, गली पर। इस बार कोई संपर्क नहीं बना, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। 5 फील्डर ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर, यह फील्डिंग की जमावट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, थोड़ा सा अपने लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में अतिरिक्त रन के साथ। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक कवर पॉइंट पर, एक गली पर फील्डर, एक शॉर्ट टर्नमैन पर जिग्नेश पटेल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। अगली गेंद लेकर इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से चूके, यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर फिर से छोड़कर निकलते हुए। अच्छा कमबैक हो रहा है मैदान पर लगातार 2 गेंदों के साथ जिग्नेश पटेल। ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में काउ कॉर्नर पर, और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। धीमी फेंकी गेंद, इस बार रिवर्स का शॉट, गेंद निकली थर्ड मैन की तरफ, फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन बड़े इत्मीनान के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। टॉस जीता रोहित इंडियंस क्रिकेट टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला, सामने बल्लेबाजी दी 6 स्टार 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम को। दूसरा ओवर मैच का चलता हुआ मैदान पर, 6 ओवर का मैच। पहला ओवर पावर प्ले का, दूसरा दूसरे से 5वें तक 5 गेंदबाज। फुल टॉस गेंद सामने उड़ाया, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बंटी पटेल गेंद के नीचे आते, थोड़ा सा ताकत कम पड़ गई शॉट के ऊपर, बल्ले पे नीचे लगे इस बार, और पहला विकेट विकास देसाई उर्फ भाऊ आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में।
2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। विकास देसाई आउट होकर वापस शून्य पर ओमकार देसाई 3 चौके अब तक 1 छक्का लगाते हुए और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर सनेश गांवकर। गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से बंटी पटेल बॉलिंग मार्ग पर 2 ओवर समाप्त हुए। बैटिंग पावर प्ले का ओवर और बंटी पटेल बॉलिंग मार्ग पर तीसरे ओवर की शुरुआत 23 लॉस ऑफ 1 विकेट 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और शॉर्ट पिच गेंद इस बार उछाल लेते हुए बाउंसर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल बना स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2022 जीसीसी फातोरडा बहुत ही बड़ा आयोजन। 3 खिलाड़ी पूरे भारत भर के जो कि इस टूर्नामेंट में ओवरसीज खिलाड़ी हर एक टीम में और उनमें में से ओमकार देसाई मैदान पर। इस बार बढ़िया शॉट बढ़िया टाइमिंग बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। टैंकर डीजे TennisCricket.in के माध्यम से यूट्यूब पर आप जरूर देख सकते हैं। थोड़ी सी अपटम पर छोटी गेंद मिली बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग लाजवाब था ताकत सही थी। 6 रन के साथ 30 पर आगे बढ़ा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से थोड़ी सी चौथा प्लेन गेंद ऑफ स्टंप पर आखिर तक गेंद का पीछा किया था। हल्के से गेंद को स्टीयर करना चाहते थर्ड मैन की तरफ गले की तरफ लेकिन इस बार सफल नहीं रहे। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं कोई रन का सवाल नहीं। और एक बार फिर से बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर खेल जारी। तीसरे ओवर का स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और पिच गेंद लॉफ्ट किया इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। टैंकर डीजे बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ढोल-ताशा बज रहे सिट्टियां बज रही बिगुल बज रहे बिल्कुल आईपीएल का नजारा इस मैदान पर। 34 रन 1 विकेट पर। शॉर्ट पिच बाउंसर इस बार गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। नो बॉल का इशारा अंपायर का। यह दूसरी गेंद थी और इसीलिए अंपायर का इशारा जो कि नो बॉल का। 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 35 रन 1 विकेट पर और नो बॉल के साथ 1 रन भी मिल गया स्कोर में और उसी के साथ फ्री हिट का इशारा अंपायर का। आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर न्यू बैटर सनेश गांवकर, स्ट्राइक एंड पर ओमकार देसाई। अब तक 4 चौके और 2 छक्के अपने इनिंग में लगा चुके हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। इस बार
खेला गेंद को ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ लॉन्ग ऑफ से निकले फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते बहुत ही शानदार फील्डिंग अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में और फ्रेड की गेंद पर सिर्फ एक रन बनता हुआ स्कोर के खाते में एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा 36 रन एक विकेट पर लगभग 12 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम। आज बिल्कुल अगले मैच के साथ सिंधुदुर्ग जिले का बिल्कुल एक टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम दर्शन बांदेकर वो भी आ चुके अगले मैच के साथ। और इस बार फिर से उछाल ली गेंद शॉर्ट पिच गेंद विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं शायद विकेटों पर थोड़ा सा जो कि अनियमित बाउंस है उसका फायदा मिल रहा है गेंदबाज को और बंटी पटेल वहीं पर गेंद को पिच करा रहे हैं थोड़ी सी उछाल मिल रही है और लगातार थोड़ा सा जो कि परेशान कर रहे हैं बल्लेबाज को अपने बॉलिंग बार पर सामने से दूर वाले चोर से राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का मुकाबला 6 ओवर का दूसरा मैच। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद हल्के से गेंद को ड्राइव किया पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के निकले बंटी पटेल बहुत ही शानदार थ्रो बहुत ही बेहतरीन थ्रो सीधे डायरेक्टेड स्टंप पे लगते हुए और जो शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओमकार देसाई बड़े दुर्भाग्य के साथ रन आउट होकर टीम को लगता हुआ ये दूसरा धक्का। अजय सर धन्यवाद 32 रन शानदार बल्लेबाजी लेकिन आप YouTube पर जरूर देख सकते हैं क्या हुआ इस गेंद पर पहले गेंद को डिले हाथों से खेला था सिली मिडॉन की तरफ पहला रन और जैसे दूसरे रन के लिए पलटे बंटी पटेल ने दौड़ लगाई गेंद को कलेक्ट किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया और एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही थी ओमकार देसाई की आज बिल्कुल लय में थे टच में थे दर्शक बहुत खुश थे उनके बल्लेबाजी को देखकर लेकिन मैं तो कहूंगा एक शानदार क्रिकेट अंग अंग में नस नस में क्रिकेट जो कि दिखाई देता हुआ मैदान पर ये खिलाड़ियों के बीच में फिलहाल 3 ओवर और टोटल स्कोर बोर्ड पर 37 रन 2 विकेट पर चौथे ओवर की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आई सर बिल्कुल एक मीठी जुबान अंग्रेजी के आदरणीय हमारे सर हरीश काकोड़कर के साथ आइए सर। So after completion of 3 overs, the score is 37 for the loss of 2 wickets. Sanesh and Bhushan. So in comes Jignesh Patel. Right in the block hole, another left arm medium pace bowler. Are they going for the second? Good running between the wickets this time from both Sanesh and Bhushan. With this 2 run score moves on to 39. That was a very good start given by Omkar Desai and he just got out in the form of run out and what a run out that was. One head pick up and directly hits the bullseye. Umpire signaling it is as wide outside off stump. The length was right. This length is very difficult to hit in tennis ball cricket. So he is trying to bowl just full length ball outside off stump. This time, this is almost a helicopter lookalike shot in the covers region. Fielded very nicely down in the deep in the extra cover. In the covers, gets 2. Score moves on to 42. So idea seems to be bowling fuller around off stump, maybe around 6th or 7th stump. And maybe asking the batsman to play just on the offside, not getting the power to generate, to play 6s and 4s on the leg side.
Going for the switch hit. Once again, good bowling here from Jignesh Patel. He's very clear in his mind where he wants to bowl. There's absolutely a wonderful set plan in the mind, and he wants to execute what is going in his mind, and is executing so far perfectly. Oh, that's it. He shuffled across too much, exposed his leg stump, and that leg stump was hit perfectly well right in the block hole by Jignesh Patel. Another wicket going down of 6 Super Kings, and Rohit Indians strike back with the third wicket. Bhushan Gori has to depart. In comes Riaz Khan. Powerful man, big man. I've seen him hitting 6 of 6 balls in Muli Chachak, a powerful striker of the tennis ball. And 6 Super Kings will be hoping 6 sixes from this man once again. This is good bowling right in the block hole, not allowing the big man to swing the bat right on the block hole region to break a ball from Jignesh Patel. Wonderful economical over so far, continuing with his the perfect line and accurate length. Oh, a stunning ball. Just cannot hit anything. No switch hits, no sweep for this Yorker. Yorker is the best ball, and he has bowled almost, I guess, 5 balls after 6 in the Yorker length delivery. Stunning over from Jignesh Patel as well. After completion of 4 overs, the score is 43 for the loss of 3. Nine comes one more outstation player will be bowling. Ijaz Qureshi, the captain of the side, hailing from Pune region. So one player from Maharashtra, 2 players from Gujarat for Rohit Indians, and rest from Goa. So truly Indian style, all Indians in that. Gujarat, Maharashtra, Goa, and Rohit Indians coming back strongly in this match in that 4th over. They got wonderful bowling unit and one more bowler, Ijaz Qureshi. Oh, a stunning ball. Just swinging the bat hard. It was not in the slot. It was just in front of him. Good length area going away. I always say if you have left arm bowlers, whether it is left arm orthodox spinners in leather ball cricket, medium pacers, or the cutter ones from Ijaz we can see right now.
Oh, he just hitting it in no conviction. It was so close. You can see the reaction from Ijaz. It was very, very mighty close towards hitting that stumps. Lalla is as cool as cucumber behind the wickets, just like how MS Dhoni is. We've seen one classic innings from MS Dhoni yesterday. Typical old MS Dhoni that we remember. This is outside edge, away from the reach of Lalla, and single will be given. And they won't mind single at this stage. Well, there might have been 6 sixes by Riaz recently in Muli Chashak, where they won their championship of Panchayat Municipality level. Sakwal Panchayat. But this is not the same bowling. This is a different class altogether. This was a pull shot in the air. Will it be taken away from just falling in front, and the ball bouncing above the head of the fielder at the square leg region, getting him a boundary. You cannot blame the fielder over there. He went for the catch. It was just the bounce that went above because of the tennis ball that we have. So good boundary after some time from the bat of Shanesh Gaonkar from Vade Sangam. Score moves on to 48. 2 short of 50 in the 5th over. Once again, this time going, maybe the bowler thought he's going for the switch hit, then went for the orthodox pull shot. Slightly straying down the leg side. Wide signal by umpire. Moves on to 49 the score. 1 short of 50 now. So far, 6 runs have come of the first 4 balls from Ijaz. That boundary was a little bit shorter side, pulled away nicely by this little man Sanesh. Wonderful striker of tennis ball is Sanesh. So it was evitable. It was evitable that he's going to bowl a fuller length delivery considering the field set. He has kept long off, long on, mid-wicket, deep square leg region. He understood that Shanish might be good of the short ball bowling. So now trying to bowl maybe fuller. Once again, missed opportunity here. That was a full toss one. He could have put it away for too many runs. They are going for the second run. Quick throw and fast throw. It's going to the third umpire, and we have the referral. Third umpire will be in action. Will Riaz be in or he will be out? Has he grounded the bat? Lots of questions. We are in no position to tell here from the commentary box. So it's over to third umpire Aslam for his expertise in deciding. And he's out. Out is Riaz. He was short. That was a quick throw. And it was his decision from umpire Aslam Sheikha. He, without any hesitation, gives it out. One more wicket going down in the form of run out. Good fast fielding. Accurate throw next to the wickets. And wickets and bails removed in flash within no time by Ijaz. So that will bring the change of over number 5. After 5 is 50 for the loss of 4. So in comes Guru Shant, a very good fast bowler. Normally plays for Marga Municipality for Kumteshwar.
Warriors, Gumteshwar's Margao. And this is his local ground. He plays regularly here, grew up playing here on this ground, so very well knows the best places, best spots to be bowling on this surface, and he's bowling the 6th over. This time pulled away nicely. Gurshant also has got good pace. He's not so easy to be taken away for runs. If at all he doesn't land the ball in the right spot, then only he can be taken for runs. Apali Kalangudkar and Sanesh are still on the wicket. They have to get them to some respectable total. 51 on the board. Once again went for that big slog shot in the mid-wicket region. Very nicely fielded. It cannot stop 2 runs. You can see this is a big part. This is a big ground. And 2 runs once it's inside the gap between the 2 fielders. 2 runs are definitely on. And that was an example from Sanesh. He's quick in between the wickets. Score moves on to 53. We have seen 94 runs scored. 93 in fact. 94 was a target. Scored in the inaugural match by Oxford Titans. Very strong side. And as is Rohit Indians. They have got a good batting depth. And also the bowling department looks very firm. A good shot straight down the ground. Can he get one more 2? Fielded nicely. Throw was also pretty good. He was unbalanced to throw that, but still has the power to throw towards the bowler. 5 runs coming off the first 3 balls. Can Sanesh get a boundary or a 6? Can he get the score towards that 65-70 run mark? So again went for that big one. Still getting only a single. Singles and doubles won't matter at this stage. These are just the fag end, the last over of this innings for Rohit Indians. They want to keep it as low as possible for their batsmen to make it easy. 56, up Chappan. Oh, went for the switch hit. Really shy. No, he says let's not give any more runs. Once again a leg by. I've seen many times the switch hits being tried by many of the batsmen in these first 2 matches, but apart from 1 or 2, most of them have not been clicked. Last ball of this innings. This is it a big one? It's going to be a catch. Fielder underneath and catch taken nicely. Clean catch. Good communication there down at the cow corner region. So finally a wicket of the last ball. That will finish. It was 6 stars, 6 Super Kings. It was wonderful batting at the start from Omkar Desai getting 32. Then it was 0, not getting a move on because Desai, the captain of the side. Sanesh played a handy knock. Bhushan Riaz could not do much with the bat. It was a wonderful bowling effort from most of the bowlers, were economical and also wicket taking. That will finish this over an innings as well. After 6, the score is 57, and the target set here for Rohit Indians is 58. 58 is the target in 6 overs. Let's see the run chase in a short while. Over to the further updates in English by Sagar Gosavi.
Along with him, his partner Raj Kiran Rathod. Let's see who are the two openers. Meanwhile, one opener is none other than jersey number 10. And he has been opening for quite a long time. I've never seen him batting down the order. The opener, Lalla Ram Purushottam Yadav, with jersey number 10. And we don't require an introduction for this player, as he has given the full judgment to the jersey number 10 that is wearing onto his back. Meanwhile, the captain of this side is already out in the middle in the run chase. Target is of 58 runs. And if these both the openers, if they carry on the way they play the beautiful game of cricket, then definitely they are going to chase the target much, much quicker than what is expected. Meanwhile, a request is going on for Super Amazing and Royal Challengers Fatorda captains to kindly come for toss, as you are going to play the following match. Royal Challengers Fatorda and Amazing, kindly come for toss. Meanwhile, here we go. The signal has come from the umpire to commence this run chase. Rajesh Sote, another outstation player, has been handed over the ball to carry on into the run chase. Let's see whether this power play is going to be beneficial for batting or the fielding side. The time will tell us, as umpire has already signaled. Let's play. Lovely delivery, what a connection! Lalla Ram Purushottam Yadav strikes for the maximum. So meanwhile, here we can see two captains out in the middle for the toss. So that big sixer over the square leg area, no chance for any fielder. Taking the advantage of the strong breeze, Lalla Yadav wanted to swing the bat very hard, as a strong breeze is blowing from offside towards the leg side, helping the batsman to dispatch the ball quite comfortably. Meanwhile, a strong strike into the vacant area. Even there were two fielders at the point as well as cover point. No chance for the fielder. Boundary takes the total to 10. So that is a wonderful start in the run chase. From here on, plot looks to be okay for Lalla's team, as he is going to be the architect at the moment. Shuffle down the track, wonderful strike, straight to the bowler, equally well fielded, onto his follow through. Wonderful display of cricket is happening. So far, 4 deliveries have been bowled in this power play over, and 10 runs on the board. Another good delivery, lovely delivery, ball went whistling past the ears of Lalla Yadav, resulting in a dot ball. So another wonderful chance of a catch. Whether he's going to take it? Yes, it is. First wicket back to the pavilion. Even though a six and a boundary has come from this over, but this is the jubilation. And the drum beats and the horns on. First wicket back to the pavilion. So meanwhile, the toss has been won by Super Amazing, and immediately they have decided to bowl first, requesting the captain of Royal Challengers Fatorda kindly come and select the match ball for your inning.
Viraj Tendulkar, very keen individual, even he is having lunch, still doing the corrections. As amazing super giant, that is the complete name, have been brought to notice by Viraj Tendulkar, who is taking some energy out of the food. Wonderful stuff provided by Shagun. So meanwhile, new man in is Sandeep Kurdikar, nicknamed Bablu, another local guy who is in form in the recent tournaments. The tournaments were live on YouTube, so most of the owners have seen this guy bet, and that is why he is included in the playing 11 by Lalla Yadav in his team. The team is led by Ijaz Qureshi, but we know on-field captain and the captain behind the scenes have to play a major role. Meanwhile, we are into the second over. First delivery equally well played, guides the ball towards the short third man. Strong guy collects the ball quite comfortably. None other than Riaz. So with that single, Sandeep Kurdikar is on striking end. And Apali Kalangudkar, another big name as far as tennis ball is concerned. With the ball, bowling the second over, setting the field for himself. So let's see what will be the approach of Sandeep Kurdikar as he is going to face Apali for the very first time in this tournament. So here we go. As the captain is setting the field. So after doing much needed settlement, here we go. Another good delivery, hint of leg cutter straight to the keeper. Vikas Desai keeping the stumps as cool as a refrigerator and setting the field properly for his bowler. So here we go, Apali with the next delivery. Strong connection, chance of a catch. Who is going to take it? Fielder from long off says, I am the in charge, and takes a comfortable catch. Second wicket, back to the pavilion. So new man in is Bunty Patel now, both the outstation players out in the middle. Huge responsibility on the shoulders of these two players. Captain of the side will be at the striker's end will be at the non-strike end as per the new rules that have been introduced in this world of cricket, as the incoming batsman will be on the striking end. Meanwhile, Apali Kalangudkar strikes in the second over, second wicket back to the pavilion, and score is at 11. So this is proving to be a good contest. Apali onto his run-up right arm over the stumps.
Short pitch delivery, equally well played. Flicks the ball towards the fielder at the wide square leg. What a lovely throw, restricting for a single. With that, score moves to 12. Second over in progress. 4 more overs to be bowled. So definitely both the batsmen will be with a plan out in the middle, as 4 overs more to be bowled, and the target is not much, as a full toss brand tennis ball are used in this tournament. They travel the distance quite comfortably, even a timed shot. Can take the ball, meanwhile a lovely delivery, but slightly outside the off, some stretch of arms by umpire Siddesh Naik alias Babu. Confirms that 1 more run to be added to the total. Score moves to 13. Switch it in act. No connection. Leaves the ball. Travels safely to Vikas Desai, who is behind the stumps. And this is a rare scenario where we can see a second slip in act. So maybe some instinct by the captain. Another good delivery, equally well played, well fielded, good all-round cricket witnessed out in the middle. And that concludes over number 2. What a beautiful over bowled by Apali Kalangudkar, has given only 2 runs and taken a wicket. In fact, 3 runs as 1 was the wide. So total moves to 13 for the loss of 2 wickets. DJ. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Thank you, DJ. Meanwhile, Rajesh to continue bowling second over of his individual quota and the third over of the inning. Lot of cricket is remaining in this match. 2 overs completed, 4 overs to go. This is the third over. Good delivery, slightly outside the off stump. Stretch of arms immediately by the umpire, signaling 1 more run to be added to the total. That total takes the score to 14. Another wonderful strike right from the sweetest part of the bat. Makes the ball to travel much ahead. Even ball goes for a stroll outside the road. With that big 6, score moves to 20. The scoreboard was put for a halt by Apali Kalangudkar, who has given only 3 runs now in the third over. With the advantage of the strong base, the ball travels the distance quite comfortably. If I had power, then definitely I would have given 12 runs for that big hit. But that is out of contention, as only 6 runs to be added. Sixer takes the total to 20. And definitely the pressure is on Rajesh Sote. Good delivery, pacey delivery, there's a appeal, confident appeal, and the third wicket back to the pavilion. What a cricket match happening out in the middle. Lovely scenario, and the spectators are dancing.
So as one Australian player departs back to the pavilion, another one takes his place and will be at the striker's end. What a lovely delivery bowled by Rajesh Sote. A good reply for that maximum. Sends back courtesy, a good catch taken by the refrigerator behind the stumps, Vikas Desai. Meanwhile, there's a chance of another catch. Oh my dear! Second wicket in this over. And even I can't call a DJ as we can hear the loud band and the horns blowing from the dugout. So as Nehal Bain back to the pavilion without even troubling Virat Tendulkar for the Golden Duck. And now Jignesh Patel. Is the new man in. And Rajesh Sote is on hat-trick. 3 is the jersey number that is displaying on his back. Let's see whether he can take the hat-trick, the first hat-trick in this tournament. Jersey number is about to happen as far as the wickets are concerned for Rajesh. He has taken 3 wickets, but let's see whether he can take the hat-trick. Definitely plays watchfully, knows that he was on hat-trick. Wonderful gesture by incoming batsman Jignesh Patel. Takes a single and gives the strike to his captain. Meanwhile, bowler Rajesh has proved his jersey number. He has taken 3 wickets so far. Let's see whether he can take one more or Ijaz, the new man, the man on the strike, have some power hitting in his kitty. Can he connect a boundary? The questions are to be asked on this delivery. So far, what a lovely over. 6 runs and a single, 7 runs considered and 2 wickets. Meanwhile, there was a uphill switch. It was one, a lovely delivery. Total 8 runs have been given so far, courtesy a wide was delivered. So with that, score is 21. Again, a hint of leg cutter offered, but a way outside the off stump, trying every possible thing out from his kitty. Rajesh Sote delivering a wide delivery. Score moves to 22. Another good delivery. No chance for Ijaz Qureshi. Pacey delivery straight onto the body line. Even he could not get out of the delivery. Takes the blow onto his hand. And that concludes over number 3. After completion of 3, score is 22 for the loss of 4 wickets. So meanwhile, it's time for me to invite our senior commentator, Ashok Jinaik, with his sweet voice, as calm as cucumber, delivering the comments from the commentary box. Ashok Jinaik. थैंक यू सागर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, एक लो स्कोर का मुकाबला। अगर पहले मैच की बात की जाए जो टोटल था, उसके हिसाब से ये दूसरा मैच जो कि कम टोटल का जरूर था, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी हुई मैदान पर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले 3 ओवर का खेल जो अभी भी बाकी
और स्कोर बोर्ड पर टोटल 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का, एक महत्वपूर्ण ओवर मैच का बैटिंग पावर प्ले का ओवर। फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक करते हुए दिखाई देते हुए कप्तान मैदान पर, और 3 ओवर का अभी भी खेल जो बाकी। बॉलिंग में परिवर्तन जो कि भूषण गोली गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से दूर वाले छोर से। 2 बैटर मैदान पर, एक और से जो कि जिन्होंने शुरुआत में एजाज कुरैशी वो और उन्हीं का साथ देते हुए जिग्नेश पटेल, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी के मोर्चे पर। 3 ओवर बाकी और 36 रन मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद इस बार ढीले हाथों से खेला। पहला रन बड़ी तेजी के साथ मिड विकेट बाउंड्री पर, जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते, उससे पहले स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही शानदार क्रिकेट। 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर थे, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, और उससे के साथ ढीले हाथों से खेले था। जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। बहुत ही शानदार दौड़ और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। 24 रन पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24। 4 विकेट पर 24 रन 4 विकेट पर। ओ लेग ब्रेक लेग कटर गेंद, थोड़ा सा गति में परिवर्तन, जल्दी खेल बैठे स्ट्राइक एंड पर। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल कांटे का मुकाबला होता हुआ दोपहर के सत्र में। धूप है मैदान पर, गर्मी है, थोड़ी सी हवा का झोंका भी बीच बीच में, और दर्शक काफी खचाखच भरा हुए इस मैदान पर। मान्यवर कक्ष में सम्माननीय अतिथि जो पूरे जो कि जुड़ चुके इस टूर्नामेंट के साथ, साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2022। आज का पहले दिन का दिन रात का ये सफर, और सामने एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर भूषण गोले अगली गेंद लेकर। इस बार देखने होगा भीतरी किनारा लगा, सिंगल बना स्कोर में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा था। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी, चौथे ओवर का टारगेट मैच को जीतने के लिए 58 रनों का। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, फील्डिंग में तब्दीली एजाज कुरैशी। शुरू में बिल्कुल राम यादव उर्फ लल्ला यादव के साथ ओपन में बल्लेबाजी में। इस बार खोद कर खेला हुआ शॉट, इस एक यॉर्कर लेन की गेंद, अच्छी गेंद थी। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ निकले लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। गेंद को आते उठाते फील्ड करते दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा 26 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जिग्नेश पटेल और एजाज कुरैशी, 6 स्टार 6 सुपर किंग्स, और उन्हीं के साथ रोहित इंडियंस। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे। लेग कटर तेज गेंद, टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ। विकेट कीपर विकास देसाई उर्फ भाऊ के हाथों में एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद करने के लिए भूषण गोली सामने से दूर वाले छोर से। ओ इस बार बल्ले से लगी गेंद, लेकिन विकेट कीपर के लिए थोड़ा सा मैं तो कहूंगा कोशिश बढ़िया थी। डाइस भी लगाया था विकास देसाई ने, लेकिन गेंद थोड़ी से हाथों से दूर रह गई। स्लिप पर फील्डर शॉर्ट टर्न मैन पर गेंद को फील्ड करते। एक अच्छा ओवर, सफल ओवर, जिस ओवर में बिल्कुल रनों पर रोक लगा दी भूषण गोली ने। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 4 रन इन बने इस ओवर में, और टोटल स्कोर हो चुका है 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 26 लॉस ऑफ 4 विकेट।
2 ओवर का खेल बाकी, 12 गेंदों का, और मैच को जीतने के लिए 32 रन। 12 बॉल्स 32 रन्स। स्कोर हो चुका है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन, 26। 4 विकेट के नुकसान पर आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी, और गेंदबाजी में परिवर्तन। प्रणय गावकर गेंदबाजी पर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक बिल्कुल बेहतरीन जो कि ऑलराउंडर, वो बॉलिंग बार पर। घूमकर मारना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ, और धीरे धीरे एक बार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। प्रणय गावकर अगली गेंद लेकर सामने, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज एजाज कुरैशी, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर जिग्नेश पटेल। 2 ओवर अभी भी बाकी मैच का खेल, और 2 ओवर में लगभग 15 रन के 15.5 रन के साथ से 31 रन मैच को जीतने के लिए। अड़े बल्ले से खेला इस बार, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं था। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए निकले, बैकअप हो रहा था, लेकिन तब तक अपने पॉपिंग क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज, बहुत ही तेज दौड़ विकेटों के बीच में, और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। लगभग आधे स्कोर को बना दिया, आधा स्कोर अभी भी बाकी। खेल 5वां ओवर चलता हुआ, कहीं ना कहीं मैच को अगर जीतना है तो आने वाले गेंदों पर 1-2 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 1-2 विकेट और चले गए तो दबाव अंतिम ओवर पर और बढ़ जाएगा मैदान पर। छोटी गेंद इस बार, बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, उतनी ही शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। सिर्फ सिंगल पर रोक लगा दी फील्डर ने, अच्छा थ्रो, और 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 30 रन पर। दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर है, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है मैदान पर। जिग्नेश पटेल और एजाज कुरैशी, और सामने प्रणय गावकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग बार पर। 30 रन 4 विकेट पर 28 रन की सख्त जरूरत मैदान पर मैच को जीतने के लिए। और लेग ब्रेक गेंद, बड़ा शॉट, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली बल्ले के बीचों बीच, और थोड़ी सी मैं तो कहूंगा जान में जान आ गई मैदान पर। 36 रन 4 विकेट पर। प्रणय गावकर राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर, और सामने जिग्नेश पटेल। इस बार देखना होगा, मिस टाइम कर बैठे, फील्डर दूर है, स्कर्लेग बाउंड्री से लंबी दौड़ लगाई, लेकिन गेंद से दूर थे लगभग। 1 रन, दूसरा रन पूरा किया, बैकअप कर रहे थे जब तक फील्डर, और गेंद को जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। 3 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। एक अच्छा ओवर रन बनते हुए इस ओवर में जो रोक लगा दी थी पिछले ओवर में भूषण गोली ने, वही से लेकर कहीं ना कहीं क्योंकि प्रणय गावकर थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं मैदान पर। एक बड़ा शॉट लगा और बाद में 3 रन, और सामने एजाज कुरैशी, और उनके लिए अब फिर से एक बार राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। 39 रन स्कोर 4 विकेट पर। इस बार बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, विकास देसाई उर्फ भावो विकेट कीपर। एजाज कुरैशी आज थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे बल्लेबाजी में मैदान पर, सिर्फ 5 रन बनाकर वापस, और 5वां धक्का लगता हुआ टीम को।
टेक डीजे बिल्कुल दर्शकों में क्रिकेट प्रेमी ढोल ताशा उन्हीं के साथ बिगुल सिट्टियां बज रही है, डांस भी हो रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है इस मैदान पर। ये क्रिकेट का माहौल बहुत एक अच्छा जो कि आयोजन इस टूर्नामेंट का। और न्यू बैटर मैदान पर शेर बहादुर यादव, स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ 39, 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर। प्रणय गावकर थोड़ा सा जो कि एक छक्के के साथ महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन एक अच्छा विकेट और दाद देने पड़ेगी विकेट कीपर को, विकास देसाई को। बहुत अच्छा कैच। नए बल्लेबाज मैदान पर न्यू बैटर शेर बहादुर यादव और एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और प्रणय गावकर राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। स्कोर बोर्ड पर टोटल 39, 39 रन 5 विकेट पर, 19 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए मैदान पर। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। हल्का सा अपील जरूर, लेकिन बिल्कुल चौकरनी निगाह। एक सफल ओवर की समाप्ति, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 39 रन 39, 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर का 6 गेंदों का खेल बाकी और 6 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। अंतिम ओवर 6 गेंदों का खेल बाकी और 19 रन। बॉलिंग में परिवर्तन। आखिरी ओवर गेंदबाजी के मोर्चे पर सोहेल शेख। बहुत ही शानदार मुकाबला, टोटल 58 का। शानदार बल्लेबाजी की थी ओमकार देसाई ने, 32 रन बनाए। सनेश गावकर दूसरे बल्लेबाज, इस बार ऑप्टम से बाहर तेज गेंद करने की कोशिश। सोहेल शेख अपने थोड़ा सा लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिला स्कोर में। इस 1 रन के साथ 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और मैच को जीतने के लिए 18 रन अभी भी। और फिर से बाहर ऑप्टम से लगातार थोड़ी सी कठिनाइयां मैदान पर दिखाई देती हुई सोहेल शेख को लगातार 2 गेंदे जो वाइड बॉल के साथ 2 रन भी मिल गए स्कोर में। तो अभी भी पूरा ओवर यानी 1 ओवर 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। इस बार सामने बॉलर के पास से बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव का लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में और पहले रन के साथ दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। आने वाले अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी और मुकाबला बिल्कुल जिस तरह से हो रहा है, शायद लग रहा है कि आखिरी गेंद पर यह मैच लगभग चला जाएगा मैदान पर। 15 रन 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, 5 गेंदों में 15 रन। फुलर लेन की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर। गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं।
विकास देसाई विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। सोहेल शेख धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। शेर बहादुर यादव जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, स्ट्राइक एंड पर जिग्नेश पटेल एक शानदार छक्का लगा चुके हैं। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से चूके सफल हुए थे, बोल्ड हुए उस गेंद पर। एक बहुत ही कीमती विकेट हासिल करते हुए सोहेल शेख इस आखिरी ओवर में। टोटल स्कोर हो चुका है 43 रन, 6 विकेट पर 15 रन। अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। अंतिम ओवर का खेल मैदान पर सोहेल शेख गेंदबाजी करते हुए और नए बल्लेबाज मैदान पर संदेश ठाकुर, दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। एक ओर से संदेश ठाकुर, दूसरी छोर पर शेर बहादुर यादव और सोहेल शेख अपने बॉलिंग मार्ग पर। तो खेल जारी होता हुआ मैदान पर 15 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। सोहेल शेख अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने संदेश ठाकुर। अंतिम ओवर जारी, मैच का चलता हुआ मैदान पर मुकाबला 6 और रोहित इंडियंस, इन दोनों के बीच में। 6 सुपर किंग्स सोहेल शेख गेंदबाजी पर। ओ इस बार ऑफ स्टंप पर लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद के लाइन से चूके गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए और एक डॉट गेंद, एक सफलता मिली और सफलता के साथ पूरे उत्साह के साथ सोहेल शेख सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर में अभी भी 15 दूर रन जो कि जीतने के लिए, और देखना होगा दोनों के बीच में यह मुकाबला किस तरह से समाप्त होता है। देखना होगा इस बार मिस टाइम कर बैठे, गेंद के नीचे आते कैच करते हुए 7वें विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर।
मैच को जीतने के लिए 15 रन और स्पेल की समाप्ति की ओर नए बल्लेबाज मैदान पर। न्यू बैटर स्वप्नेश वेलिप। कहीं नहीं कहीं 58 का टारगेट था, लेकिन एक के बाद एक विकेटों का मैदान पर पतन होता हुआ और बहुत ही शानदार गेंदबाजी भी रही, खास करके सभी गेंदबाजों ने। अपाली कलिंगुटकर, राजेश सोरटे, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। प्रणय गावकर, सोहेल शेख, भूषण गोली, बेहतरीन गेंदबाजी की। फील्डिंग ने भी बढ़िया साथ दिया और जो मैच आसान था, बिल्कुल लग रहा था दिखने के लिए, वो मुश्किल बन गया मैदान पर। और इस बार बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे आते कैच को लपेटते 6 रन के लिए गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर। कैच जरूर पकड़ा था, लेकिन पांव बिल्कुल जो कि बाउंड्री लाइन से बाहर थे और इसी के साथ 6 रन जुड़ गए। तो यह मुकाबला 12 रन के साथ हाथों से दूर हो गया। 58 का टारगेट था, लेकिन सिर्फ बन गए स्कोर 46-49। तो 9 रन के साथ ये मैच जो कि छूट गया। तो जुड़ जाते मैन ऑफ द मैच इस मैच का। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी थी। ओमकार देसाई 3-4 चौके 2 छक्के लगाए थे, 32 रन बनाए थे। सनेश गावकर ने 1 चौका लगाया, 11 रन बनाए थे। लेकिन गेंदबाजों को दाद देनी पड़ेगी। 58 का टारगेट और उसके सामने राजेश सोरटे, उनके बाद अपाली कलिंगुटकर ने भी बहुत अच्छा ओवर किया। 1 विकेट 2 रन देकर चटकाया। राजेश सोरटे ने विकेटों को बिल्कुल हासिल किया। भूषण गोली जिन्होंने 4 रन दिए। प्रणय गावकर निश्चित रूप से थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन एक कीमती विकेट उन्होंने भी चटकाया। और आखिरकार सोहेल शेख ने 2 विकेट चटकाए। तो जुड़ जाते हैं हमारे स्कोरर के साथ, विराट तेंदुलकर के साथ। इस मैच का मैन ऑफ द मैच राजेश सोरटे, मैन ऑफ द मैच। और पर्पल कप का हकदार, तो आइए राजेश सोरटे मैन ऑफ द मैच। ले चलते हैं अगले मैच के साथ एक बार फिर से। और हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं सर जमीर अहमद, जिनसे हाथों, आइए सर जमीर अहमद, आप ही के हाथों पर्पल कैप का हकदार राजेश सोरटे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। दो ओवर कोई मेडन नहीं, 21 रन और 3 विकेट। राजेश सोरटे गेंदबाजी का विश्लेषण। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 21 रन और 3 विकेट। मैन ऑफ द मैच इस मैच का। और हमारे आदरणीय सर जमीर अहमद, जिनसे हाथों ये पर्पल कैप का हकदार और मैन ऑफ द मैच। तो जुड़ जाते हैं इसी के साथ। अगला मुकाबला मैदान पर शुरू होता हुआ और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आइए सर हरीश काकोडकर के साथ, उन्हीं की जुबानें। तो पर्पल कैप दी जा रही है हमारे आदरणीय सर जमीर अहमद, जिनसे हाथों, और राजेश सोरटे पर्पल कैप के हकदार। राजेश सोरटे पर्पल कैप के हकदार और हमारे आदरणीय सर जमीर अहमद, जिनसे हाथों वो कैप जो दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। अगला मुकाबला मैदान पर शुरू होता हुआ और कमेंट्री बॉक्स में माइक्रोफोन पर सर हरीश काकोडकर के साथ।
So it's going to be the third match of the day. Amazing Super Giants versus Royal Challengers Fatorda. RCF had lost their first encounter, and Amazing are playing their first match of the first day. 12th man of both the teams, 12th man of Royal Challengers Fatorda and 12th man of Amazing Super Giants. Please come in the commentary box. Twelfth man of RCF and 12th man of Amazing Super Giants. Please come in the commentary box. So Syed and Sumit Dekle. Bahubali is there in the middle as openers, and with the ball in his hand, W. Avinash Gauss. It's going to be a good match. First look at this team, Amazing Super Giants, in this tournament. And we are ready for the first ball. So two men placed in the deep are at a deep square leg and wide long on. In comes the first ball from W. Will be bowling to Syed. So bowls a first ball. That's a wonderful slower ball. The batsman shuffled across on the offside. That's the reason umpire could not give it a wide. And a smart piece of bowling here from W. Bowls a good slower ball, deceiving the batsman. Syed played a good knock in the first match, but could not get those big hits when time required. Once again, this time asking a query, wide signal by umpire. In fact, no ball signaled here by umpire because the ball was pitched outside the pitch line area. So this is going to be a free hit. Yes, it's going to be. The field doesn't change as the batsman remains the same. We have to wait for that signal. So discussions going out in the middle. And the match will continue. So once again, very nicely bowled here from W. Should be only a single. So this has costed just one run here for Amazing Super Giants. Score with that single moves on to 2. Slowly and steadily when the sun goes down and lights come into effect, this will be much greater setup. When you get a first win under your belt, that is a great confidence booster. We have seen the previous match between Rohit Indians and 6 Stars 6 Super Kings. First it looked as if the total was not good enough, but very well defended by the team in yellow, 6 Stars 6 Super Kings. Once again, that was full toss ball, very nicely fielded, down in the deep mid-wicket region. And it should be 2 runs. It was a slower ball, but picked up nicely by the batsman. Just that he did not find the gap. That will give a little bit of confidence here to Sumit with that good strike. They will like much better timing than that. He is a powerful man. That's why he's called Bahubali. She's right in the block hole. A smart piece of batting here. Understanding that it's right in the block hole. Just defending it, playing it toward mid-wicket region for a single. Important are these singles. If you hit every ball for 4s and 6s, if you try it for that, then you are giving too many dot balls, which piles more pressure on you. Singles and doubles always takes the scoreboard ticking along. This is in the air. Should be an easy catch.
And catch taken. So W strikes and gets rid of Syed in the first over itself. The score is 5, and in comes the new batsman Prajesh, and everyone knows him as Vicky. Oh, very good all-rounder is Vicky, one of the highly rated. That's why he is a marquee player for the side of Royal Challengers Fatorda. In such a big tournament, even if you're a marquee player, that means your standard is pretty good. That's why you have been rated highly as marquee player in almost, you can say, an all-India level tournament where at least 3 outstation players are allowed, and most of the teams have got outstation player. Some of the big names of Indian tennis ball cricket are playing on this ground, and you will see them playing on 3 days successively. Only 2 outstation players for Amazing Super Giants, and they have relied on North Goan players to do the job. So far, W has done a fantastic job in the first over. This is in the air. And one more catch. W strikes again. So 2 wickets of 2 balls. Vicky also goes back in the pavilion. And not looking great here for Royal Challengers Fatorda. Score is 5 runs. 5 for the loss of 2 after completion of first over. Yunus Dayat is going to be the new batsman who have to accompany Sumit Dekle. Sumit Dekle is the best batsman so far in the ranks of Royal Challengers Fatorda, and we have seen his capabilities for playing different teams in Maharashtra and other tournaments, and he has to showcase his talent here. They cannot delay producing a wonderful innings from their team perspective. They have to play it as early as possible. If you lose 2 matches, it puts you back in the trailing zone. You have to win the matches your side. That's how you get an opportunity to go into the semis and then the finals. So out of the 5, only 2 teams are going to enter into the semis, and that is called the playoffs. So one of the North Goan players has bowled beautifully. That was W getting 2 wickets. Now it's Ron Salgaonkar bowling from the far end to Sumit. This is in the air. Has he timed it well, or is it inside? Rohan also strikes, and this is a big wicket. Mighty Amazing Super Giants taking a super wicket of Sumit Dekle. The big man also departs. Not looking great here for Royal Challengers Fatorda. 5 for the loss of 3.
In comes Alvino Carvalho. So Rohan Salgaonkar comes and strikes a wicket of the very first one. What a big wicket that was. Top 3 order batsmen are back in the pavilion, and it just started with the first ball of the second over. Definitely a team hat-trick. 3 wickets, not for one bowler, but it's for the team. And that's not good for RCF. Once again, in the right areas, a good length ball just outside off stump. Nothing much you can do when you have lost 3 early wickets. Defended that dot ball against Alvino. That's why you require to get a good start from the openers. If you lose wickets early, the batsmen who are playing in the middle order have to play slowly. Try and not give too many wickets in the 3 overs. And maybe see after that. That's exactly how Alvino wants to play, maybe. He's going for the switch. That was a slower off cutter. It came in sharply, mixing it up well. Both the bowlers have bowled beautifully in the first 2 overs. Bowling dot balls, bowling in the right areas. Once again, going for the big one. The ball is not landing even outside the 30-yard circle at this stage. That's the bowling of amazing super giants needs to be appreciated. Not even a single loose ball, no half chances given away. All the catches have been taken cleanly. In comes Rohan. Once again, half-hearted pull shot down at a long on region. Should get only a single good quick throw from the fielder at long on region. Another economical and wicket taking over. This time from Rohan Salgaonkar. Another not gone player shining brightly here for amazing super giants. After 2, the score is 8 for 3. So now W comes on to bowl his second over. And to remind you that he took 2 wickets of successive ball. That is a 5th and 6th ball of his first over. So he's on a hat-trick now. Can we see the first hat-trick of South Goa Premier League, the biggest tennis cricket league from Avinash Gaons. In comes W. Oh, that was inside edge. Could have chopped onto wickets. Unlucky the bowler. Went for the switch. It is not getting it right, Eunice. We've seen so many switch hits being tried today, but sorry, in fact, it was Alvin. But switch hits have not come to the rescue of the batsmen. The bowlers have been impeccable with their line and length. This is once again in the right area, hitting the right length, trying to find a gap on the offside. Ball going straight in the hands of the keeper. Another dot ball. That was a slow ball this time, very nicely played. Should get a 6. Wonderful shot here from Alvino. Wow, what a pull shot. He waited onto that ball. It was a slower ball. Waited and played a marvelous pull shot for 6 runs. They needed this quite badly. Cracking shot that will give you a lot of confidence. He's strong in the square leg mid-wicket region. Missing the trajectory, but Alvino not missing it.
This time much fuller, just outside of stump. He wants to take 2 runs. Wanted the second. Yunus Dayat denied as the throw came quickly from the long off region. So with this single, score moves on to 15. Third over in progress, and the score is just 15, less than 6 runs per over. Once again, right in the block hole, this time played at long on region. Fielded nicely, throw was straight to the bowler, can get only a single. So very decent bowling here from both the bowlers, Avinash and Rohan Salgaonkar. Doing the job instilled by the confidence of the owner and the captain. Nothing short whatsoever. This is a perfect channel to be bowling, and he has given just 8 runs. He is not happy just because he has given that 6 of the slower ball, and that is how good a standard that he keeps for himself. Once again, a strong and commanding position, amazing position in fact for Amazing Super Giants versus Royal Challengers Fatorda. At 3 overs, the score is 16 for the loss of 3, and will be changed in commentary. I will hand over the mic to Sagar Gosavi. Check test. Thank you, Harish. So after 3 overs, score is 16 for the loss of 3 wickets. More 3 overs to be bowled in this inning. So request is on for headgear. So requesting match coordinator kindly, match referee kindly take care of the safety gear that has been asked by the fielding team. Meanwhile, there is a appeal and one more wicket goes down as the story continues. Fall of wicket like a pack of cards. 4th wicket back to the pavilion. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Thank you, DJ. Check test. So now Newman joins out in the middle. Gangaram Ingore will be at the striker's end. And what a lovely wicket taken by Varad, another local lad, picked up by Amazing Super Giants. Wonderful bowler, known for his variations, and what a way to begin the 4th over. Delivers as per the expectation, takes a wicket. Short pitch delivery, hint of a leg cutter. Ball has been nicely placed towards the wide square leg area. Fielder from the deep gathers the ball, takes a single. And that single brings Alvino on the striking end. Alvino is a lovely character, but very aggressive when he holds that willow in his hand. So far have hit a beautiful 6. Another connection, chance of a catch. Fielder running from the deep, won't be able to reach near the ball as ball falls safely onto the ground. And with that,
couple of runs for Alvino as well as team. Team total moves to 19. So good contest is out in the middle. Varad versus Alvino. Alvino swinging the bat very hard, but Varad is able to deceive him. Lovely delivery, hint of leg cut, but away from the guideline. Wide is the signal from the umpire. That wide takes the total to 20. Switch hit and what a connection. No fielder in act patrolling the fence, and that makes the ball to travel safely. One bounce out of the boundary rope. Audio Jungle. Audio Jungle. Thank you, DJ. What a lovely hit. If Alvino continues to play for remaining overs, then definitely they will be having some decent total on the board. So one of these batsmen have to continue and carry on with this inning to build up some total for the bowlers to defend in the second innings. Meanwhile, amazing Super Giants doing an amazing job with the ball at the moment, have been able to take 4 wickets. And Varad, what a lovely bowler. So far, a boundary have come from this over, but a wicket back to the pavilion. So mixture happening out in the middle for both the teams. Wanted to shuffle slightly outside the off stump and heave the ball towards the square leg. No connection. Allows the ball to travel safely towards the cow point area for a single in form of a leg buys. So that brings the Australian player on the striking end. Gangaram. Another good delivery, able to deceive the batsman, no hint of any clue, and that concludes over number 4. So after completion of 4, score is 25 for the loss of 4 wickets. DJ. So now we are about to witness the 5th over, and this over is going to be the batting power play over, where the batting side has opted where 3 fielders will be allowed to be placed outside the 30-yard circle. So let's see whether this batting power play can bring some ray of hope for Royal Challengers Fatorda. Meanwhile, a lovely delivery right into the area. That troubles most of the batsmen. But equally well played for a single. Single taking the total to 26. So now the tall guy with jersey number 129 on his back. Darshan Bandekar all the way from Malwan, that is our neighboring state. And he is proving to be a good sensational all-rounder. Right now doing the job with the ball. Tall guy having a very strong shoulders. We can see right from the commentary box, strong arms delivering into the right areas. Another good delivery. Allows, oh my dear, slight fumble. That will give liberty for the batsman to take a couple of runs. And those couple of runs will post the total furthermore to 28. We are into the 5th over. Batting power play over. But it looks to be
The in charge at the moment is Darshan Bandekar. Wonderfully the chance of a catch where the fielder is going to take it. Good stride, but not able to hold on. Good effort, I must say, as a strong wind is also blowing across the ground. That is making it difficult for the fielder to hold on. None other than Mukund. He is a safe fielder. Nonetheless, so many things to be taken care as you play on the ground. Alvino slightly moving towards the leg side, making room for himself. Wanted to heave the ball towards the covers, but allows the ball to travel safely as a decent line has been bowled by Darshan Bandekar. Another good delivery. Alvino has no clue. Ball rather hits the bat. And the pace that have been generated makes the ball to travel safely to the short fine leg. So in this batting power play over, it's the bowler who is rolling at the moment. Score moves to 30. Oh my dear, what a connection away from the fielder. Lovely effort, but could not stop the ball from crossing the fence. Good fielding have been displayed, but the runs also coming from Dover. Meanwhile, that boundary concludes over number 5. After completion of 5, score is 34 for the loss of 4 wickets. So now the final over of the inning, and it's none other than another young prospect, I must say, with the ball in his hand, checking the field, has done it quite a number of times. Many individual prizes have been won by this guy, none other than Naresh Asoldekar, with the ball in his hand. He is also an amazing player, playing for amazing Super Giants, has done amazing work throughout his career. Lovely delivery, equally well played. A chance of a run out. Throw was at the right end, but batsmen are quick enough. Alvino gathers the ground at the non-striker's end. No harm done. A good throw, even. So a single to start the final over of the inning. Score moves to 35. And that brings outstation player Gangaram Ingole on the striking end. Batsmen are trying their heart out to get the ball at the middle of the bat, but that is not the story, that is not the scene at the moment. Ball taking the leading edge and traveling safely to the keeper. Boundaries have been dried up by the good bowling effort by amazing Super Giants. Meanwhile, Alvino strikes. Let's see whether the ball is going to travel a distance. No, my dear. Tall guy stops the ball right inside the boundary rope. Chance of run out at the non-striker's end. Direct hit. Good presence of mind by the wicket keeper. Throws it right at the middle of the 3 stumps. And 5th wicket back to the pavilion. Gangaram back to the pavilion in form of run out. DJ. Thank you, DJ. The keeper is none other than another big name, Arjun Bhosle, all the way from Karnataka, doing the job of wicket keeping behind the stumps, and meanwhile requesting Oxford Titans and 6-star 6 Super Kings kindly come for toss as you are going to play the following match. Captain of
Oxford Titans and captain of 6*6 Super Giants, Super Kings come for the toss. So we are into the final over. Couple of deliveries remaining in this inning. And fifth wicket back to the pavilion. But the good thing to see is Alvino is on the striking end. Can Alvino get some runs for his side? Wonderful swing, but a lovely delivery considered by much experienced player right now on this cricketing field. Naresh Asoldekar delivering in the right areas, making it a hell out of difficulties for the batsman. Finally, a strong connection has come, and that takes the ball out of the contention from the players as a big sixer comes from the bat of Alvino. DJ. That was a big hit, a strong connection. Can Alvino get one more out of this over? The question that is to be asked by Naresh Asoldekar in front of Alvino. Another strike, there's a fielder in act. Oh my dear, what could have been a catch have been missed. And that is not what the captain have expected. Meanwhile, no ball is the signal from main umpire. Total 5 runs, and that will allow Alvino to cut loose even more as one more free gift have been offered in form of a free hit. Whether Alvino can take maximum out of it. Score moves to 48. Low full toss, oh my dear, what a hit! No chance for any fielder, and that, whoa my dear, what a lovely hit. Waited deep inside the crease as the low full toss was bowled slightly outside the off stump. Takes right from the middle of the bat to dispatch the ball over the square leg area. What a finish by Alvino. Rising at the occasion, and at the end of the first inning, score moves to 54. Total 55 runs required for Amazing Super Giants to win this match. Meanwhile, let's move forward for the toss that is going to happen between Oxford Titans, and we can see the captain of 6*6 Super Kings, Vikas Desai, is waiting for Mukhtar Kadri, and both the captains have arrived. So we are going to witness this toss as there's a break between the inning. So match referee is requested to kindly take the toss as both the captains. And please give your playing 11 before the toss. Oxford Titans and 6*6 kindly give playing 11 before the toss. So requesting match referee to kindly carry on with the proceedings. And the target is of 55 runs in front of Amazing Super Giants. Requesting captain of Amazing Super Giants kindly conclude meet your meeting as quick as possible, as run chase will be on in a while and more matches to be played as the day progress. So let's see what is going to happen out in the middle. Meanwhile, I would like to welcome Ashok G. Naik in the commentary box. And it's time for DJ for the wonderful music.
फॉलो। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। आने वाले मैच के लिए हम टॉस को लिए आमंत्रित कर रहे हैं। टॉस हुआ है। टारगेट मैच को जीतने के लिए 55 रनों का। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम की मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स फातोर्डा क्रिकेट टीम के साथ। एकमात्र बल्लेबाज 35 रन बनाए अल्विन कार्विलो, जिन्होंने 3 छक्के और 2 चौके लगाए, 35 रन बनाए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की एकमात्र बल्लेबाज। और देखना होगा, पिछला मैच 58 का टारगेट था, लेकिन क्या मुकाबला रहा था मैदान पर। और ये मैच जो कि 55 का टारगेट, 6 ओवर का मुकाबला और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। अर्जुन भोसले, मैन फ्रॉम कर्नाटक, एक बहुत ही शानदार, हुबली से बिलोंग करते हुए इस मैदान पर, और उन्हीं का साथ देते हुए अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू। आज गेंदबाजी में बिल्कुल किफायती गेंदबाजी की, खास करके पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर था, अविनाश गावस बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। 2 विकेट चटकाए। रोहन सालगावकर ने एक सफलता हासिल की, और उन्हीं के साथ जो कि आखिर में नरेश असोंडेकर थोड़े जो कि नो बॉल के साथ एक छक्का लगा, और वहीं पर थोड़ा सा ठीक ठाक हो गई टीम। मुकाबला बन जाएगा मैदान पर। देखना होगा, दर्शन बांदेकर ने भी आज बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की। खेल की शुरुआत होती हुई अंपायर का इशारा, टारगेट 55 रनों का मैच को जीतने के लिए। और पहला ओवर गंगाराम गेंदबाजी पर, और अच्छी गेंद उछाल लेती हुई बैकफुट पर जाकर ढीले हाथों से खेला, गली पर गेंद को फील्ड करते हुए फील्डर एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। इस बार ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, थोड़ा सा हटकर खेलना चाहते थे अविनाश गावस। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। सामने से दूर वाले छोर से गंगाराम इंगोले गेंदबाजी करते हुए। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर अर्जुन भोसले और उन्हीं के साथ अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू। 55 का टारगेट, पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर मैदान पर चलता हुआ। और इस बार अल्टी पल्टी रिवर्स का प्रयास सफल रहे। गेंद निकलती हुई वाइड गली पर, बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। इस बार आड़े बल्ले से स्वीप किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा अर्जुन भोसले ने गेंद को फील्ड होते हुए
बिल्कुल सही सोच, अपने बढ़ते कदमों को रोका और एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। खुद का 5 पर, जो कि अर्जुन भोसले 1 पर सामने स्ट्राइक एंड पर, और सामने दूर वाले चोर से गंगाराम इंगोले गेंदबाजी करते हुए अपने बॉलिंग बार पर। गेंद चली गई लिमिट आपकी तरफ, और जब तक अपने फॉलो थ्रो में जाते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा, 1 रन मिला फिलहाल स्कोर के खाते में। सिंगल बना, 55 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। सामने बेहतरीन गेंदबाजी है अमेजिंग की, अगर बात करेंगे अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम की, तो बल्लेबाजी भी है, और देखना होगा किस तरह से मुकाबला समाप्त होता है। साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2022 दिन रात का ये क्रिकेट का टूर्नामेंट, और इसी बात फिर से रिवर्स का शॉट, लाजवाब टाइमिंग, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक नजाकत भरा छक्का। थैंक यू डीजे। 55 रनों के जवाब में अच्छी शुरुआत। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर बोर्ड पर। एक छक्का चौका बल्लेबाजी में अविनाश गावस खुद के व्यक्तिगत 11 रन पर, अर्जुन भोसले 1 रन पर, और गंगाराम इंगोले पहला ओवर जो समाप्त, 1 ओवर कोई बैटर नहीं, 11 रन, कोई सफलता नहीं। बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से, 13 रन 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद, और गेंदबाजी में परिवर्तन। गौरेश नागवेकर बुमरू के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छे आजकल गेंदबाजी में बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है। हाल ही में मालवण बोर्डिंग मैदान पर हो, कुडाल की मैदान पर हो, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और वो गौरेश नागवेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। शायद थोड़ा सा अपने रनअप पे चूके, और एक बार फिर से वापस जो कि गेंदबाजी पर राजकिरण राठौड़, और उन्हीं के साथ असलम शेख और सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, ये त्रिमूर्ति अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ। और इस बार लेग कटर गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, थोड़ी सी बल्ले से ऊपर लगी, गेंद निकली कवर पॉइंट की तरफ, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ से अर्जुन भोसले खुद के व्यक्तिगत पहुंचे 2 रन पर, 11 पर बल्लेबाजी करते हुए एक चौका छक्का लगाते हुए अविनाश गावस्कर पर डब्ल्यू, और सामने एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गौरेश नागवेकर राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। घूमकर मारना चाहते थे ऑन साइड पर, रन के लिए निकले तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज, लेकिन जब तक विकेट कीपर आते गेंद को फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा, और एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स फातोड़ा क्रिकेट टीम के साथ। अगला मैच, इस मैच के बाद जो टॉस हो चुका है, अगले मैच का मैच समाप्ति के साथ जो अगला मैच शुरू होगा इस मैदान पर। और इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, मिस टाइम कर बैठे, विकेट कीपर ने कैच को लपका, और बड़ा धक्का, पहला विकेट वापस निकलता हुआ अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम का अर्जुन भोसले वापस आउट होकर।
डेक्यूटीज न्यू बैटर मैदान पर मतीन खान बल्लेबाजी करने के लिए। लंबी बाउंड्री है, उतना आसान नहीं है इस मैदान पर बाउंड्री पार करना, लेकिन आज बड़े शॉट जरूर देखने को मिल रहे हैं। ओमकार देसाई ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और सामने न्यू बैटर गौरेश सफलता हासिल करते हुए आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार बॉलर के पास से सिंगल बना, मिड ऑफ से फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन पूरा किया। इस बीच में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर 55 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए। खेल जारी दूसरे ओवर का। दूर दूर जमाई गई फील्ड, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद अक्रॉस द लाइन थोड़ा सा खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार ओवर गौरेश नागवेकर का, एक सफलता मिली और लगभग बीट किया था वो बल्लेबाज को जो कि स्ट्राइक एंड पर। दूसरा ओवर मैच का जारी, 6 ओवर का मुकाबला, 9 रन के साथ रन रेट अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को, लेकिन सामने रॉयल चैलेंजर्स फातोर्डा क्रिकेट टीम संघर्ष कर रही है हर रन के लिए, बिल्कुल जो कि संघर्ष मैदान पर। इस बार बैकफुट पर जाकर थोड़ा सा गेंद के आने का इंतजार किया, बहुत ही शानदार फील्डिंग कवर पर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। अगर निकलते रन के लिए तो लगभग खतरा बन सकता था रन आउट का। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर टोटल 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी चर्चा मैदान पर और उन्हीं के साथ बॉलिंग में परिवर्तन। गेंदबाजी के लिए विनय सतर्क दिखाई देते हुए खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर। 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 16 रन, एक विकेट पर, और तीसरे ओवर की शुरुआत। और छोटी गेंद इस बार हुक किया, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 20, लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 रन, 1 विकेट। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, और पहले बिल्कुल जो कि सफल हुए थे गेंद को खेला फाइन लेग बाउंड्री पर। मतीन खान के बल्ले से एक शानदार शॉट चौका, और सामने स्ट्राइक एंड पर एक बार फिर से सामना करते हुए अगली गेंद का। इस बार सामने गेंद को ड्राइव किया, एक अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर तेजी के साथ आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में पहले बाउंस के बाद एक सिंगल बना स्कोर में। स्कोर 1 रन के साथ से आगे बढ़ता हुआ 21 रन पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का, टारगेट मैच को जीतने का 55 रनों का, मैच को जीतने के लिए टारगेट जो कि अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को। इस बार अल्टी पल्टी रिवर्स का प्रयास, संपर्क नहीं हुआ इस बार। अविनाश गावस, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी ऑफ स्टंप पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विनय सतर्क धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। अविनाश गावस और मतीन खान, ये जोड़ी अर्जुन भोसले आज बिल्कुल सस्ते में लौटे पहले विकेट के रूप में। शॉर्ट पिच गेंद इस बार गुडलेस स्पॉट पर उछाल लेते हुए खड़े खड़े खेलना चाहते थे, बिल्कुल
शायद तो उतना फुटवर्क नहीं था जो गेंद के लाइन पर गेंद चली गई उछाल लेती हुई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, मुकाबला कम टोटल का 55 रनों का, लेकिन सामने से बिल्कुल किफायती गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी हो रही है। शॉर्ट पिच बाउंसर, अब मात्र इशारा अंपायर का वाइड बॉल का। अतिरिक्त रन थोड़ी सी वार्निंग भी दे रहे हैं हम, जो कि गेंदबाज को उछाल मिले इस बार गेंद को गुडले स्पॉट पर, और वाइड बॉल के साथ एक रन भी मिला स्कोर के खाते में। अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। 55 का टारगेट मैच को जीतने के लिए, और खेल चलता हुआ तीसरा ओवर मैदान पर। छोटी गेंद, इस बार गेंद का आने इंतजार किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद, 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। थैंक यू डीजे। अविनाश गावस के बल्ले से दूसरा छक्का, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर। और फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार गेंद बल्ले में संपर्क में, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो खेल तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ मैदान पर। 2 छक्के 1 चौका अब तक अविनाश गावस। अर्जुन भोसले आउट होकर वापस से 2 रन बनाकर मतीन खान जो नए बल्लेबाज जुड़ चुके हैं अविनाश गावस के साथ। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर हो चुका है 28 रन। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, लगभग आधा मुकाम पार कर चुकी है अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम। फिलहाल 9 रन के साथ अंतिम 3 ओवर में 27 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में बदलाव मैदान पर, और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोडकर के साथ। So 28 runs scored, 27 runs required, half may mark crossed. 3 overs, 27, not a big ask. But you never know if good bowling is there, if they take catches, take their even half chances, create an opportunity of run out, anything is defendable. Cricket has seen strange things. This is very nicely bowled. Good pace in the good areas. And bowling a first ball, that is a dot ball. If you bowl first dot ball, there's definitely the bowler feels a little bit of confidence. Yes, I am bowling in the right areas. And that confidence allows you to bowl with a lot of pace in the further part. Accuracy is very much important. These are so good players, you just cannot miss against them. Avinash and Mateen. Oh, this is good stuff. This is good stuff. This is the back of the hand slower ball and a slower leg cutter as well. And even if he had played that a scoop or a pedal sweep shot, that would not have fetched him anything, because the pace was not given by the bowler. Smart piece of bowling. First one was a quicker one outside off one. Next one was a slower left cutter. Mixing it up well here, Gaurish. This is in the air. This might be a catch. Who is going to take it?
Oh, both two fielders almost about to collide, but finally that was good communication and catch taken by the fielder in the covers. Huh? Vinesh Satarkar comes and takes a good clean catch. So wicket at the right time here for Royal Challengers Fatorda and keeping them in the hunt of winning this game. जबरदस्त अनाउन्समेंट चालू आसात फ्रॉम GCC गावठी क्रिकेट क्लब ऑफ फातोडा आणि इतले जबरदस्त अनाउन्समेंट की जर भायर कोणी स्पेक्टेटर्स नाल्यार बॉल बॉयज कोणी आसा जर एक हातान कॅच धरता जाल्यार ताका 100 रुपये लागू. तशेंच आणि स्पॉन्सर आसा मोहसिन अहमदान हे स्पॉन्सर केल्ले आसा, खूब उमेदीचेर आसा मोहसिन बाब. तशेंच ताणी आनी एक अनाउन्समेंट केल्लो आसा की 6 बॉलां 6 सिक्सरी मारल्यो जाल्यार 1000 रुपया. 6 बॉलां 6 सिक्सरी मारल्यो कोणी बॅट्समॅनान जाल्यार 1000 रुपया. मोहसिन बाब तूं म्हज्या सायडीन आसा, इतलो बेजार बॉलराचेर कित्याक? ₹500 फॉर द हॅट्रिक. मोहसिन बाब देव बरें करूं तुका, बरो एंटरटेनमेंट. ह्यो ज्यो प्रायज आसा ती चालूच उरतली आनी रातभर चालू उरतली. This time wide signaled here. Never mind, that was not a bad ball. That was hitting the right area. It's just that it's swayed away little bit. RCF are somehow keeping them in this match. Gangaram Gorish Nagwekar is the one who bowled a decent first over. Now it's continuing once again. So far, no runs off the bat in his second over. Oh, this is stunning ball. Just opened him up. Quick leg cutter, fast leg cutter. And this is a good over. This is keeping RCF in the race. This match is still alive. You just need a few good deliveries, piling up of the pressure on the batsman. And that is happening. We need to see good matches in this big tournament. So waiting for someone, and in comes Gauresh once again. He's ready. That was a full toss one. Has he hit it cleanly? Is it going out of the ground or is it taken? He's upset with himself that he bowled a full toss ball, but when God is there with you, the full toss ball also gives you wicket. So W has to depart. Played a very good knock of 260s and one boundary. And this over is certainly changed the momentum and tilted in favor of RCF Fatorda. For this time, still a ball left of Gauresh. This is a stunning over from Padney Express, Gauresh Nagwekar. That's the reason why RCF was very firm that they are going to take this man. And he has done absolutely justice to the selection of himself in Royal Challengers Fatorda. He has given them a chance, opportunity. If they bowl well in the next 2 overs, this match can well be won by RCF.
Oh, outside edge. Look at this captaincy. Fantastic captaincy. Getting a slip in place for Gaurish. And that's the reason why that run was stopped. Amazing over against amazing super giants by Gaurish Nagvekar. And after completion of 4 overs, the score is 30 for the loss of 3 wickets. Uh, 25 runs required in 2 overs. Very much possible with Darshan Bandekar, the superstar from Malwan, who is an outstation player for amazing. And with the stature that he has, with the caliber that he has, this man certainly can single-handedly win this. 25 is not a big total. It's just 12 runs per over. 1 or 2 sixes in this over can change the complexion of this match. But important here is that spell from Gaurish Nagvekar. We have to give credit, we have to give applause to fantastic bowling. Quick, fast, and those leg cutters as well. 2 overs, 4 runs, and 2 wickets. In fact, 3 wickets. 1 was there in the first over, and 2 wickets in the second over of his spell. And that's one reason, that's the primary reason that they are still in the hunt in this 5th over. This man has hit 6 sixes of 6 ball. Darshan. So batting power play has been taken by Darshan. He looked in the dressing room whether to take. Whether I don't think so. They will deny him because he is experienced enough. He has got the power and he knows where to play the shots. And he's the right man right now to take this batting power play. The big man is waiting. They want to get the fielders absolutely right. Vicky comes and Vicky has to bowl a good over here. Somewhere around 10 runs. I think the job must have been done by him. Maybe 15 in the last over will be slightly difficult to get with pressure on the batting side. So here is Darshan Bandekar facing against Vicky for the first time in this tournament. Oh, that was a poor ball. That was a half cracker from Vicky, and Darshan is not going to miss on those. Even if you wake him up at 2 a.m., then he can play that shot with one eye closed. Vicky is not of his own in this tournament. That 6 of the very first ball will instill a lot of confidence, not only on Darshan, but in the dressing room of amazing super giants. He went for the big one. This time it was much better outside of stump. These batsmen are so good, these outstation players, and also Goan players. I will not rate them badly. Avinash has played his part as well for this team, not only in batting department, also a wonderful 2 overs. You have to be smart. You have to have those cutters. You have to be bowling in the right areas, yorkers, the variations. This is once again in the slot. This time he gets a boundary. Just short. And 4 runs. 10 runs of the first 3 balls. Pressure on Vicky now. "15 runs required of 9 balls. 15 of 9. Target is slowly coming into the reach of Darshan and his team. Once again, Vicky. Darshan is gearing up. That's a good ball. Defended it. Wants the second. He wants the strike. He wants the strike. And that's a run out.
There was miscommunication. Darshan always wanted the second. It was Vicky that he committed the mistake, stopped in between, and that stopped costed him the wicket. Now he has to depart and go back in the dressing room. So in comes Rohan Salgaonkar. Very good all-rounder. He hails from Osnora in the north. Recently, he won a tournament organized by Star Boys in Kurcharem. Star Boys of Kurcharem Municipality Panchayat level tournament, and they won this tournament. He was in a winning zone. So once again, he comes with a positivity in this tournament from that tournament. Let's hope that he fares well. In comes Darshan. Vicky takes a wicket, although in the form of run out. This was bowled on his legs, not allowing him to swing. Much better thinking here from Vicky. Watching the batsman till the last moment. Darshan wanted to come down the track. He saw him and then fired him on his legs. So score moves on to 42. 13 runs required. 13 of 7. And what is the idea from Rohan? Whether he's going to take the single and keep the strike, or is he going to go full-blooded and give strike to Darshan of the next over? Just getting the answer within a fraction of a second when Vicky comes on to bowl this next ball. Once again, very nicely bowled. So dot ball to finish this over. Vicky has come back strongly after giving a 6 and a boundary in the first 3 balls to just give away 12 runs in total. So after completion of 5 overs, the score is 42. 13 more runs required of 6 balls. So in comes Yunus Dayat. Pressure over for him, and he has got a big man, Darshan Bandekar, against him. 13 runs required. Where is the strong zone? Where he is going to hit that 6 and a boundary? Right from the first ball, or he is going to take doubles? The question mark, this big question will be answered within these 6 balls. This time wide signal here, way too outside off stump. Very well left here, understanding that it's going to be wide.
Oh, mighty heave and mighty six. Look at the power of this man. Well. Now it is even Stevens, much even towards amazing super giants. So now only 6 runs required. Can he finish with one more 6? Till the time Darshan Bandekar was there on the wicket, they had no worries, and that's exactly what has happened. The big man has struck big blow at the very first ball. Right in the block hole, this is much better. Can get only a single. So that will make 5 runs required of the 4 balls and will give strike to Rohan Salgaonkar. It's going to be important to see what is the role of Rohan. Whether he takes a single or whether he goes for the big one. He has the capabilities to go for the big one himself as a good all-rounder. Oh, this time a cracking ball. Ball just bounced up from the good length area. And dot ball is valuable, much valuable. Just like how a diamond is valuable at this moment. 3 balls, 5 runs. The match is not won until it is won by scoring the winning runs. You might see that this is situation in towards the betting side favor, but cricket has certainly seen uncertain things. This time misfielding here by the keeper. Otherwise, this might have been a dot ball. He came shuffling across on the offside. Lucky that the keeper could not collect the ball and by signaled. Because of that shuffle on the offside, the ball went over the wickets and wide was also not signaled. So pressure certainly seeming on Rohan Salgaonkar, but good that he will be at the non-striker's end. This is a crucial ball. This match has gone right down the wire. One of the best matches so far in this tournament. We can assure you that we can give you many more matches, and most of the matches, most of the teams are evenly balanced as they are auction sides. So most of the teams will be balanced and certainly more such matches will be seen. Four runs of 2 balls. And he goes high, mighty 6. Humongous strike. 6 to finish this, 6 to kill this match, and the hopes of RCS. What a man, what a player is Darshan Bandekar. That's why you need to have such a big, colossal man in your team. And amazing super giants will be very happy. That was a super 6, that was a giant 6. And we'll be telling you the man of the match shortly. And congratulations to Amazing Super Giants for the victory in the very first match. Meanwhile, man of the match, orange cap, purple cap. आता नोट करात, ज्यो टिमी खेळपाचे आसा नोट करात. तुमकां 25 मिनटां टायम दितले इनिंग्स काबार करपाक. जर 25 मिनटांनी इनिंग काबार करना जाल्यार ओव्हरी शॉर्ट जातल्यो. कित्याक वी आर ऑलरेडी लेट and you are taking too much of time in completing your innings. म्हणल्यार ऑरेंज कॅप, पर्पल कॅप, ऑरेंज कॅप होता आल्विनो कार्वालो. बरो स्कोर काडिल्लो 35 रनाचो आणि आल्विनो कार्वालोक हे ऑरेंज कॅप होता. आणि पर्पल कॅप होता गौरेश नागवेकर. दोन्ही आरसीएफ टीमीचे रॉयल चॅलेंजर्स फातोर्डा. पूण बॅड लक दिसता की इतले बरे परफॉर्म करता पूण अजूनही दोन्ही मॅची ते हरल्यात. पण हांव रिक्वेस्ट करता गौरेश नागवेकर आणि अल्विनो कार्वालो येवचे आणि तुझे एकमेकाचे ऑरेंज आणि पर्पल कॅप रिस्पेक्टिवली घेवचे. म्हळ्यार मॅन ऑफ द मॅच जे आसा एक जबरदस्त परफॉर्मन्स
ऑल राउंड परफॉर्मन्स केल्लें ओदोवच्या मॅचीक आनी तो जावन आसा गोवन बऱ्यांतलो बरो ऑलराउंडर सुपरस्टार डब्ल्यू. अविनाश गांवस इज द मॅन ऑफ द मॅच. 2 बरी ओव्हऱ्यो आनी बरी सुंदर बॅटिंग. सो डब्ल्यू मातसो यो आनी तुजें मॅन ऑफ द मॅच प्रायज कलेक्ट कर. So now organizers are being little strict with their timings as more matches to be played. So both the teams and even all the teams who are present on the ground as well as who are going to be playing tomorrow, kindly note that you are going to get 25 minutes to finish the quota of 6 overs. Otherwise, the umpires and the match referee will be in act deciding what will be the penalties. Meanwhile, requesting Gaurish Nagvekar to kindly come and accept your purple cap as you are the highest wicket taker for the day. And requesting our guest Abdul Karim to kindly present purple cap to Gaurish Nagvekar. So meanwhile, we can see as usual Oxford Titans, after winning the toss, decides immediately to field first. Meanwhile, the signal is coming from the umpire. Let's start the game, and here we are about to start the game. And as captain is setting the field, the non-playing captain of Mukhtar Qadri is already at the side of the commentary box. Playing captain and his partner, non-playing captain, bringing luck for each other. Meanwhile, here we go with the first delivery of this match. 2 players out in the middle in the yellow jersey. Vikas Desai and Omkar Desai. One from Goa, one from our neighboring state. Desai brothers as per the surname, out in the middle. Omkar Desai was not fortunate enough in the previous match, was run out courtesy a direct hit from. That was from Bandi Patel. Meanwhile, I switch it. Oh my dear, what a way to start the inning. Times at the ball quite comfortably towards the third man area. And that will make umpire to dance a bit, swinging his hand. And a boundary to carry on with the proceedings. So Omkar Desai continuing with the similar fashion that he have started in the first match. And the bowler Pritham Bari. Another good delivery straight onto the legs. That was a toe breaker. Nonetheless, a strong throw from the keeper, equally well backed up at the mid-on area by Akshay Zogre. So that meanwhile allows both the batsmen to complete a single, and that single brings Vikas Desai on the striking end. As cool as refrigerator, a think tank onto the striking end. Oh my God, what a hit! Right from the middle of the bat as the ball was pitched slightly fuller, taking the optimum advantage and putting the ball out of the boundary rope.
So the 6-star-6 Super Kings are ruling at the moment out in the middle, as all the 11 players of Oxford Titans are watching the ball being put out of the boundary rope. And what a beautiful sixer from the bat of Vikas. Ball pitched slightly outside the off stump. Cut shot was in act, but ball was pitched way outside the off stump. That allows the ball travel safely to the keeper. Meanwhile, wide is the signal from the umpire. That wide takes the total to 12. Another swing and a miss. Pacey delivery straight into the hands of keeper. That is the amount of pace generated by Pritham Bari, not giving any room for Vikas Desai as a bowling stump to stump. Another connection, but only to the keeper. Maybe the ball has brushed the shoulders on its way of the batsman. That is why no appeal from the bowler as well. Knew that ball has hit the shoulder. So good reply from Pritham Bari, delivering consecutive 2 dot balls. Score is held at 12 and the power play over is on. Oh my dear, low full toss. Again, sensing the opportunity and delivering at the occasion. Second sixer from the bat of Vikas Desai, the captain of this side, delivering in the first over. And that sixer takes the total to 18. After completion of 1, 18 without any loss of wicket. Thank you, DJ. So as we can see, loud music is played by the supporters of 6-star-6 Super Kings. And that is also the support for an IPL team, that is Chennai Super Kings. Wherever they go, the ground belongs to Chennai. Right now, this ground belongs to 6-star-6, who are enjoying the scenario at the moment. So far, they have won 1 match, and they are hoping for 1 more match to be won, as they are batting first. And meanwhile, the signal from the umpire is batting power play. Omkar Desai on the striking end. So this is going to be a very good contest. Mukhtar Qadri, the one-man army with the ball. And the man on strike facing him is none other than Omkar Desai. Let's see what are going to be the strategies, as only 3 fielders will be allowed to be outside the 30-yard circle. So good contest is on, having a word with his partner as how to carry on with the inning. But Mukhtar Qadri is a very shrewd all-rounder. When he takes the ball in his hand, he knows exactly where to deliver. Let's see what is going to come from the armory of Mukhtar. First delivery right to the block hole. Omkar shuffles, guides the ball towards the square leg. Good pickup. Wanted a second, runs very hard, and they complete a couple of runs. So that takes the total to 20. And as we have witnessed the previous edition of IPL, even many tournaments in Goa as well as out of Goa has been the year of yellow color. Let's see whether this is going to be prosperous for the batting team, or the blue army is going to stop that luck. Meanwhile, on to the back foot quickly, guides the ball towards the square leg area. Shakil, the fielder. Meanwhile, a single takes the total to 21. We are into the second over, and it is batting power play over. So now Vikas Desai on the striking end. There's a strong breeze blowing from the leg side. And as Vikas Desai is on the striking end, Govind Bappa decides to keep the stumps closer, so that if there is any chance of a stumping, then they should get the wicket of Vikas Desai. So lot many things to be watched. Meanwhile, Mukhtar Qadri right arm round the stumps. Swings the bat very hard, a hint of leg cutter, very shrewd bowler.
has immense experience, has played cricket at all the levels. Now with the ball delivering from the stadium end. But Vikas Desai is not going to keep quiet for long. It is the silence before the storm. Oh my dear, what a connection! And the storm has been brought by Vikas Desai, hitting the third sixer. With that, Biggie score moves to 27. We are into the second over. Another hit, chance of a catch, but away from the field, the ball bounces away. And that's a boundary. Vikas onto the roll with a very strong wrist. And let me tell you one thing, if Vikas Desai was not the marquee player, then definitely Kadri would have bidded all is quota for Vikas Desai. Such is the caliber of Vikas. Right now on the striking end, jersey number 9 on the back, doing the job for his team. Man in yellow, man in form, facing Mukhtar Kadri. Another good strong swing. Ball has been pitched slightly outside the off stump, and that is the trick. Finally, Kadri strikes, but Vikas has done the damage that was required and had set a platform for his team. Departs at the team total of 30-31. Vikas back to the pavilion. Take it easy. As the captain departs, a new man joins. Out in the middle is Bhushan Goli. He is also outstation player. So 2 outstation players out in the middle, and we are into the third over. Man of the match of the first match, Suhas Pawar with the ball. So far he has given only 4 runs in this tournament. Whether he can continue with the same form. Right now, the hurdle in front of him is none other than Omkar Desai. Shuffle slightly towards the off stump, but ball has been pitched way outside the guideline. And that is the reason stretch of arms by umpire immediately signaling this is a wide delivery. That wide takes the team total to 32. Plays watchfully, guides the ball towards the wide-ish gully area. Single is the thing they settle for. And with that, score moves to 33 for the very first time in this tournament. As this number, I've been telling so many times that this is a magical figure. As even at the international level, this number has done many unusual things. So let's see what is going to happen out in the middle on this ground. Score is 33. Sweeps the ball along the carpet, plays safely. Maybe the batsmen have heard and even have witnessed that magical figure, not taking any risk. Takes a single, gives strike to Omkar Desai. With that, score moves to 34. So far, a decent delivery is bowled by Suhas Pawar onto his run-up mark, left arm over the stumps. Another swing and a miss. Omkar is asking for a wide, but umpires are very shrewd. They are very strict.
Meanwhile, we can see the urgency among the players as only 25 minutes have been awarded to complete the quota of 6 overs. And that makes the players to be on their feet. There's a connection, chance of a catch, two fielders running, and the catch has been taken finally by the fielder from the short. Fine leg. Now the fielder takes the catch and the second wicket back to the pavilion at the score of 34. Audio Jungle. Thank you, DJ. So after departure of Omkar Desai, the new man in is Apali Kalangutkar. Another shrewd all-rounder can hit big sixes with an ease. On to the striking end will be facing Suhas Pawar. Lovely strike to the cover. Two fielders in act, patrolling the fence, and finally, the youngest player of the team, Mukhtar Kadri, stops the ball inside the 30-yard circle. Meanwhile, a single takes the total to 35. And with that, Apale opens his account and brings his partner, Bhushan Goli, on the striking end. Can Bhushan Goli fire now? Switch it in act equally well, deceived by Suhas Pawar, bowling into the right areas. Meanwhile, a single in form of leg by, decent over concluded by Suhas Pawar, and the boundaries have been dried up by him in this tournament. Meanwhile, that concludes over number 3. After completion of 3, score is 36 for the loss of 2 wickets. And now it's time for me to take a short break and invite Ashok Jinaik into the commentary box. धन्यवाद सागर गोस्वामी। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 2 विकेट पर, 36 लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने से दूर वाले छोर से सरफराज नवाज पर चप्पू गेंदबाजी पर, और बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर अपाली कलंगुटकर जो नए बल्लेबाज, खुद के व्यक्तिगत 1 पर भूषण गोली जो 1 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। 3 ओवर अभी भी बाकी और देखना होगा इन आने वाले 3 ओवर में कितने रन बनते हैं स्कोर के खाते में। इस बार गेंद सामने अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही शानदार फील्डिंग, नॉन स्ट्राइकर इन पर निशाना लगाया था। 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान पर 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 38 रन। 2 विकेट के नुकसान पर खेल जारी। चौथे ओवर का 3 पर खुद के व्यक्तिगत भूषण गोली बल्लेबाजी करते हुए, और अपाली कलिंगुटकर 1 पर और सरफराज नवाज अपने बॉलिंग मार्ग पर चौथे ओवर की जो कि शुरुआत हो चुकी है मैदान पर। ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद इस बार गुडलेस स्पॉट पर। थोड़ी सी पिच पर अगर मैं बात करूंगा तो विकेट पर बाउंस मिल रहा है गेंदबाजों को। खेलना चाहते थे एक बड़ा शॉट, लेकिन गेंद थोड़ी सी हरकत करते हुए लेग कटर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, और एक बार फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर।
इस बार फिर से एक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, सही संपर्क नहीं रहा। अपने पॉलिथ्रो में आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, सरप्राइज गेंद को फील्ड करते और एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। चौथा ओवर जारी, दो बैटर ओमकार देसाई खुद के व्यक्तिगत 8 रन पर और एक शानदार बल्लेबाजी, 3 छक्के 1 चौके लगाया विकास देसाई 22 रन पर आउट होकर वापस। ऑफ टेम्पर यह गेंद फिर से पटकी हुई गेंद, अतिरिक्त उछाल, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे लेकिन फिर से गेंद के बिल्कुल लाइन से थोड़ा सा दूर थे भूषण गोली और एक डॉट गेंद। बहुत अच्छा ओवर जो चलता हुआ मैच का चौथा ओवर। पहली गेंद पर 2 रन लेकिन उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं बड़े शॉट के लिए। शॉर्ट ऑन पोल का शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक बड़ी देर के बाद हवाई फायर 6 रन के लिए। दर्शकों के लिए एक बार फिर से जानकारी, अगर एक हाथ से आप कैच पकड़ोगे तो आपके लिए इनाम जारी रहेगा और अगर पकड़ा है तो आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, मान्यवर कक्ष के सामने। इस बार भीतरी किनारा लगा, गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं पर गेंद चली गई, कहीं पर शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। सिंगल पूरा हुआ और इस सिंगल के साथ भूषण गोली जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए खेल इसी के साथ रुका हुआ मैदान पर। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 45 रन 45, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम, बल्लेबाजी करते हुए 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम। और एक परिवर्तन मैदान पर जो कि गेंदबाजी पर सुहास पवार, एक सफल गेंदबाज, कमेंट्री बॉक्स की ओर से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, विकेट कीपर के हाथों से गेंद थोड़ी सी छूटी, वाइड बॉल का इशारा, तो टोटल मिले 2 रन अतिरिक्त स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 47 रन पर 47, 2 विकेट पर। इस बार बिल्कुल अच्छी गेंद, लेग ब्रेक, इस बार गेंद ज्यादा टर्न हुई, मिडिल स्टंप से लगभग ऑफ स्टंप पर विकेट कीपर के हाथों में। सफल हुए तो ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चुके अपाली कालंगुटकर। इस बार रिवर्स का प्रयास, विकेट कीपर के पीछे गेंद चली गई, फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड करते, फिर से 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में, सिंगल बना और एक जो कि स्कोर में कहीं ना कहीं बड़े शॉट की कोशिश हो रही है मैदान पर लेकिन अब तक सफलता नहीं। पिछले ओवर में भी रोक लगा दी और एक बड़ा शॉट जरूर था लेकिन इस ओवर में अच्छी लाइन पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे, फिर से शायद उतना अच्छा संपर्क नहीं था, एक सिंगल बना, शॉर्ट पाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 49, लॉस ऑफ 2 विकेट। खेल 5वें ओवर का। सुहास पवार एक बार फिर से डॉट गेंद, क्या ओवर यह घट रहा है गेंदबाजी में ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम की ओर से।
जो पिछले ओवर में भी बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी सुहास पवार ने, पिछले मैच में भी शानदार गेंदबाजी की थी, और वही बिल्कुल बात एक बार फिर से मैदान पर दोहराते हुए इस ओवर में भी बहुत ही किफायती एक नतीकुली गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेग कटर, लेग ब्रेक बीच बीच में, जो कि गेंदों को ज्यादा घुमा रहे, टर्न करा रहे हैं। इस बार ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन की गेंद सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, स्लिप पर शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए, जो कि स्कोर बोर्ड पर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 स्टार 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम की सुहास पवार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर विकेट के ऊपर बिल्कुल स्टंप्स को चिपके हुए अपाली कलंगुटकर, और इस बार मिनी हेलीकॉप्टर शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, डीप कवर पर फील्डर मौजूद, सिंगल बना दूसरे की शायद सोच, लेकिन बहुत ही शानदार एक बार फिर से फील्डिंग। तो इसी के साथ भूषण गोली और उन्हीं के साथ अपाली कलंगुटकर, स्कोर 5 ओवर का समाप्त हुआ, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल अभी भी बाकी। थैंक यू डीजे। एक छक्का अब तक बल्लेबाजी में, 12 पर खुद के व्यक्तिगत, भूषण गोली बल्लेबाजी करते हुए, और अपाली कलंगुटकर 3 पर। अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखना होगा आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर अक्षय जोगड़े गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने से दूर वाले छोर से। 5 ओवर समाप्त, 5 ओवर के बाद 51 रन, अंतिम ओवर का खेल, और देखना होगा आखिरी ओवर में क्या होता है। इस बार आगे निकल कर गेंद को खेला, हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद को कैच को पकड़ा, और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर राजेश सोरटे, एक सफलता मिली अक्षय जोगले, अच्छी गेंद, फिर से यॉर्कर लेन के गेंद को ड्राइव किया, इस बार अपने फॉलो थ्रू में तेजी के साथ मिड ऑन पर निकले, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल बना स्कोर में 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी करते हुए 6 स्टार 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम मैदान पर। ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई अंतिम ओवर का खेल जारी। 6 ओवर का मुकाबला, अक्षय जोगड़े सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार फिर से चूके गेंद के बारे में रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर, इन पर खतरा होगा, और इसी के साथ जो कि चौथा विकेट वापस निकलता हुआ मैदान पर।
थैंक यू डीजे। स्कोर टोटल 52, 52 रन 4 विकेट पर। और एक न्यू बैटर मैदान पर, 3 पर अपाली कलंगुटकर, उससे पहले 12 पर भूषण गोली, एकमात्र बल्लेबाज विकास देसाई 22 रन बनाए और ओमकार देसाई 8 रन पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी सुहास पवार के इस मैच में भी, और नए बल्लेबाज मैदान पर। बेहतरीन शॉट, ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर फील्डर 1 रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। सनेश गांवकर नए बल्लेबाज मैदान पर, 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 54 रन पर, 54, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार क्रिकेट, 3-3 खिलाड़ी, ओवरसीज खिलाड़ी जो हर एक टीम में, और पूरे भारत भर के खिलाड़ी इस मैदान पर दिखाई देते हुए, एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी, और एक शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। बढ़िया शॉट, देखना होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लंबी बाउंड्री, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। इस बार एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं था। फिलहाल सिंगल बना स्कोर के खाते में, इस 1 रन के साथ से स्कोर हो चुका है 61 टोटल स्कोर। 6 ओवर का खेल जो पहला समाप्त होता हुआ, टॉस जीता ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला बल्लेबाजी की 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम ने, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर हो चुका है 61 रन। टारगेट 62 रनों का, मैच को जीतने के लिए 22 रन बनाए विकास देसाई ने, 12 रन जो कि बीच में भूषण गोली एक छक्का लगाते हुए, राजेश सोरटे ने एक छक्का लगाया, और वो 10 रन पर सनेश गांवकर। और उन्हीं के साथ अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो सबसे किफायती रहे सुहास पवार, अपने 2 ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा, एक सफलता हासिल की। थोड़ा सा महंगा साबित हुए मुख्तार कादरी, एक चौका छक्का लगा, उससे पहले प्रीतम बारी 2 छक्के और 1 चौका लगा उनकी गेंदबाजी में। अक्षय जोगले की गेंद पर 1 छक्का लगा। सुहास पवार बहुत ही जो कि सफल, और सरफराज नवाज जिनकी गेंदबाजी पर 1 ओवर कोई मेडल 9 रन, कोई सफलता नहीं। तो 62 का टारगेट देख क्या होगा मैदान पर। ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, सामने एसएस जो कि 6 स्टार सुपर किंग क्रिकेट टीम किस तरह से गेंदबाजी करती है। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता हुआ जुड़ जाते एक बार फिर से माइक्रोफोन पर सर हरीश काकोडकर के साथ। Jungle. So meanwhile, I would like to request
Rohit Indians and Amazing Super Giants to kindly come for toss as you are going to play the following match. So the target is of 62 runs. Let's see whether Oxford Titans have enough of firepower in their quota, because we have seen them scoring the highest total of this tournament till this moment, as they have scored 93 runs in the first league match that they have played against Royal Challengers Fatorda. So let's see what is going to happen now, as the target is of 62 runs. And this unit is a very well gelled unit, I must say. As all the players, they are taking the responsibilities, they are gelling well under the leadership of Vikas Desai, and he is having a senior partner with him, discussing how to carry on with the innings. So let's see how this match is going to progress. Meanwhile, here we go in this run chase. First over will be bowled by none other than another man of the match prospect in the previous match. Requesting the captain of Amazing Super Giants to kindly come for toss. Rajesh Sorte with the first over, that is a compulsory power play over, where only two fielders will be allowed to be outside the 30-yard circle. Here we go with the run chase. Requesting spectators not to move in front of the side screen when the match is on. First delivery onto the legs. There was an appeal, but denied by the umpire. Meanwhile, a single to start the proceedings in form of a leg bye. It's Sarfaraz Nawaz who was on the striking end. Now will be at the non-striker's end. Shahid Sheikh, the guy from Thane, Mumbai, is on the striking end. Let's see whether he can show some magic. Oh my dear, what a lovely hit. A chance of a catch. Fielder running. Whether he can get it, no, my dear. He has not spotted the ball. And this is where you should be anticipating where the ball is going to travel. What could have been a catch has been missed. Courtesy keeping his eyes off the ball. Meanwhile, requesting the captain of Amazing Super Giants, we are waiting for you for the toss. Again, played watchfully. Ball was right into the block hole area. So meanwhile, there was another chance created, but ball going away from the fielder. So little lucky for the batting team. Meanwhile, requesting people not to walk in front of the side screen as the match is on, and that is creating little problem for the batsman to sight the ball. So meanwhile, Shahid Sheikh on the striking end. Another good delivery, hint of leg cutter, but way down the leg, some stretch of arms by umpire. Asking Viraj Tendulkar to add one more run in the total. Score moves to 6.
Oh my God, what a connection. Powerful striking from Shai Sheikh. Makes the ball to travel the distance. And this is even better looking shot. Sixer. Thank you, DJ. There is a saying that catches wins the matches. And catch has been dropped. So whether it is going to be costly for the fielding side, the time will tell us. Meanwhile, the match ball has been found. That was it out of the boundary rope. So here we are going to continue. Score moves to 12. We are into the power play over. Rajesh Solte, the bowler. 12 on the card, courtesy of big six from Shai Sheikh. Another slog sweep in attempt. Equally well fielded down the boundary rope at the cow corner area from the tall guy. Stops the ball from crossing the fence, and a moderate over, I must say, as far as tennis ball cricket is concerned. After completion of first over, score is 13 without any loss of wicket. So meanwhile, the update from Viraj Tendulkar is Shai Sheikh was man of the match at man of the series at the Sangam Premier League in 2018. Let's see whether he can continue with the same form. That is a big question in front of the spectators and the supporters of Oxford Titans. Meanwhile, the signal from the main umpire is that this is going to be the batting power play, and the news from the center. Rohit Indians have won the toss, and they have immediately opted to bat first. So, amazing super giants, be prepared as you are going to field first. Meanwhile, here's the second over, and it is going to be batting power play over, where only 3 fielders can be posted outside the 30-yard circle. So let's see which are going to be the 3 fielders that the batsman will have a look. And after doing the much needed settlement, Bhushan Gori is the bowler, will be bowling the second over and the batting power play over. But not to forget, 25 minutes on the clock. Change in pace, working, there's a appeal, and the big fish has been caught in the net by Bhushan Goli. Strikes on the very first delivery in the batting power play over. So after departure of big fish Shai Sheikh, Navdeep has been promoted by Captain Mukhtiar Qadri, and he is also a good prospect, a good character as far as tennis ball cricket is concerned. A good batsman can bring surprises for the bowler. Such is his caliber, that's why he is come at the number 3 position. Let's see what is going to come from his bat. Meanwhile, oh my dear, the chance of a catch, but fielder is not placed as a fielder has been put in the deep covers. If the fielder had to be inside the circle, then definitely would have been a second wicket on the very second delivery. Meanwhile, Bhushan Gori firing in the second over. The bullets have been fired as a big fish is into the trap, back to the pavilion. So far, a decent over.
And with that single, Sarfraz Nawaz Alai Chappu is on the striking end. Another good youngster. He is also a surprise element, can surprise at any moment. Meanwhile, a good contest is happening out in the middle. Another wonderful strike, fielder under the ball as the ball goes safely into the hands of the long on fielder. Second wicket taken by Bhushan Gori as the Sarfraz Nawaz back to the pavilion. Thank you, DJ. As a brother departs, elder brother rolls his sleeves, takes a willow in his hand. Shakil, the new man in at number 4 position, will be at the striker's end as per the new rules that have been implemented recently at the international level. So, Shakil onto the striking end, jersey number 18 onto his back. That's a nickname for him. Proper name, Abdul Salam, all the way from Maramgaon Taluka. Right now playing for Oxford Titans, and he is the highest bidded player in the auction. Meanwhile, a switch hit attempted. Rather than, I would call it reverse, because there wasn't switch in the grip. A good throw, equally well fielded, but slightly away from the keeper. That allows both the batsmen to take a couple of runs. In fact, that has the liberty of taking the third run. And that 3 runs takes the total furthermore to 17. So now Navdeep on the striking end. Powerhouse from a Parliament area. Whether he can be the rise on the occasion, or the goalie bar continues from Bhushan Goli. Meanwhile, there's a lovely connection. Fielder under the ball, brother being a spectator, and catch has been taken one-handedly. So 100 rupees has been costed. So you can come, my dear, near the commentary box and receive your 100 rupees cash prize. The guy in the rather tomato colored t-shirt taken single-handed catch outside the boundary rope and made him richer by 100 rupees. So meanwhile, a lovely strike from Navdeep takes the total to 23. Target is of 62 runs, match is on. Change in pace, but way down the leg stump. And that is the reason why the stretch of arms by umpire Aslam Sheikh. 1 more run into the total takes the total to 24. So now it's time to honor the spectator who has taken one-handed scintillating catch outside the boundary rope, and it's none other than Mohsin, who has kept the prize, is going to give meanwhile chance of a catch right at the short fine leg circle. Omkar Desai, the fielder, takes the wicket, and meanwhile 100 rupees has been taken from the Mohsin for that catch. Thank you, DJ.
So this is wonderful gesture by the organizers. Even Mohsin is entertaining the crowd, keeping them on their feet. As every catch, you are going to win 100 rupees cash prize. But the condition is you have to catch with one hand, either left or right. You can't use both hands. That is for spectator, not for the players. So meanwhile, a catch has been taken on the field by none other than Omkar Desai, and that has costed third wicket for Oxford Titans. And that even concludes over number 2. We are into the third over. Score is 24 for the loss of 3 wickets. And new man in is Pritham Bari. Whether Pritham can be Bari on the fielding side, that time will tell us. Meanwhile, he will be at the non-striker's end. Abdul Salam alias Shakil is on the striking end. And he is also capable of hitting any bowler quite comfortably. So here we go, Rajesh Solte to continue. Pacey delivery, sidearm action, reminded us of Lasith Malinga's similar sort of action. Makes the ball travel quickly to the keeper. Starts with a dot ball. Another good delivery, hint of leg cutter onto the body of Abdul Salam. Plays watchfully, takes the blow, guides the ball towards the point area to take a single. Ball kissing the edge of the bat, traveling towards the point. Score moves to 25. We are into the third over. Target is of 62 runs. And here we can see the captain of the side, Vikas Desai, setting the field. Perfect place to be behind the stump from where he can get all the angles covered properly. So here we go, finally, after doing the much needed settlement. Rajesh Sote, right arm over the stumps. Equally well played along the carpet, cover drive in act. Meanwhile, the fielder is patrolling the fence. Chance of a run out, good throw, but the batsmen are quick enough. Quick on their feet to take a couple of runs to take the total to 27. Another good delivery change in angle. Bowler is not happy, but a wide is the signal from the umpire. Equally well stopped by Vikas Desai, otherwise definitely there would have been more runs in form of extra. So far 2 runs takes the total to 29. Another pacey delivery, chance of a run out, but the reaction from the non-striker was within flash of seconds, and they complete a single quite comfortably. That takes the total to 30. More 32 runs required from here on. Wonderful strike, equally well fielded. Stops the ball, but won't be able to stop the runs. Slight fumble that allowed both the batsmen to complete couple of runs quite comfortably. With that, score moves to 32. And if any team wants a helmet for their keeper, it is available in the commentary box. So you can come and take the helmet. Any keeper who wants to keep the stumps little close. Good bowling. Lovely piece of delivery to conclude over number 3 by Rajesh Solte. After completion of 3, score is 32 for the loss of 3 wickets. And now it's time for me to have a break, inviting Harish Kakotkar to kindly carry on with the proceedings.
32 runs on the board after 3 overs. 30 runs required in 3. Good encounter between bat and the ball because both are evenly balanced sides. One game won each by both the sides, Oxford Titans as well as 6-6 Super Kings. So is it going to be the Titans or is it going to be the Super Kings that is going to be unbeaten after completion of their 2 matches in the second round? Oh, that's a good ball. The ball was bowled in such an area where it was difficult for the batsman to play a shot, also on the offside and also on the leg side. The dot ball to start here for Apali Kalangutkar. Oh, that's a good shot. Found a gap and got 4. Wonderful cut shot. A lot of width given here and very nicely played in the point region. Score moves on to 36. Highest bidded player in the auction for 19,500 is playing and he has got lots of pressure on his shoulders. You can understand, but I guess with the experience that they have back in the dressing room, like Mutiyar Qadri, he must have told, don't worry about that. You just play your natural game. You have the ability of winning the match for our side single-handedly. Go and play your natural instincts. This is a big one. Is it going out of the ground? 2 fielders going after it and drops the catch. No communication whatsoever between the two. It was in the air for quite some time, for quite many seconds. Ample of time, ample of opportunity for both of them to come. And there was a total miscommunication. The mishap happened. Wicket is still on the crease. .38 the score moves on to. 6 runs have come of the first 3 balls. This is in the air. This might be a catch. And catch taken. We have to wait for the umpire's signal. Whether it's off the bat or whether it's off the arm. So umpire denying that. Umpire said it's definitely not off the bat. If it was off the bat, then it would have flied over the third man or short fine. So it's going to the third umpire. We need to have conclusive evidence to look at this. The third umpire will come into effect. The third umpire is having a close look at the decision. Both are equally watching the batsman and also the bowler. Might be a crucial juncture of the match. They know that this wicket is crucial. And if at all they get rid, they also get a dot ball. Is not out. So it's off the hand.
So that will get a single for in terms of leg by. Score moves on to 39. And it's almost 5:30. And I guess arrangements are done for tea and snacks. You can pay and have a sip of tea and also some sandwiches. Good arrangement here on the ground by the organizers. GCC Fatorda. What a match. What a tournament. Once again, the back focus on this match. Apali will be bowling his 5th ball. Pritam Bari on strike. This was very nicely bowled just outside, good length, hitting the nice areas. Maybe Abdul Salam is telling Pritam Bari it could have been a wide. You should have left it all alone. But now there is no point of talking. He got a connection, dot ball. Oh! Oh my God! That was a full toss. He could have hit it for 6. He missed it. And the ball also missed the wicket. Wide signal nevertheless. With this extra, score moves on to 40. He goes for the big one. He goes for the big one. And he gets a big one. Comes down the track and hits it straight down over long on region for a magnificent 6. That will release a lot of pressure on the batting side. After completion of 4, the score is 46 for the loss of 3. So please get along. Match begin karat. 16 runs required in 2 overs. In comes Pranay. Will be bowling to Abdul Salam and Pritam Bari, who have played decently so far, very nicely in a partnership. Got them in close towards the target. 16 runs in 2 overs is not that difficult with the ball flying across. So here comes Pranay. This once again is shuffling across very nicely. Followed the batsman on towards the offside. That's where he did not get that much of room and power to play that shot. Good bowling here from Pranay, giving a single. They have to be consistent by bowling dot balls. They have to be consistent. If at all there is a chance, it should be taken with both hands. This is in the air where the ball has gone. It has gone straight in the hands of the mid-wicket region fielder, and Pritam Bari has to depart. Finally, the ploy of getting Pranay Gavkar in bowling has worked.
Meanwhile, Rohit Indians captains won the toss, deciding to bat first against Amazing Super Giants. Rohit Indians lost their first encounter. Amazing won their first one. Can Pranay bowl a good over? Good over in terms of less than 6 runs or maybe 7 runs. If at all anything more comes than 8 runs per over, which is the target required. Lots and lots of crowd is definitely going to come once they come from the work, and the lights also will come into effect. So left-hander has been sent here. Suhas Pawar trying to negotiate that leg spin. So this leg spinner of Pranay will be off spinners towards the left-handed Suhas Pawar. And a good ploy here from Oxford Titans, very smart. He might be getting that ball to swing with the spin. Oh, that's a lovely ball. Was it an off spinner? That was a slow off spinner, looks like. So very good bowler seems to be Pranay here. Just gave away 1 run, take a wicket of the second ball. Now a dot ball. What an over. What an over. This is getting 6*6 Super Kings back in the match. So far just a single conceded. Pressure also on Suhas Pawar now after bowling those 2 dot balls against his name. Lots of noise, lots of support here for 6*6 Super Kings on this ground. If there is a dot ball, they make huge noise. This time, aptly, rightly played for just a single. Deft touch, always intended to take a single. Where this last ball is going to head. So far, 5 balls have gone in towards 6*6 Super Kings. Just 2 runs considered and a wicket taken on top of that. Here is Abdul Salam, Shakil. So rotating the fielders, Vikas Desai is the captain of the side, and from behind the wicket, just like how MS Dhoni does, this is Super Kings, the Yellows, the MSDs fans. He goes for the big one. That was a shot. Shuffle across. He getting a 6. Looks to be a 6, but we have to wait for the umpire's signal. But what a shot that was. Shuffling across. Bowling that leg spinner, landed a little bit shorter side, and a lovely pull shot down the fine leg region. It might be a 6, it might be a boundary. Let's wait for the signal. So let's see the third umpire checking where exactly it has landed. So we are waiting for the signal. They wants to be absolutely sure because this is a close match, whether it's a boundary or a 6. Or whatever it is, finally the over has gone in towards the batting side of the last ball. But you cannot take anything away from the efforts of Pranay. It's a 6. So 8 runs have come, 8 runs required of the last ball, last over in fact. After completion of 5, the score is 54. 62 is the target, 8 runs required of 6 balls. Who is going to be the bowler? These matches are going right down the wire. Entertainment for the crowd, entertainment for everyone out watching and hearing us in the commentary box. And cricket nowadays is all about entertainment, entertainment, and entertainment. And it will be more entertainment, more fun, more excitement, more thrill when the lights come into effect fully. So far,
The sunlight is still pretty good on this ground. Oh, what a shot on the legs, and first ball itself decides where the ball is heading. Magnificent shot in the square leg region by the left-hander Suhas Pawar. Sohail comes and is welcome with a 6. Now the body language is quite clear of the yellow jerseys. They know that the match is very much gone with that 6 of the very first ball, and Suhas is still batting against Sohail. Where the ball has headed. Chance of a run out. He is targeting and he misses. Missed it easily. He had ample of time to target the stumps at the non-striker's end, but he bowls a dot ball. So second ball is a dot ball. Still 2 runs required of 4 balls. This time he played nicely in the mid-wicket region. They want to go for the second. They want to finish it off. And pressure on the fielder. And pressure he succumbed to. And that's it. Just 2 runs were required and they won it. I don't know. They are excited to run for the third one. That's it. Oxford Titans have won this match in the end. Shakil played a handy knock along with Suhas Pawar. आणि कोणी जर टीम जिंकले ताच्या स्पेक्टेटर्सांक भितर येवपाक मेळपाना. स्पेक्टेटर्स मातशे भायर रावात. जाय तितलो एन्जॉयमेंट करात, जाय तितली मजा करात, पूण ग्राउंडा भायर. So now 2 out of 2 wins here for Oxford Titans, looking very strong. 6-star losing their first encounter. Next match is going to be Rohit Indians versus Amazing Super Giants, and we'll get to know who is going to be the man of the match. And it's going to be none other than Suhas Pawar. Wonderful bowling from him and great batting in the end, holding the fort, getting that 6, crucial 6, and quite decent 2 overs. So now orange cap has also changed. Orange cap has also changed hands and changed heads, in fact. Shahid Sheikh, you are requested to give orange, take your orange cap, and man of the match goes to Suhas Pawar. Suhas Pawar, आपको दरखास्त है कि यहाँ पे आ जाए, आपका ऑरेंज कैप यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स आपके लिए वेट इंतजार कर रहे हैं, उनसे अपना ऑरेंज कैप ले लीजिए. Suhas Pawar is the man of the match and Shahid Sheikh is the orange cap holder. Both of them are requested to please come and take your prizes.
All sailing past. Sixer takes the total to 19. With that big six, score moves to 19. Another good delivery, equally well played. Chance of a run out. Naresh. Slight fumble allows Sherwadu to reach comfortably inside the crease. Otherwise, that would have been a little risky as ball was hit straight to the covers. Naresh Asoldigar, big guy, fielding, unable to catch the ball properly. Otherwise, result would have been something else. Meanwhile, no harm done. A single takes the total to 20. We are into the second over. Rohit Indians at the moment going at the run rate of 10.40 runs per over. And as the right-handed batsman onto the striking end, we can see shuffle of whether he can join Shero. Shuffles lovely delivery to disable Allah from connecting the ball, resulting in a dot ball. And this is the capacity and capability of Rohan Salgaonkar. Jersey number 5 on his back, delivering at the occasion. Meanwhile, a pacey delivery. The ball has shooted after landing on the deck, much above than the expectation of Lalla, resulting in a dot ball. So after completion of 2 overs, score is 20 for the loss of 1 wicket. First shot slightly lower full toss, equally well played towards the point, where the tallest guy gathers the ball quite comfortably. And a single that brings Lalla onto the striking end. With that single, score moves to 21. Third over in progress. Score is 21. Avinash Gavas bowling his second over, and his jersey number is 1, and that is the total on the scoreboard. And that too, loss of 1 wicket. So here we go. Finally, a right arm over the stumps. There's a heave. Ball has been hit towards the cow corner area. Tall guy, Darshan Bandekar in act, gathers the ball quite comfortably, throws it back to the keeper. Another single to take the total to 22. So more 3 overs to be bowled after this over. This is the 5th match of the day. More 5 matches to be played. So many things are to be taken care. Another good hit. That is his favorite area. Fielder been patrolling the fence. Good fielding at the boundary rope. Stops the ball from crossing the fence. Lovely effort by none other than Vicky. With this couple of runs, score moves to 24. And a good bowling continues from W. Another lovely pitch delivery, equally well played. Batsmen are aiming for the second. Good collection, but won't be able to stop the second run. Another couple of runs takes the total to 26. So good strategy being applied by the batsmen of Rohit Indians. If the boundaries are not coming, then they are putting the pressure on the fielders, snatching
the singles, converting the singles into the doubles. Another good looking strike straight towards the long off area. For another single. And that single now takes the total to 27. Oh my dear, what a connection right from the middle of the bat. Vicky was the fielder, has made a definite effort but could not stop the ball from sailing above his head. Sixer from bat of Ram Pulshottam Lalla Yadav, and the total moves to, oh my god, 33. As the total moves to 33 after the completion of 3, would like to invite Ashok Naik in the commentary box. Let's see what is going to happen on the score of 33. The time will tell us. Welcome, Ashok Naik. थैंक यू सागर। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर शेर बहादुर यादव और उन्हीं के साथ राम उर्फ लल्ला यादव। गेंदबाजी में परिवर्तन, नरेश असोंडेकर सबसे अनुभवी खिलाड़ी, वो गेंदबाजी पर थोड़ी सी फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए दिखाई देते हुए सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शेर बहादुर यादव उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए 33 रन 1 विकेट पर 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद फुल टॉस गेंद, बड़ा शॉट ऑन साइड पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद पर बल्ले के बीचों बीच शेर बहादुर यादव के बल्ले से दूसरा बड़ा शॉट और स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 39 रन पर। एकमात्र विकेट एजाज कुरैशी चौका लगाकर 6 पर, लेकिन उसके बाद ये दो बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मैदान पर करते हुए, खास करके शेर बहादुर यादव, राम उर्फ लल्ला यादव, एक चौका एक छक्का। छोटे गेंद इस बार हुक्का गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद निकली, डीप फाइन लेग सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 43 रन पर 43। मुकाबला मैदान पर अमेजिंग सुपर जायंट्स और रोहित इंडियंस, ये दो टीम आमने सामने। इस बार शफल हुए थे, खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर 43 रन 1 विकेट पर। चौथा ओवर मैच का चलता हुआ, नरेश असोंडेकर राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार उछाल मिली गेंद पर, गुडनेस स्पॉट पर, फिर से थोड़ा सा अक्रॉस होकर खेलना चाहते थे, मिड विकेट स्क्वायर लेग पर सफल नहीं रहे। लगातार 2 डॉट गेंदे, 2 गेंदों पर शुरू के एक छक्का लगा, पहली गेंद पर चौका लगा और उसके बाद पर 2 डॉट गेंदे। नरेश असोंडेकर दाहिने हाथ से राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शेर बहादुर यादव। बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर को बीट करते हुए गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में चौथे ओवर में नरेश असुंडेकर 2 चौके 1 छक्का। फुल टॉस गेंद इस बार स्वीप किया ऑन साइड पर, फिर से मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे, एक शानदार थ्रो सीधा हाथों में, लेकिन 2 रन तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित। 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में, इन 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा टोटल 49 49 रन। और एक ओवर यानी 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और नरेश असुंडेकर थोड़े से इस ओवर में महंगा साबित हुए। बड़े शॉट लगाए शेर बहादुर यादव ने इस ओवर में, 2 चौके 1 छक्का लगा और खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद 49 49 रन 1 विकेट पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद 49 49 रन 1 विकेट पर। राम यादव 1 चौका 1 छक्का खुद के व्यक्तिगत 12 रन पर और 2 चौके 2 छक्के लगाते हुए शेर बहादुर यादव। और बॉलिंग में परिवर्तन, दर्शन बांदेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से और इस बार तेज गेंद ब्लॉक होल में देखना होगा। गेंद चली गई कवर पॉइंट पर, एक सिंगल बना, सिंगल के साथ लेग बाइज का इशारा और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम के, रोहित इंडियंस क्रिकेट टीम के 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर यह जोड़ी मैदान पर, एक और से राम यादव उर्फ लल्ला यादव, शेर बहादुर और उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर दर्शन बांदेकर अगली गेंद लेकर एक 10-12 कदमों का रन अप, राइट आर्म राउंड विकेट। कमेंट्री बॉक्स की ओर से आगे निकले बड़े शॉट के लिए यॉर्कर लेन की गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर तेज गेंद और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। थोड़ा सा महंगा साबित रहा था पिछला ओवर, 16 रन बने नरेश असुंडेकर और वहीं पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमबैक करना पड़ेगा जो अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को। स्लोवर बॉल इस बार, ओ बहुत बढ़िया फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर पर हवा में गोता लगाया और कैच को तब्दील करते हुए गणेश केळुस्कर, दूसरी सफलता इसी के साथ मिलती हुई। थैंक यू डीजे। 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक शानदार पारी, 29 रन बनाए शेर बहादुर यादव ने, 2 चौके 2 छक्के लगाए। और आज की फील्डिंग की अगर चर्चा की जाए तो गणेश केळुस्कर का बहुत ही शानदार कैच और उसके साथ बंटी पटेल के एक डायरेक्ट हिट जो मैदान पर देखने को मिली थी। दर्शन बांदेकर एक सफलता हासिल करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर और न्यू बैटर मैदान पर बंटी पटेल, मैन फ्रॉम गुजरात, बड़े दूर से, बहुत दूर से इस जो कि गोवा की सरजमीन पर मरगांव में, और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। तेज गेंद मिली, हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ओ गेंद छूटी हाथों से। रोहन सालगांवकर कोशिश बढ़िया थी, बहुत ही शानदार शॉट था, मिनी हेलीकॉप्टर शॉट था बंटी पटेल का। स्लॉट में बिल्कुल ब्लॉक होल में थोड़ी सी गेंद मिली थी लेकिन बंटी पटेल ने बिल्कुल अच्छा टाइम किया था। एक हाफ चांसेस जिसे कहते हैं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर रोहन सालगांवकर
लेकिन गेंद हाथों से छूटी और 6 रन के लिए गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 56। और इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, भीतरी किनारा लगा, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर। संगम प्रीमियर लीग में कौन भूलेगा बंटी पटेल की एक शानदार इनिंग, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। वही इस मैदान पर आते आते बड़े शॉट के साथ जो दर्शन बांदेकर जैसी तेज गेंदबाजी पर, और उन्हीं के साथ राम उर्फ लल्ला यादव स्ट्राइक एंड पर 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। 57। शपल हुए खेला इस बार ऑन साइड पर, फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, शानदार फील्डिंग। थोड़ी सी अगल बगल में गेंद निकलती तो 4 रन बन सकते थे। एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ 58 पर जो कि स्कोर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 58 लॉस ऑफ 2 विकेट। खेल 5वें ओवर का समाप्त हुआ। थैंक यू डीजे। राम यादव 13 पर खुद के व्यक्तिगत, 7 रन पर एक छक्के के साथ बंटी पटेल बल्लेबाजी में, और आखिरी ओवर का खेल बाकी। वरद दाभोलकर अंतिम ओवर का खेल। रोहित इंडियंस क्रिकेट टीम और अमेजिंग सुपर जायंट्स, 2 टीम आमने सामने। और देखना होगा आखिरी ओवर में किस तरह से खेल होता है मैदान पर। वरद दाभोलकर सामने, राम उर्फ लल्ला यादव, उन्हीं के साथ बंटी पटेल आते आते बड़े शॉट के साथ आगाज कर चुके हैं मैदान पर। 1-2 शॉट अगर लगाने में सफल रहे, बड़े लंबे शॉट, तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, मुकाबला अच्छा हो जाएगा मैदान पर। अल्टे पल्टे सफल रहे इस बार लल्ला यादव। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन पर। 62 लॉस ऑफ 2 विकेट। 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आगे निकले डाउन द ग्राउंड, बढ़िया शॉट, गैप में गेंद, कव कॉर्नर पर गेंद, बैक टू बैक राम उर्फ लल्ला यादव के बल्ले से दूसरा शानदार शॉट। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़े अच्छे शॉट आखिरी ओवर में, और कहीं ना कहीं 2-3 शॉट की हम चर्चा कर रहे थे, वही 2 शॉट राम यादव और लल्ला यादव के बल्लेबाजी में स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए। ओ शॉर्ट पिच गेंद, सफल नहीं हुए, रन लेना चाहते थे बंटी पटेल, लगभग आधे पिच पर आ चुके थे, लेकिन लल्ला यादव थोड़े से सफल हुए थे, बाद में ऑफ साइड पर ज्यादा निकले थे, रन के लिए तैयार नहीं थे। स्ट्राइक के लिए बिल्कुल जो कि सोच थी बंटी पटेल की, एक विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। (66) 66 रन, अच्छी गेंद, स्लोवर 1 रन के लिए निकले। देखना होगा, करीबी मामला बन सकता है मैदान पर। अंपायर की उंगली ऊपर, बंटी पटेल खतरे में, रनआउट के साथ वापस निकलते हुए तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर।
थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज न्यू बैटर मैदान पर स्वप्नेश वेलिप। बंटी पटेल आउट होकर वापस 7 पर खुद के व्यक्तिगत एक छक्का लगाया रनआउट के साथ। आखिरकार 2 सफलता मिली और स्कोर रुका हुआ 66 टोटल स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी शेर बहादुर यादव 29 रन बनाए और टारगेट मैच को जीतने के लिए 67 रनों का एक अच्छी गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो शुरुआत बढ़िया रही थी अविनाश गावस की। 2 चौके लगे। रोहन सालगावकर की गेंदबाजी पर एक छक्का, एक सफलता मिली। अविनाश गावस का दूसरा ओवर एक छक्का लगा। नरेश असोंडेकर थोड़े से महंगे साबित हुए, 16 रन बने और दर्शन बांदेकर जिनको एक छक्का लगा, एक सफलता मिली और आखिर में 2 विकेट भरत दाभोलकर और 2 चौके। तो टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ जो कि 6 ओवर की समाप्ति हुई। दूसरी इनिंग की जब तक शुरुआत है, टारगेट रखा है मैदान पर जो कि अमेजिंग सुपर डांस क्रिकेट टीम को 67 का टारगेट। 67 रनों का क्या होता है, किस तरह से मुकाबला इन दोनों के बीच में, फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में जो कि जुड़ जाते आइए माइक्रोफोन पर सर हरीश काकोडकर के साथ। आता फ्लॅटांनी रावता पोतयो येता देंवन दारुप्यां गिराक केला आको दीस भोंवन आदल्यांचो मागी पांव आमी भाजताले उजो घालून लाकडाचो आतां लायटीचेर पांव भाजता पांव न्हय रे तो हावपाचो मोदें लायट केल्यार हा पांव
for the umpires. Requesting the organizers to please come out of the field. So now requesting the players of Rohit Indians to take the field immediately. RCF Royal Challengers Fatorda and the 6-star 6 Super Kings. Captain, please come for the toss. Captains, please come for the toss. And the Rohit Indians players, please take the field fast. Target is 67 runs. So we are going to see the run chase. Amazing. Super Giants have won their first encounter. This is the second match. Requesting the fielders, Rohit Indians, please take the field fast. Umpires, mache begin karat. There will be fine. There will be fire and penalty for the fielding side. Please take note. Rules are rules, regulations are must, and everyone has to abide by rules and regulations of this tournament. Please don't waste time. Please don't waste time. Organizers are very strict. Message has been given by the umpires as well. Please take your field fast without wasting any time. This goes to all the teams, not only Rohit Indians, but all the teams. "25 minutes is the innings time for the teams. So we have to finish that in that time, taking too long. This is just the 5th match. We have to play 5 more matches. Six-star 6 Super Kings captain and Royal Challengers Fatorda captain. Matsa Tosayo. 6-star 6 Super Kings Vikas Desai and Royal Challengers Fatorda. So now see the run chase of 67 runs. Arjun Bhosle and Avinav Gauss at the top as an opening batsman, and with the ball is Jignesh Patel. What a strike! What a strike, Rajwal top! 6 runs, magnificent hitting. A great rollicking start given in the very first ball by Arjun Bhosle. Arjun Bhosle hails from Hubli, Karnataka. Magnificent player. So lots of players from different states are playing in this big tournament. Vinesh, the captain of RCF, has arrived over here, requesting captain of 6-star 6 Super Kings Vikas Desai to please come for the toss. He goes for once again. That's an open space. He gets a boundary. Jignesh Patel is put under tremendous pressure. That's 6 and now a boundary. 10 runs of the first 2 balls.
So asking for helmet, requesting organizers to please give the helmet immediately. Sandeep Kurdikar, Bablu is giving the helmet to Lalla. So immediately 1-6 in mid-wicket region, one shuffle and the offside, and the short played in the backward square leg region has prompted the change. So keeper is standing in front with his helmet on. Captain of 6-star-6 Super Kings, Vikas Desai, you are requested to please come fast for the toss. That's an outside edge. Can they get a single? Was it out? Oh my God. What a sad end to an innings that was started beautifully here by Arjun Bhosle. I first thought that's an outside edge. He might be going for the single by, I guess, the back leg hit the off stump and he's hit wicket. This is the problem with staying too far back in the wicket. Once you go on the back foot and if you are already back, then there is a scare of your back leg hitting and you might be hit wicket. That's exactly what happened to Arjun Bhosle. 10 runs on the board and wicket as well. They'll be very happy with that. They were under tremendous pressure. Finally, actually small changes that keeper came from way far towards close to the wickets behind the stumps, and that might have changed some tactical move in the minds of Arjun Bhosle. So small things here and there are working in towards the bowling side. 6-star-6 Super King captain Vikas Desai won the toss, deciding to field first. In comes Jignesh. Once again, he's ready, and a new batsman coming is Mateen Khan. Slightly injured, but he can still bat well. Goes for the big one. There was no shuffle. He just went straight for that mid-wicket. Hoik, the ball just went away as a leg spinner. Quick, fast. Going for the switch hit, not finding the gap, but can get a single. Mateen was slow. The throw also came quickly from Sher Bahadur Yadav. Single has been taken. Score moves on to 11. Asking run rate exactly around 11 runs per over, and they have got 11 runs in the first over itself. Right in the block hole. Wonderful bowling. W can get at the most a single. Finally, the 6 and a boundary of the first two balls, but a good comeback nevertheless done by Jignesh Patel in his first over after completion of 1. The score is 12 for the loss of 1. And good news for all the viewers. LED screen has come into effect. So wonderful here. All the facilities for the spectators and the viewers. So wonderful that LED screens. Batting power play has been taken. After a lot of consultation, they have decided to take the batting power play. W and Mateen. And all the sponsors here. Abhi Ganesh, Investment Services Private Limited, one of the sponsors. Abhijit Sawan Mutual Fund Distributor, Indians Capital, one of the teams. And also the sponsors, KKG, Ahmed Khan.
big tournament, one of the biggest tournament in Goa, and certainly excitement and thrill will be there among the spectators. Floodlight tournaments are not organized nowadays much in tennis ball cricket, especially in South Goa. And South Goa Premier League certainly you can say, you can consider as one of the biggest, with the players from all across the different states have come thronged onto this ground to showcase their talent. One will definitely be a winner, but for that they have to fight in the league matches. 5 matches, 5 teams, 4 matches each, and whoever scores maximum number of points, those 2 teams will enter into the semi-finals. If they are equal, then it will be decided on net run rate. This time he went for the switch hit. It was an off cutter from Bunty Patel. Well, he is a smart chap. He is the one big name, Bunty Patel, in this Rohit Indian side. Many man of the match, many man of the series awardee. Big name, big player in tennis ball cricket all across India. And it's a treat to watch him bowl, and also a bet. He was run out in the innings previously. So once again, this might be catch, and catch taken. Gets rid of W as well. Bunty Patel strikes. Wicket once again. Second wicket going down at the score of 12. DJ Ashi's Mix. So wicket of the second ball, with a new batsman coming into the crease. Vikram Naik, that is Vicky. They have still kept their big man on hold, maybe a little bit later. They kept Darshan Bandek a little bit later to finish off just like I finished them in the first match. It's not going to be easy. Lights are coming into full effect, and the sunlight has gone down, and it will be artificial lights now coming into full effect. Bunty is going to continue. This is India. This might be catch taken. Oh, one-handed try. One-handed try. Just stays in the hand or pops out. This ground is such a wonderful ground. Good green outfield. Even if it have dived over there, then it could have taken that catch with both hands. But maybe he just tried with one hand. Ijaz Qureshi, wonderful fielder. These are difficult catches. They either stuck in your hand or they pop out. Luck going in towards Vicky. So far, a great over here from Bunty Patel. Just given one and taken one wicket. Oh, that's a wide ball signal. It came back inside from way outside off stump. That's the reason why signal. So wide is signaled by umpire.
अंपायर मातशें वॉकी घे. So the discussion is umpire has removed it as wide. He wants to check whether the ball has pitched outside the crease line and has come back inside. So whether it is a no ball or a wide. And third umpire Aslam Sheikhi is going to check. Wide ball. It's definitely not a no ball, it's a wide. So once again requesting players of Rohit Indians to please take their field immediately and let the match continue. So wide signaled here, score moves on to 14. Once again, he is going to bowl to Mateen. This time, wonderful ball, checked back in quickly, sharply, and no room given whatsoever. He just swayed it down towards the third man regions, just glided for a single. Singles means the pressure will immediately mount on the batting side as asking run rate will creep on increasing. And he bowls very well with those off-cutters and quicker ones. It's very deceptive. You don't know the last moment. He just changes the grip and bowls those off-cutters or the quicker ones. Very good against the left-hander batsman as well. Oh, that's a lovely ball. Wonderful quick off cutters here from the bowler. He was in no position, Vicky, to play that shot. The ball just landed outside, went even in fact away, and he was swinging down in the wicket line. Oh, once again, beaten, all ends up. This is stunning bowling here from Bunty Patel. Well, from where you are standing, maybe in the square on the offside or square on the leg side, it is very difficult to judge his talent. But if you are staying straight down the ground, you will understand what he's doing. He's just playing with the batting and bowling those off cutters and leg cutters for right-hander and left-handed batsmen whenever required. After completion of 2 overs, the score is 15 for the loss of 2. 67 is the target in 6 overs. Now let the match continue. Jignesh Patel is going to continue, who has taken wicket of Arjun Bhosle, although it was a hit wicket. So he's going to continue with his left arm medium pace bowling. Mateen is going to face him. Once again, good bowling just outside off stump. A chance of a run out, but a good piece of running between the wickets. Quick between Mateen and Vicky. Bablu fielding the ball. He's down at the long off region. And now a field change has been prompted. Got much quicker fielder than Bablu, and he has been taken inside.
So again, swinging, just swinging, and in no position actually whatsoever. Dot balls definitely is going to pile pressure. These are wonderful bowlers, Bunty Patel, Jignesh Patel. Not easy to go after them. Very nicely hit. Can he get a boundary? The ball is racing towards the fence. Finally, the pressure release. This is much better shot. Straight down the ground above the bowler's head. Instead of playing cross, he was smart enough to play straight. So finally, Mateen getting the boundary that he was waiting for quite some time. With that boundary, score moves on to 21. Going for the scoop shot. Can he get a boundary with the pace of Jignesh Patel? The fielder is going quickly. Chance of a run out as well. Quick throw. But can they get one more of that overthrow? Finally decides against as Vicky had crossed over for a longer distance. The 2 runs taken. Score moves on to 23. Third over in progress. 67 is the target. They need a boundary and sixes. Asking run rate was 11 runs per over at the start. This is much better. He shuffled across on the offside. Bowled a perfect length, and Mateen went once again, maybe in the mid-wicket wide long on region. Good comeback. So far, 8 runs have come off these 5 balls. Score is still on 23. Going for the switch hit. And ball has not gone anywhere. So another single to finish over number 3. Leg by signal by umpire. After completion of 3, the score is 24 for the loss of 2. And 3 overs left in this match, and some hitting is required. Some big hitting is required for amazing Super Giants to win this match. Otherwise, things can have a precarious turn towards the Rohit Indian side. Interesting situation, interesting match. Let's hope that someone comes and fires in for amazing Super Giants. And I'm leaving at this stage and handing over the mic to Sagar Goswami. So final 3 overs to be bowled, and that will decide who are going to win this match. "18 legal deliveries and 43 runs to get an even." Darshan Bandekar is still in the dugout, waiting for a chance. And recently he has scored 6 sixes from 6 deliveries that he have faced. Let's see what is going to happen right now. Out in the middle, Sandesh Thakur with the ball. There is a chance of a catch. There was not proper connection. 2 fielders fighting to catch. Meanwhile, the fielder from the deep gives the call at the very last moment and takes a comfortable catch. So Mateen back to the pavilion. And now the big guy walks with the willow. Everyone was waiting for this moment. So all hopes on Darshan Bandekar. And as per the new rules, the new man in will be on the striking end. So let's see what is going to happen as 5 deliveries are left in this over. Sandesh Thakur, another good all-rounder, have immense experience under his kitty. Right now delivering, taking a wicket on the very first delivery. So 2 umpires, Siddesh Naik and Rajkiran Rathod, out in the middle, taking the care of the proceedings on the field. And even their eyes will be on the clock as 25 minutes have been awarded for each team
to complete the quota of 6 overs. Oh my dear, ball takes inside edge, races towards the fine leg area. Fielder from the circle gathers the ball quite comfortably, throws it back to the keeper. So that allows both the batsmen to take a single. With that single, score moves to 25. So now Vikram is on the striking end, nicknamed Vicky. Left-handed batsman, let's see what he can do now. One of the batsmen have to be a powerhouse to snatch the match out of Rohit Indians. Plays a decent cut shot, ball is racing towards the boundary. Good effort from the fielder, but could not stop the ball from crossing the fence. And that's a welcome boundary from the bat of Vikram, taking the total to 29. So finally, a boundary has been hit after a halt of at least 4 to 5 deliveries. Now Vikram on the striking end. Left-handed batsman to the left-handed bowler. Switch hit was the attempt, but ball travelled safely to Ram Purushottam Lalla Yadav, the keeper. So Sandesh Thakur delivers a dot ball. Gradually onto his run-up mark, thinking what to deliver. And we are coming closer to the end of the match as the 2 overs are to be bowled after this over. Another lovely looking strike towards the cover. There's a fielder in act. 2 fielders running, Ivana. Batsmen are running to take a couple of runs, and Vikram looks to be quick enough to snatch a couple of runs from the fielders. With that, score moves to 31. Exactly 36 runs required. 6 sixes required from here on. Lovely delivery, slightly outside the off stump, away from the guideline. Wide is the signal from the umpire. That wide takes the total to 32. Better connection along the carpet towards the long off area. Fielder from the deep gathers the ball. Meanwhile, 2 is the call. Good running between the wickets. Throw was at the wrong end. If it has to be at this, happened to be at the striking end, then definitely there would have been an interesting out in the middle. Meanwhile, no harm done. Couple of runs takes the total to 34. So after completion of 4 overs, score is 34 for the loss of 3 wickets. DJ. Thank you, DJ. Umpires, kindly carry on with the match. And please take care of 25 minutes. As we have witnessed, teams are taking at least more than an hour to complete the match. More 5 matches to be played in the evening. So let's continue with this beautiful game of cricket as only 2 overs are remaining. 12 legal deliveries and 33 to get. Lovely pacey delivery straight into the hands of keeper. Looks to be a hint of roll of fingers at the time of delivery. Ball deviating away from the batsman. Travels safely to the keeper.
Ijaz Qureshi, the captain. Second delivery, chance of a catch. Ball travels safely to Lallai. Yadav, and I can't believe my eyes. Oh, my dear. What could have been a dolly, a simple looking catch, has been missed. Maybe as the floodlights are on, the day has become darker. That may be affecting Lalla. Another good delivery, hint of cutters. Ball deviating away, a leg cutter for the right-handed batsman. Roll of fingers at the very last moment by Ijaz Qureshi. Normally, I have not seen him bowling, but here he has got a chance to be all-rounder. Meanwhile, a wonderful strike straight down the ground, away from the fielder. Lovely strike from Darshan Bandekar. Finally, he is been able to find the fence, and that boundary takes the total to 38. Another hit, there's a chance of a catch. Whether Ijaz is going to take it. Runs couple of yards and the second catch dropped off. Bandekar, meanwhile, there was a chance of a run out, and yes, it is. Lalla jumps in the air, celebrating the run out. So now new man in is Naresh Asaldekar at the striker's end. He'll be facing Ijaz Qureshi. Score is 39. Swings a bat across, no connection, leaves the ball travel safely to the keeper. Meanwhile, that concludes over number 5. So after completion of 5, score is 38-39 for the loss of 4 wickets. DJ Ashish Mix. The off stump. Wide is a signal. With that, score moves to 40. More 27 runs required. Meanwhile, signal is wide, and he is asking whether the ball has been pitched outside the playing area. So match referee, kindly have a look whether
the ball has pitched outside the playing area is the question that has been asked by the mid umpire. So this is a wide delivery. Meanwhile, a decent strike, but the fielder inactive at the covers. Stops the ball. And that makes the player to take a single. With that score, moves to 41. More 26 runs required. Can Naru strike on this delivery? As Gurushan is his own player when it comes to municipality team. Yes, Naresh Azoldikar has striked. Ball bounces, but straight to the fielder. Meanwhile, couple is the call, and 2 runs taken by the batsman, taking the total to 43. Finally, a better connection. Sweet sound from the bat of Naresh Azoldikar. Good effort, but could not stop the ball from crossing the fence. That is a big 6 from Naresh Azoldikar. And that sixer takes the total to 49. Another strike, ball drops inside the boundary rope and travels over the fence. So that's boundary takes the total to 53. Two balls, 14 runs required. Another swing, no connection, allows the ball to travel safely. Now just the formalities remaining, unless and until there's no ball delivered by Mendes. The match is safe for Rohit Indians. So requesting 6*6 to be ready. The captain be ready with your players. And that concludes the match in favor of Rohit Indians. And at the moment, Rohit Indians have won their first match. Amazing Super Giants have won one match. 6 Stars Super Kings have won one match. And Oxford Titans are the leading at the table with 2 wins. So this is much win situation for both the teams as so meanwhile Royal Challengers Fatorda are yet to register a win. Man of the match of this match is none other than Sher Bahadur Yadav for his wonderful batting. Has taken the team out of his crisis. So requesting Karimbai to kindly do the honors. Man of the match, Sher Bahadur Yadav. Kindly come and collect your prize from the hands of the club member,
Mr. Karim Bhai will be doing the honors. And now inviting Ashok Jinaik in the commentary box with the further match. So all the teams kindly note, you will be strictly following the timings that have been allotted. The time of 25 minutes, and the organizers have told us to tell that they are going to see that the innings are to be completed within 25 minutes. Otherwise, there might be some penalties that will be on. So all the captains kindly note, you have to finish 6 overs within a time span of 25 minutes only. Over to Ashok G. Naik. धन्यवाद सागर गोस्वामी। तो अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। मैच रॉयल चैलेंजर्स फातोडा और 6 स्टार 6 सुपर किंग्स, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीमों के लिए जानकारी, आपको 25 मिनट का समय जो दे चुके हैं अंपायर। और कमेंट्री बॉक्स की ओर से पहला ओवर लेकर गेंदबाजी पर राजेश सोरटे पहला ओवर लेकर पहली गेंद। इस बार रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे, एक रन के लिए निकले तेजी के साथ। शॉट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। एक मिनट। सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू हुआ मैदान पर सईद, जो कि एक सिंगल, और इसी बीच अगली गेंद। इस बार थोड़ा सा अपेश खेला मैदान पर, जब तक फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, तेजी के साथ एक रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। सुमित डेकड़े बाहुबली क्रिकेट के जगत में बिल्कुल लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं, वो खिलाड़ी मैदान पर। और राजेश सोरटे
अपने बॉलिंग मार्क पर। एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से पहला ओवर पावर प्ले का इस बार आड़े बल्ले से खेला, इनको ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर और थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में सिंगल के साथ दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 4 पर पहुंचता हुआ। 6 सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स, इन दो टीम आमने सामने। रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा और पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, एक जोरदार अपील अंपायर की और एक फुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर खेलना चाहते थे और अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर। तो नॉट आउट, बल्लेबाज सेफ है। पहला ओवर पावर प्ले का राजेश सोरटे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 6 सुपर किंग्स क्रिकेट टीम टॉस जीता, फील्डिंग करते हुए मैदान पर और बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा क्रिकेट टीम। दिन रात का ये क्रिकेट का टूर्नामेंट, इस बार रिवर्स का प्रयास सफल रहे। गेंद चली गई गली की तरफ, वाइडिश गली पर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। प्रज्योत उर्फ विकी नाइक ये बल्लेबाज मैदान पर। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, गेंद को ड्राइव किया इस बार मिड ऑन पर फील्डर, सिंगल बना स्कोर के खाते में और एक रन जुड़ गया स्कोर में। अच्छी शुरुआत मैदान पर। पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, एक चौका भी लगा। प्रजेश उर्फ विक्की नाइक और राजेश सोरटे जो पावर प्ले में आज बहुत सबसे किफायती रहे गेंदबाजी में। राजेश सोरटे गेंदबाजी में। फिलहाल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा और 6 सुपर किंग्स, इन दो टीमों के बीच में। साउथ गोवा प्रीमियर लीग जीसीसी पातोड़ा जिनसे और से आयोजन इस टूर्नामेंट का। 3 खिलाड़ी, अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का। 3 ओवरसीज खिलाड़ी हर टीम में और पूरे जो कि भारत के खिलाड़ी इस मैदान पर दिखाई देते हुए एक से बढ़कर एक। आज पहले दिन का रात का ये सफर, कल के दिन का दूसरा दिन रात का सफर रहेगा और उस कल के दिन में भी काफी खिलाड़ी इस मैदान पर जरूर देखने को मिलेंगे। फिलहाल सामने से बॉलिंग में परिवर्तन, बैटिंग पावर प्ले का ओवर। पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 9 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत, जो पहली गेंद सफलता दिलाते हुए अपने टीम को जो परिवर्तन था। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी थी गेंदबाजी में। पहला ओवर किया था जो कि राजेश सोरटे ने और दूसरे ओवर की शुरुआत जो कि भूषण गोली। पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई और पहला विकेट वापस निकलता हुआ रॉयल चैलेंजर्स पातोड़ा क्रिकेट टीम का।
न्यू बैटर मैदान पर राजेश गावकर। पहला विकेट वापस, सफलता मिलती हुई, अपने टीम को सफलता दिलाते हुए जो भूषण गोले गेंदबाजी में, और दूसरा ओवर और न्यू बैटर मैदान पर 1 डाउन बल्लेबाज राजेश गावकर मैदान पर आउट होकर वापस 8 रन पर खुद के व्यक्तिगत प्रजेश उर्फ विकी नाइक एक चौका लगाया और स्कोर रुका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस बार, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, एक विकेट मिला और उसके बाद एक डॉट गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। शॉट फाइन लेग पर ओमकार देसाई फील्डिंग करते हुए, ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, लेग कटर गेंद थे, आखिर में बल्ले का मुंह खोला, एक लेग कट का शॉट गली पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बना स्कोर में। इस सिंगल के साथ स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में तब्दील होता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राजेश गावकर एक पर सुमित देकड़े और बॉलिंग मार पर भूषण गोले। खेल जारी दूसरे ओवर का। अच्छा शॉट, एक सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बड़े शॉट पर लगभग रोक लगा दी है। एकमात्र चौका लगा जो पावर प्ले में, वो लगा जो प्रजेश उर्फ विकी नाइक आउट होकर वापस 8 पर और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का। ओवर पेज गेंद आगे निकलकर थोड़ा सा ड्राइव किया गेंद को, मिड ऑफ पर सर्कल पर फील्डर, 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं जो कि गेंदबाज, ब्लॉक होल में गेंदबाजी हो रही है, बड़े शॉट पर लगभग रोक लगा दी है। पहली गेंद पर एक सफलता के साथ अब तक 3 रन जुड़ गए, इस जो कि स्कोर पहुंचा 12 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर मैच का चलता हुआ। धीमी फेंकी गेंद, बड़ा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सीधे फील्डर के हाथों में और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। एक नाजुक शुरुआत मैदान पर, स्कोर हो चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर मैदान पर 2 विकेट 12 रन। सुबह के सत्र में पहले मैच में, दूसरे मैच में बड़ा टोटल जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा 58, 60, 55 का टोटल, लेकिन मुकाबले बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं। राजेश सोरटे गेंदबाजी पर छोटी गेंद मिली, बड़ा शॉट, शॉट ऑन पोल का, मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। दोनों टीम आपसे गुजारिश है, कैप्टन 12th मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। दोनों टीमों के 12th मैन, दोनों टीम 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। नॉन स्ट्राइकर एंड पर सैयद, स्ट्राइक एंड पर राजेश गावकर, एक शानदार शॉट,
और इस बार बैकफुट पर निकले गेंद को शफल हुए थे ऑन साइड पर, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक बड़े शॉट के साथ सिंगल निकाला राजेश गावकर ने, सामने बल्लेबाजी को मौका दिया सैयद जो कि नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ 19 रन, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। राजेश सोरटे खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर गेंदबाजी करते हुए। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट बाउंड्री पर अल्टे पल्टे सफल नहीं रहे। इस बार रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट टच बैन पर एक गली पर फील्डर है। अब थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, और जो एक्स्ट्रा कवर पर डीप पर फील्डर, उसको शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर को आगे बुलाते हुए राजेश सोरटे अपने बॉलिंग बार पर। अच्छी गेंद, तेज गेंद, स्कोर हो चुका है 19 रन 2 विकेट पर, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, और आगे निकलकर खेलना चाहते थे, फिर से चकमा खा गए बल्लेबाज, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला, इस बार ऑफसाइड पर कवर पॉइंट पर फील्डर, बड़ी देर के बाद 1 रन स्कोर के खाते में बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ खेल समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर। क्या होता है अगले 3 ओवर में, ले चलते हैं कॉमेंट्री बॉक्स में सर हरीश काकोड़कर के साथ। A 20 for the loss of 2. In comes the marquee player, Apali. The ball goes high in the air. Will it be taken? Taken nicely. Taken cleanly. I thought it's going for 6 runs, but it went so high. It has to be judged nicely, and the fielder was perfectly placed. Very nicely judged catch. One more wicket down. Well, Royal Challengers Fatorda has lost both their encounters. They need to win this somehow, and may think that permutations and combinations stays them in the contest of semi-finals. 2 out of 2 won for Oxford Titans. 1 match won, 1 match lost here for 6 Super Kings, and they will be looking for a victory here. Vikas Desai is marshalling his troops as a captain from behind the wickets. Right now they are in the driver's seat. This is in the air. This should be an easy catch. 2 wickets of 2 balls. 1 more wicket going down. Batsmen are coming, batsmen are going, and Viraj Tendulkar has absolutely no problem in using that red pen.
Well, lights are coming into full effect. So the match conditions will definitely change. During sunlight, we have seen almost 90 being scored, 60, 70. Now this might be low scoring matches because batsmen and the fielders, bowlers have to get used to this light. It's not easy to shift from the natural light towards the artificial one. 4 wicket slots on a hat-trick. Apali Kalangudkar. Will it be the first hat-trick of 500 from Mohsin? It goes for the big one. It's definitely not a hat-trick, but it's a 6. 500 saved of Mohsin, but nevertheless a cracking shot from the left-hander, Riaz. Riaz, local guy, and RCF saying vocal for local. This time trying to play that same shot in the square leg region. Dot ball. Nevertheless, in spite of that 6, still a good over. Just a 6 conceded, 2 wickets, 1 dot ball. 26. Oh, way too short. Way too short. He missed an opportunity. There was a man in the deep in the point. It could have fetched him just a single. Once again a dot ball. Trying to play that same shot. This time hat-trick of dot balls for Apali Kalangudkar. Good comeback from him after being hit for 6. 2 wickets in that over as well. After completion of 4 overs, the score is 26 for the loss of 4. Thank you, DJ. Oh, lovely bowling. Beautiful flight. Leg spinner Pranay Gaonkar, who had bowled a very good over in the previous game. Just 1 6 against his name, but that was economical over. So he has been given a chance, confidence here by the captain. This time he strikes big one. It was right in the slot. Pitched up delivery and magnificently hit here from the bat of Rajesh. Definitely need a change of ball. The ball has landed inside the tennis court, I guess. It won't be coming back so soon. They might have started playing with tennis. Score moves on to 32. This time played nicely. Will it be the catch or once again a 6? Fielder coming and drops the catch. Goes for a 6, I guess. Last man to be dropping this catch on the ground. This could have been easy. He ran almost 10 meters, but finally was in position. Ball slipped out of his hand and went outside the row for 6. Score moves on to 38. Very good batting. Classic batting here from Rajesh. The man in form. Best batsman of the previous edition of GCC Fatorda tournament.
This time, will is a no ball. No ball call. They are going for the second. Rajesh wants a strike. Can it be run out? Well, Rajesh on strike. On top of that, it's a no ball. Clear cut signal from the umpire. He was very much firm on that. With that, 3 runs. Score moves on to 41. This over is turning out to be slightly expensive. Just 3 runs bowled and 15 runs have come. Rajesh is taking on Pranay. He knows that first few overs were very economical, hardly few runs. This was a better one. But since it was a free hit, maybe a age looking at excitement from behind the wickets. Since it was a free hit, it was not out. Oh, lovely piece of bowling. Beautiful flight, perfectly landing. And wide signal here by the umpire. Maybe it is too outside off stump. Once again, Pranay has to ready to bowl the next ball. This time it was a quicker ball. He wants the strike. He's going for the second run. Fielder comes in close, but a slight fumble is enough for them to go for the second and get Rajesh back on strike. Well, you never know what sort of total is good enough once the light comes into effect. We've already seen one drop chance. Score moves on to 44. 5th over in progress. This is in the air. This might be an easy catch. Oh, he drops it. That was a sitter. Absolutely sitter. And how can you drop that catches? Finally, luck going towards Rajesh. Maybe Rajesh's day with the bat. Chance, 2 chances in fact gone begging. Pranay will feel himself unlucky. And after completion of 5, the score is 45 for the loss of 4. And Rajesh Gaukar will keep the strike. So in comes Sohail Sheikh. First ball, pretty decent one. Good line, good length. Good action that he has. A wonderful run up and a pretty decent pace. Crowd slowly and steadily coming in large numbers to watch this floodlight tournament. One of the best in Goa. He goes for the big one. The ball is definitely inside. Fielder coming. And he drops the catch. This might be the 3rd or 4th catch. A good quick throw. An easy run out. Easy run out. He faltered and maybe fumbled and slipped over there on the wicket. And that's how the run out was turned into an effective one. Another wicket goes down in the form of run out. Actually, it was a little bit of mistake from Rajesh's side. He would have taken the strike. He looked to be a better batsman who could score those 6s.
and he should have stayed on strike. With these 2 runs, new batsman comes to the wicket of that run out being effective. Yunus. Yunus comes on strike. A slight field change being prompted here by the captain from behind the wicket, Vikas Desai, marshalling his troops very well. This is in the air. This should be an easy catch, but they have to be taken. We have seen such catches being dropped, but finally Vikas Desai hungs on to 1, and another wicket goes down. This goes for the big one. This might be a 6. We have to wait for the signal. Might have landed inside, might have gone offside. Looks to be a boundary. So we are going for the third umpire. Not a pretty sure umpire whether it's a boundary or a 6. It's a boundary. 4 runs, landed well inside. Score moves on to 51. So 50 up here for RCF in the 6th over. If they get another 1 or 2 sixes, if it goes past 60, it might be interesting match. A wide signal way outside off stump. I can understand the batsman had shuffled over there. That's how your line changes. You follow the batsman more towards the offside. But here it was 2 outside and wide signal. So 2 balls left in this innings. How much they can get to RCF? So far lost 2 out of 2 encounters. Will be under tremendous pressure. Owners and marquee players along with the captain. 6 Super Kings will be hoping that they win this encounter and stay in the contest. They have been beaten in this tournament so far by Oxford Titans. This time he plays a cross-batted short. Fielder is placed and takes an easy catch. This time no mistake committed. Another wicket. Catch taken nicely in the cow corner region. रिक्वेस्ट करता बॅट्समॅन नाजाल्यार फिल्डर्स एक येता ताणें म्हाज्या जातींतले बेगीन ग्राउंडार देंवचे प्लस फिल्डिंग बी नेक्स्ट टायम येता आसतना बेगीन जातींतले करची टायम डिले करपाचो ना आनी ऑलरेडी 4 मॅची आसात. Last ball of this innings. Oh, good ball, good pace, chance of a run out and should be an easy one. Easy run out. Lovely bowling here from Sohail Sheikh. The last over that he bowled and taken 2 wickets, 1 in the form of run out, 2 for him. And there's not a great scorecard here. Although 6 Super Kings have to come and chase it down. After completion of the allotted quota of 6 overs, the score is 52. 52 for the loss of 8 wickets. And it's all in red. Most of the scoring right now from Viraj Tendulkar, who is the official scorer of this South Goa Premier League organized by GCC Fatorda. So we'll see this match and let's hope we see an interesting one. 53 is the target. And I'll hand over the mic to Sagar Gosavi.
Thank you, DJ. So requesting the fielding team to kindly double up and set your field as quick as possible as 4 matches are remaining in the night. So here we go with the run chase. As we can see, pack of players of Royal Challengers Fatorda in red and black color jersey, replicating Royal Challengers Bangalore of IPL. So hurdle is on out in the middle. Even 2 officials are out, and soon will be going to witness the second inning. Requesting the opener batsman kindly double up. Let's play this match as quick as possible, as more 4 matches to be played. So requesting captain to kindly send your openers as quick as possible, as the pack of players are spreading out to take their charge on the field. And let's see who are going to be the 2 openers. Looks to be the captain himself, Vikas Desai, will be coming out with the bat. Thank you, DJ. So here we are all set for the run chase. 53 is the target. Both Desai are out in the middle. Vikas Desai and Omkar Desai. And let's see who is going to take this strike among these 2 Desai. Meanwhile, requesting the captain of Oxford Titans and Rohit Indians to kindly come for toss in front of the defenders. As you are going to play the following match. Rohit Indians and Oxford Titans captain kindly come for the toss. Meanwhile, the stage is set. We are into the run chase. 53 runs required from 36 legal deliveries. It's a matter of the application of the mind as well as the connection between bat and ball. So fight will be on, as we can see. Vikas Desai onto the striking end. Rather, he is at the non-striking end. Omkar Desai, the hard-hitting batsman, onto the striking end. Jersey number 1 on his back. So with the umpire signal, here we go. Right arm over the stumps. Looks to be a tall guy with the ball. Gangaram. Gangaram Ingole delivers the first ball. Pull shot in act. Guides the ball towards the square leg area for a single. And that single brings Vikas Desai on the striking end. Looks to be in a good nick. Has scored 3 beautiful 6s in the previous match, but could not get the win, although they have won their first match. This is the 3rd match that both the teams are playing. Royal Challengers Fatorda are yet to open their account as far as a point table is concerned. Good delivery, equally well played. Ball is racing towards the covers fielder. Good throw at the non-striker's end, but Vikas is quick enough to gather his crease at the non-striker's end. And that single takes the total to 2. So both the openers have opened their individual account. More 51 runs required from here on. So let's see what is going to be the strategies that are being planned by both the teams. Chance of a catch. Fielder from the short fine leg takes the catch on the second attempt. And the lucky breakthrough provided by Gangaram Ingole. First wicket back to the pavilion.
at the score of 2. DJ. So now new man in is Shanish Gaonkar. And he will be at the strikers end as per the modern rules that have been recently implemented in the world of cricket. So Shanish, another young prolific batsman onto the striking end. Lower full toss, down the leg stump, could not take much advantage, rather than we can see umpire raising both the arms, signaling that this is an illegal delivery. Wide is the signal. With that, total moves to 3. The Sanish, another young talent from a remote area of Sangam Taluka. Another low full toss. There's a appeal, but the ball hits onto the legs. That is a signal from main umpire Aslam Sheikh. Consecutive second low full toss missed by Shanish. Although he is from remote area, but he is much advanced when it comes to game of cricket. And his talent will be showcased as the match progresses. Meanwhile, stylish batsman Vikas Desai on the striking end. Swings the bat very hard. Again, ball hits onto the legs. Travels towards the cover point for another single in form of leg bye. So, scoreboard is moving in singles. With that, score moves to 5. And 1 wicket is back to the pavilion. Dangerous looking batsman Omkar Desai out in the dugout. Another swing of the bat, but a good delivery is bowled by Gangaram Ingole, making it difficult for the batsman to connect the ball. Meanwhile, that concludes over number 1. So after completion of 1, score is 5 for the loss of 1 wicket. DJ. Thank you, DJ. Requesting the captain of Rohit Indians and Oxford Titans. This is the last and the final call. Come for the toss. Because you are going to play the following match, and let's not waste time, as already we are late as per the scheduled time. So the organizers are requesting the captains to kindly double up and come for the toss. Meanwhile, Gaurish Nagvekar is going to bowl the second over of this run chase. Pacey delivery, good, well played. Pulls the ball away from the fielder as ball racing towards the boundary. No chance for the fielder from the deep.
And that is a wonderful strike. Boundary to take the total to 9. So first delivery goes out of the ground, a bounce to cross the fence. 4 runs on the first delivery of the second over. So meanwhile, some field placements are going on for Vikas Desai. And here comes Gaurish, right arm over the stumps. Short pitch delivery, wanted to pull the ball, and no connection, leaves the ball as a dot ball. We can see pack of players running, closing in to stop the ball and minimizing the chances of the single. So boundary and a dot ball so far in this over. So let's see what is going to come next. Whether it is going to be another dot ball or a boundary is going to come. Another good delivery, change in pace, ball deviating onto the legs. Meanwhile, requesting match referee to kindly take the toss as both the captains are out in front of the commentary box. So Mukhtar Qadri leading from the front for Oxford Titans, and Ijaz Qureshi leading the team Rohit Indians. There was definite attempt, no proper connection, makes the ball to travel safely towards the cow corner area. The fielder has been plotted to patrol the fence. Meanwhile, another single, and that single brings Sanish on to the striking end. With that score moves to 10. Target is of 53 runs. More 43 runs required. More 4 overs to be bowled after this over. And Gaurish is now delivering in the right areas to restrict the batsman from the glory shot. Let's see whether Sanish can break the shackles on this delivery. What a lovely strike. A quick onto his back foot. Ball is racing towards the boundary rope, but the patrolling party is quick enough. Gathers the ball much quicker. Throws it back to the bowler. Another single to take the total to 11. Match referee Siddesh Naik has been taking the toss. Another connection, but not up to the mark. Ball takes the inside half of the bat. Slight fumble. Chance of a run out. But the throw was not up to the mark. Bounces in front of the keeper. That makes it difficult to collect. Meanwhile, couple of runs to end the second over. After completion of 2, score is 13 for the loss of 1 wicket. Match as it's only a 6 overs match. Oh my dear, all the local peoples are supporting Chandresh Desai. Lot of noise is going out as he is the water boy at the moment, but another good prospect will be in the team and a good all-rounder. He can even bat as well as bowl for any side at any given time.
Meanwhile, his services are yet to be asked by the captain. Right now, Sanesh onto the striking end. We are into the third over. Vinesh Satarkar, the captain, takes the ball in his hand, takes the charge, and now going to deliver from the stadium end. Tall guy, pacey customer, right arm over the stumps. Requesting the fielding side to kindly carry on with the match. 25 minutes are on the clock. Second run is on. Courtesy a good running between the wickets by Vikas Desai and Sanesh Gaukar. Couple of runs takes the total to 50. Low full toss, there's a proper hit, but it looks to be going to be a catch. Straight to the fielder, and a catch has been taken by Prajesh. Prajesh Naik alias Vicky. Second wicket back to the pavilion. DJ. New man in is Bhushan Gole. And he is on the striking end, facing Vinesh Satarkar. Third over in progress. Target is of 53 runs. Short pitch, cuts the ball away from the fielder. Ball racing towards the boundary. No chance for fielder from the deep. And a lovely strike as he have marked his statement by scoring a boundary. Requesting the spectators who are right in front of the commentary box, please help our scorers to watch the match. Thank you very much for listening to our request. Meanwhile, our appeal was ever denied by the umpire, requesting spectators not to keep on moving in front of the commentary box as the match is on and the scorer has to write all the details. Score moves to 19. Third over in progress. Cuts the ball even much quicker. Oh my dear! Ball does the trick at the very last moment. Bounces to go away from the fielder. Another boundary to take the total to 23. Switch it, and the result is going to be the same. In fact, this is the third boundary from the over and from the bat of Bhushan Gole. That boundary takes the total to 27. So that concludes over number 3. After completion of 3, score is 27 for the loss of 2 wickets. And it's time to invite
most senior commentators, Ashok Sinai in the commentary box for the updates of the last 3 overs of the inning. धन्यवाद सागर गोस्वामी। 18 गेंदों का 3 ओवर का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए 26 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, गौरेश नागवेकर फिरने में एक्सप्रेस पिछले मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी, वो गेंदबाजी पर और सामने स्ट्राइक एंड पर बैटर विकास देसाई। अड़े बल्ले से बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच, इस बार गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे अजय सर, धन्यवाद बहुत बहुत। 17 गेंदों का खेल बाकी, 20 रन। कमेंट्री बॉक्स में विराट तेंदुलकर स्कोरिंग की जानकारी देते हुए और गौरेश नागवेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार देखना होगा, गेंद निकली विकेट कीपर के पीछे, फील्डर मौजूद, 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। राजकिरण राठौड़, उन्हीं के साथ असलम शेख, सिद्धेश्वर पर बाबू नाइक और मोहसिन तहसीलदार। कमेंट्री बॉक्स में सागर गोस्वामी, सर हरीश काकोड़कर और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। TennisCricket.in के सर्वे सर्वा आदरणीय सर संतोष जी नानेकर, उनकी पूरी टीम जो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे डीजे मास्टर सर अजय। LED स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट को बिल्कुल, जो कि सीधा प्रक्षेपण आप जरूर देख सकते हैं LED स्क्रीन पर। और YouTube पर जो दर्शक जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को खेला ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल पूरा किया। अच्छा क्रिकेट, बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान पर, बड़े शॉट और उसके बाद सिंगल निकाला विकास देसाई, और उनके साथ बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके अब तक लगाते हुए भूषण गोली, जो कि बल्लेबाजी पर। चौथा ओवर जारी मैच का, टारगेट मैच को जीतने के लिए 53 रनों का, 53 रनों का, और बिल्कुल अच्छा पीछा कर रही है मैदान पर, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लेकिन फंस गए बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं रहा, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर कैच को पकड़ते हुए तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर राजेश सोरटे। स्कोर बोर्ड पर स्कोर हो चुका है टोटल 36, 3 विकेट पर 36 रन 3 विकेट पर गौरेश नागवेकर सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को, और नए बल्लेबाज राजेश सोरटे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद अंदर आते हुए ऑफ ब्रेक गेंद, तेज ऑफ ब्रेक गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। एक अच्छा ओवर, जरूर एक बड़ा शॉट लगा पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद एक सफलता दिला दी गौरेश नागवेकर ने,
अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए स्कोर 36, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक 15-16 कदम के रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से गौरेश नागवेकर गेंदबाजी करते हुए हल्के से ढीले हाथों से खेला गेंद, थोड़ा सा अपेश जरूरत थी, गली पर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन इसे बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल बना स्कोर में, सिंगल के साथ स्कोर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 37, 37 रन 3 विकेट पर। आने वाले 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए 12 गेंदों में 16 रन मैच को जीतने के लिए। और 12 गेंदों में 16 रन मैच को जीतने के लिए बैटिंग पावर प्ले। और देखना होगा बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी पर कौन आते हैं। प्रजेश उर्फ विकी नाइक जो गेंदबाजी पर 12 गेंदों में 16 रन मैच को जीतने के लिए, 12 गेंदों में 16 रन मैच को जीतने के लिए। बहुत ही कांटे का मुकाबला, 2 ओवर का खेल, बैटिंग पावर प्ले का ओवर। सामने से प्रजेश उर्फ विकी नाइक गेंदबाजी पर और देखना होगा इस ओवर में पावर प्ले के बैटिंग पावर प्ले में क्या होता है मैदान पर। 12 गेंदों का खेल अभी भी, यानी 2 ओवर का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए 16 रन। सामने गेंद को ड्राइव किया, इस बार देखने होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, पहला रन बड़ी तेजी के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और जीतने के लिए अभी भी 15 रन। बहुत ही शानदार मुकाबला हो रहा है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। प्रजेश उर्फ विकी नाइक जो गेंदबाजी पर, इस बार अपस्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ। तो अभी भी 11 गेंदों का खेल मैदान पर बाकी। स्कोर हो चुका है टोटल 39, 39 रन। छोटी गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर और जब तक विकेट कीपर जाते स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड करते 1 सिंगल बना स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा और लेग बाइज के साथ 1 रन भी जुड़ गया स्कोर के खाते में। 1 सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 5वां ओवर जारी, 13 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। शफल हुए, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील विकेट कीपर और गेंदबाज का, लेकिन इस बार टाइमिंग नहीं कर पाए। थोड़ा सा गेंद ने काटा बदला, लेग कटर, गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकली। विकेट कीपर ने जो कि गेंद को कलेक्ट किया और धीरे धीरे एक बार फिर से प्रजेश नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। बिल्कुल अच्छा मुकाबला हो रहा है दोनों के बीच में। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 40 पर, 3 विकेट पर। और आगे निकलकर खेलना चाहते थे, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। चौथी कामयाबी मिलती हुई मैदान पर। 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
थैंक यू डीजे। न्यू बैटर मैदान पर रियाज खान। स्कोर हो चुका है 40 रन, 4 विकेट पर 40 रन। खेल जारी 5वें ओवर का 13 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। बड़ा शॉट आते आते गेंद निकली मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद तारामंडल में सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एलईडी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट खेला बल्लेबाज ने, हाफ वॉली पर लेकर एक बहुत ही क्रैकिंग शॉट, 6 रन। बिल्कुल आप इस टूर्नामेंट में ये देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर भी। इस बार फिर से खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट विकेट कीपर के पीछे निकली गेंद, एक सिंगल बना जब तक गेंद को फील्ड करते। 22 का इशारा अंपायर का और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 47, 47 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 6 रन। और अंतिम ओवर, लास्ट ओवर, 6 बॉल्स 6 रन, 6 गेंदों का खेल और 6 रन। और जो दर्शक ने एक हाथ में कैच पकड़ा है, आइए हमारे मंच पर आपको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मोहसिन भाई, 100 रुपए का इनाम आपको जरूर मिलेगा। आइए, जिस दर्शक ने एक हाथ में गेंद को कैच पकड़ा है, तो आइए प्लीज हमारे मान्यवर कक्ष के सामने। जो दर्शक जिन्होंने कैच को पकड़ा है एक हाथ में, आपके लिए 100 रुपए का इनाम मिलेगा। तो चलते एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मैदान पर। अंतिम ओवर, 6 गेंदों का खेल और मैच को जीतने के लिए 6 रन। थोड़ी सी मैदान पर बातचीत खिलाड़ियों के बीच में, और आखिरकार एक निर्णायक ओवर जिम्मेदारी से गेंदबाजी पर रियाज और सामने बल्लेबाज भी रियाज। तो रियाज टू रियाज, 6 गेंदों का खेल, 6 रन मैच को जीतने के लिए। और छोटी गेंद, इस बार गेंद निकले हुक्के गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ ये मुकाबला मैदान पर समाप्त होता हुआ। तो मैन ऑफ द मैच इस मैच का, 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 12 रन और 1 ओवर 3 रन, 2 विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और 12 रन जो बल्लेबाजी में बनाए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर। भूषण गोली मैन ऑफ द मैच इस मैच का, भूषण गोली। फिलहाल अगले मैच का टॉस हो चुका है और तो नया मुकाबला मैदान पर शुरू होता हुआ। एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर, बिल्कुल मीठी जुबान माइक्रोफोन पर अंग्रेजी की सर हरीश काकोड़कर के साथ। एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो मैन ऑफ द मैच इस मैच का, भूषण गोली। आइए भूषण गोली मैन ऑफ द मैच के लिए।
his man of the match award from the guest. So, Rohit Indians versus Oxford Titans. Important match. Oxford Titans won 2 matches out of 2, and Rohit Indians won 1 out of 2. So this is going to be interesting. Oxford Titans, if they win, certainly they will be favorites to be one of the sides to enter into the semi-finals, whereas Rohit Indians, if they win, they create an opportunity for them to sneak through for their semi-final place. Amir, member of GCC, is going to give away the man of the prize. He is giving the man of the match prize to Bhushan Goli. Congratulations to Bhushan Goli for a fantastic all-round performance. Now is the time, the clash of the Titans. Oxford Titans versus Rohit Indians. Just like Gujarat Titans versus Mumbai Indians in IPL, the names have been given just like the IPL format. And also the jerseys, they were given options to choose their first name. And Indians choose Rohit Indians, owner Shekhar Pillai. And Oxford Titans have chosen Gujarat Titans. In place of that, Oxford Titans. Nasser Mullam is the owner of Oxford Titans. Marquee player Sarfraz Nawaz. Yes, we are ready. Get set, go. Important clash. A very important match. 7th match of the day. This might decide or can tell us a probability if Oxford Titans wins this. Certainly will be favorites into the semi-finals, and Rohit Indians will have other thinking. Oh, he went for the switch hit. Lucky it hit his leg. Ram Lalla Yadav going for that switch hit of the very first ball against Pritham Bari. This time he went for the orthodox slog sweep. 2 dot balls in a row against Lalla. Rohit Indians will be hoping to get a good start from both these batsmen, Ram Lalla Yadav and Ijaz Qureshi. They are rotating their batting order almost each and every match, but Lalla has been consistent with the opening bat. Just a false start here. Meanwhile, our sponsors, the esteemed sponsors, are also watching this match cleanly. Mushtaq Ahmed, Ijaz Sheikh and Abhijit. Oh, that's a lovely shot. Big slog. He gets a 6. He was waiting to play that shot. He's very strong, Ram Lalla Yadav, and finally opens his account with a magnificent 6. This is the most favorable. He's very strong in the backward square leg, mid-wicket region, and also plays that switch that makes his shots more effective. That's a good short ball, a very good short ball. So 1 per the over signal for Pritham Bari. He was not happy with that 6. That pace was generated of this ball. The angle shown by the bowler bowling that bouncer. 1 per the over signal. This time a chance of a run out. Oh my God, what has he done? What has he done? He just could have ran towards the non-strikers and removed the wheels, but he didn't do that. Sometimes the pressure tells you to do something different, and he forgot the basics. Miscommunication here between both these batsmen. Leg by signal. With that leg by, score moves on to 7.
So now our left-hander Ijaz Qureshi is on strike. Captain of the side of Rohit Indians. So Pritam Bari, slight change in field, a little bit of time taken because of the left and right hand combination to set the field where the bowler wants. That was a full toss ball, an easy boundary. He just applied bat on that and a boundary down the third man region for 4 runs. Poor ball, that last one that costed him a boundary after completion of 1. The score is 11 without loss. And I guess the signal is for the batting power play that has been immediately chosen here by Ijaz Qureshi and Ramlalla Yadav. It's going to be Mukhtar Qadri, one of the experienced and pivotal players of this Rohit in Oxford Titans side. Both experienced players. They are like a wine who get better with age. Lalla Yadav and Mukhtar Qadri must have played thousands of matches in tennis ball cricket among themselves. They are facing each other once again in a big tournament. Round the wicket, Mukhtar Qadri against Ramlalla Yadav. Oh, what a switch hit! Take that! What a welcome to Mukhtar Qadri, and that switch hit was a superb one. Although gonna catch the release there. Once again, this time he went for the orthodox log, straight hit, dot ball. ओदोळ एक स्पेक्टेटरान बॉल धरिलो एक हातान ताका 100 रुपयाचे कॅश प्राइज इनाम फावो जाता. हांव मागता त्या स्पेक्टेटरा ताणें मातशें हांगा येवचें माचे कडेन आनी आपलें इनाम घेवचें. This should be a wide, slightly straying down the leg side. Meanwhile, an announcement from the organizers. There was an auction for the players, and players were sold for a particular price. Whichever teams are going and bowing out of the tournament today will have to take their certificate and cash prize. This time glided down the third man region for a single. Once again, I'll make that announcement. जो टीम कोण भायर पडटले आयच्या दिसा 5 टिमी भितर 2 टिमी सेमीफायनलीक पावतले, 3 टिमी भायर पावतले. ज्यो 3 टिमी भायर पडटात या फर्स्ट राउंडा लीग स्टेजीक तांणी ऑर्गनायझरा कडेन आपल्या सर्टिफिकेट आनी दुसरे म्हणल्यार आपल्या जो अमाउंट बिडेड प्राइज आसा तो कलेक्ट करचो. That will be given by the organizers to the teams who are bowing out. Score moves on to 19. Oh, massive! Humongous strike from Ijaz Qureshi. My God, this has gone many a rows back. If someone was complaining about the light, look at even we can see where the ball has gone from here. Magnificent batting here from Ijaz Qureshi. A powerhouse, fantastic bowler, great all-rounder. And Rohit Indians will be very happy with his performance. This time very nicely cut away, but straight to the fielder. He didn't find a gap. Sher Bahadur, in fact, I beg your pardon. Fielder was rightly placed towards the point region to stop that. With that single, score moves on to 26.
Just the second over in progress. Very good run rate being maintained here by Rohit Indian side. This was a better line, better length, and dot ball to finish over, but expensive compared to the standard set by Mukhtiar Qadri for himself. After completion of 2 overs, the score is 26 without loss. Let us go ahead with the proceedings of this 26 after completion of 2. Not a single wicket has been lost. And I guess there is a bowling change. They thought of a bowler at the first moment and they decided against it because Ijaz Qureshi was on strike. Once again, I can see a helmet being brought. Certainly, the keeper is going to stand in front just behind the wickets. Suhas Pawar, it is going to be with his left arm, medium pace with those cutters. Is going to bowl to the left-handed batsman Ijaz Qureshi, who has already hit a 1-6-1 boundary, looking in good touch. What kind of ball he's be bowling? If he bowls typical leg spinners that will come in towards the left-hander, he can swing with the bat on the leg side. But right now the cushion is there deep in the leg side for the bowler as the restrictions have eased off. This time he has shuffled across, trying to hit over that fine leg region. There is a wide long gap. If we can pierce that, dot ball in the end. No connection with the bat. Good start here by Suhas. Goes for the big one. He didn't time it well. It falling in no man's land. Are they going for the second one? The ball took a little bit of time to come down, but also the batsman had come down slightly stiffed at the non-striker's end, which prompted them to go for only a single. 27 the score moves on to. Now the right-hander, Ijaz Qureshi, is having a word with Ram Lalla Yadav. How and which shots you have to play against Suhas Pawar, who is bowling those leg cutter, left arm orthodox, cutting that ball away from the right-hander. So far, so good. Trying to get the field absolutely right against Lalla. Oh, a beautiful piece of bowling. He is asking for wide, but he says the batsman has shuffled across way too much. And the line was pretty much in the guideline marked for the umpires. Another dot ball in this over. Oh, this one a big one. Ram Lalla Yadav was waiting for that ball in the slot and beautifully and powerfully hit away in the square leg region for another 6. Three sixes so far for Ram Lalla Yadav. Score moves on to 33. Just the third over in progress. This time, no chance of a single. Good fielding at the short third man region. He was not almost close towards the borderline of the 30-yard circle. He was slightly inside, I guess. That's why that single stoppage was possible.
He goes for the switch hit. Fielder is placed in the deep for the switch hit. He goes for the run, and there is a run out. And Lalla gives away his wicket for Ijaz Qureshi, I guess. That was not a double at all. Absolutely not a chance. The ball was there in the hands of the fielder, and I don't know where they were running. Never mind. No love lost between both these batsmen. Lalla has to depart, but he has departed after playing a wonderful knock for his side, Rohit Indians. Audio Jungle. Audio Jungle. After completion of 3 overs, the score is 34. And in comes a big name of tennis cricket, Bunty Patel. I guess many are watching this man live on YouTube, on TennisCricket.in. And he's got lots of fan following. And he's got fan following in Goa as well. And people must have thronged on this ground at Fatorda to watch this man play and bowl. And he is there on the wicket right now. That over costed 8 runs. After 3, the score is 34 runs for the loss of 1 wicket. Lalla Yadav back in the pavilion, and certainly will be a change in commentary. I'll hand over the mic to Sagar Gosavi. Pritham Bari, the new bowler, continuing from stadium end. Ijaz Qureshi plays ball along the carpet for a single. And that single brings another big name in the world of tennis ball cricket, Bunty Patel on the striking end. Every Goan will remember his knock at the ground of Sangam into the semi-finals. He has played a scintillating inning, taking his team out of the trouble and enrolling themselves into the finals, in which he has scored 40 runs from 12 deliveries. Similar batsman on the strike. Meanwhile, guides the ball towards the gully area for a single to rotate the strike, and that takes the total to 36. We are into the 4th over. 2 more overs to be bowled. Let's see what is going to be the strategy of the batting as well as the fielding side, as the 2 good teams are playing out in the middle, fighting to get a victory and to get points to be ahead at the points table. Meanwhile, lovely delivery, and what a scintillating delivery bowled by Pritham Bari takes the wicket. Ijaz Qureshi, the captain, back to the pavilion. 2nd wicket in the dugout. DJ. Thank you, DJ. The fall of wicket brings another left-handed sensation, the most experienced player out in the middle, none other than Sher Bahadur Yadav. And he will be immediately facing Pritham Bari. And the consecutive wicket from Pritham Bari. What a bowler he is proving to be for Oxford Titans. 2nd wicket in this over. DJ, it's time for you.
Audio Jungle. Thank you, DJ. So new man in is Nehal Bind will be on the striking end and a chance of a hat-trick. Whether this is going to be the first hat-trick of the tournament. And even there's a cash prize of 500 rupees for the bowler who takes the hat-trick. Batsman plays watchfully, drives the ball straight down the ground. Ball is racing towards the long on area. Meanwhile, fielder from the deep long off gathers the ball. Throws it back to the bowler. Another single. That takes the total to 37. Another pacey delivery, but deviating from line and length down the leg stump. Wide is the signal from the umpire. That wide takes the scoreboard furthermore to 38. We are into the fourth over. At the moment, looks to be Rohit Indians are moving at the pace of 10 runs per over. So whether both these batsmen can continue the same form or Pritham can get a wicket, the time will tell us. So far, 2 wickets in this over. Whether Pritham can take one more. Equally well bowled right in the block hole. Equally well played by Bunty Patel. Meanwhile, a dot ball to end the fourth over. After completion of 4, score is 38 for the loss of 3 wickets. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Thank you, DJ. So fielding captain, the clock is running and we can see Mukhtar Qadri running to take his place at the covers. So this is the pressure on the captain as there's a time limit of 25 minutes and that makes every player to be on their feet. So here we go into the 5th over. Sarfraz Nawaz, another young Turk, has been given the responsibility. Meanwhile, first into the block hole. Lovely fielding onto his follow through. Even a dive at the non-striker's end to retain inside the crease. Wonderful cricket happening out in the middle. So, any spectator, this is a treat to watch as good cricketing skills are displayed. So meanwhile, Nehal Bind is on the striking end. And he is facing a young Turk from Vasco da Gama. Plays watchfully into the covers. Vacant area. Fielder patrolling the fence. Stops the ball from crossing the fence but won't be able to stop. Couple of runs. Meanwhile, 3 is the call as the throw was away from the bowler. And a lovely running between the wickets displayed by both the outstation player. A single has snatched what could have been a couple of runs, a turn into a triple. So with that, score moves to 41. So this is a wonderful gesture by the batsmen as boundaries have been dried up. So they are running for each and every possible run that can be snatched. Wonderful gesture. Meanwhile, a word of advice by brother to his younger brother. Abdul Salam all the way from long off travel to meet his brother. A word of advice. Let's see whether it is going to work for him. Meanwhile, Mukhtar Qadri will be having a look on his watch for 25 minutes. And here we go after doing this settlement. Right arm over the stumps. Meanwhile, a helicopter in act that was predicted by Viraj Tendulkar as a strong throw towards the keeper. Chance of a run out. Diving effort. But wait for umpire signal. Definitely it is going towards the screen. So it's a
time for third umpire to be in act. Let's see what is going to be the decision. Audio Jungle. So there's a signal from the umpire, and it's a convincing decision that has been made by the third umpire. Up goes the finger, and fourth wicket back to the pavilion into the fifth over. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So new man in it, Jignesh Patel at the striker's end. Sarfraz Nawaz proving to be a good prospect in this over. So far the boundaries have been dried up, but he is delivering in the right areas. Another good delivery, ball takes the leading edge, travel towards the gully fielder. Another single to move the scoreboard to 43. So word of advice from elder brother has been working, has been in favor of his younger brother who is bowling at the moment. Another good delivery, no proper connection, takes the ball straight to the bowler. Good fielding onto his follow through, resulting in a dot ball. So this is going to be a very good contest as we are under the lights. So many things are to be taken care of. Another good delivery, slightly outside the off stump. A good over considered by Sarfraz Nawaz, a young Turk, delivering at the occasion after completion of 5 overs. Score is 43 for the loss of 4 wickets. Akshay Jogle bowling the final over of the first inning. Another good youngster, I must say. This is his local ground and knows in and out of this ground. With the ball right arm over the stumps. Delivers a good delivery, ball skidding through after hitting the deck, minimizing the chances of a batsman at connecting the ball. Travels safely to the keeper. Starts with a dot ball.
Another heave, but the ball taking the leading edge, travels safely to the keeper. Well accepted by the keeper behind the stumps. Fall of one more wicket, fifth wicket back to the pavilion at the score of 43. DJ. So now the next delivery is about to be pitched by Akshay. There's a wonderful strike. Fielder running to save the boundary. Ball bouncing well above the head. And the ball traveled the distance. So boundary has come after a very long time. That boundary moves the scoreboard to 47. Swapnesh Vedip, the new man in, strikes the boundary on the very first delivery that he has faced. Whether it is going to more firework from Swapnesh. Shuffles towards the off stump, guides the ball towards the fine leg. Fielder inside the circle. Meanwhile, batsman was looking for the second run, which is quite merely impossible. So a single taking the total to 48. Just 2 runs short of half century of the team. And now Jignesh Patel on the striking end. Whether he can strike at least a boundary in this over, that is the big question. Slight fumble from Govind allows both the batsmen to take a single in form of the byes. There's a signal from the umpire. That takes the total to 49. So definitely Swapnesh will be hoping to finish on a very high note. But the only hurdle in front of him is Akshay Zogre, who is delivering in the right areas. Slightly fuller pitch, onto the back foot, strikes the ball, fielder under the ball, and ball drops, bounces much more than the expectation, as this is a brand full toss ball, tennis ball, that bounces much more than the other regular tennis balls. A couple of runs on the final delivery of the inning. That takes the total to 51. And the target is of 52 runs in front of Oxford Titans. Meanwhile, inviting senior commentator Ashok Jinaik in the commentary box. So meanwhile, requesting the captain of 6*6 Super Kings and Amazing Super Giants to kindly come for toss as you are playing the following match. Captain of 6*6 Super Kings and captain of Amazing Super Giants, kindly come for toss. And in this run chase, handing over the mic to a sweet voice, Ashok Jinaik.
अपॉर्चुनिटी से आइए टॉस के लिए अमेजिंग क्रिकेट टीम और सिक्स सुपर सिक्स। आइए दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए। अमेजिंग क्रिकेट टीम आइए कैप्टन टॉस के लिए। आइए कैप्टन अमेजिंग सुपर जायंट्स कैप्टन टॉस के लिए आइए। धन्यवाद सागर गोस्वामी। टारगेट मैच को जीतने के लिए 52 रनों का और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर सरफराज नवाज उर्फ चप्पू और उन्हीं के साथ शाहिद शेख ऑरेंज कैप के जो कि हकदार शाहिद शेख और पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर जिग्नेश पटेल। 52 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। आने वाला मैच अमेजिंग सुपर जायंट्स और उन्हीं के साथ सिक्स स्टार सुपर सिक्स। फील्डिंग टॉस तो आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। टॉस जीतकर फील्डिंग कर रही है सिक्स स्टार सुपर सिक्स क्रिकेट टीम। तो फिलहाल जुड़ जाते हैं मैदान पर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट इस बार शफल हुए थे ऑफ स्टंप पर। गेंद टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली। एक लेग कटर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए जिग्नेश पटेल और ओपनिंग जोड़ी सरफराज नवाज उर्फ चप्पू और उन्हीं के साथ शाहिद शेख ये जोड़ी मैदान पर। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से ऑफ साइड पर शफल होकर निकले थे। हल्का सा अपील जरूर था। गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में जिग्नेश पटेल। थोड़ी सी बातचीत मैदान पर सरफराज नवाज और शाहिद शेख के बीच में। पावर प्ले का ओवर, पहला ओवर जारी मैच का। 52 का टारगेट मैच को जीतने के लिए। इस बार एक आड़े बल्ले से खेला गेंद को मिडाउन की तरफ सिंगल के लिए निकले तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज। और जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। एक रन जो कि स्कोर के खाते के साथ, एक रन सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। बावन रन 6 ओवर में मैच को जीतने के लिए। थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे। थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर है विकेट कीपर के पीछे। कमेंट्री बॉक्स की ओर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जिग्नेश पटेल
इस बार बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद ने चकमा दिया। एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। सफलता मिली पहले ओवर में, पावर प्ले के ओवर में जिग्नेश पटेल को एक बड़ी विकेट जो कि उन्होंने चटकाई और न्यू बैटर मैदान पर नवदीप। इस बार घूमकर मारना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते। बहुत ही शानदार ओवर, पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, एक विकेट भी मिला, सिर्फ एक रन जो कि स्कोर बोर्ड पर टारगेट 52 रनों का, और पहले ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर रुका हुआ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होकर वापस बल्लेबाज शाहिद शेख, आज बिल्कुल बल्ला नहीं चला, 0 पर। सरफराज नवाज उर्फ चप्पू 1 पर। नवदीप जो नए बल्लेबाज नवदीप गांवकर वो मैदान पर, और देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है मैदान पर। पहले ओवर का खेल जो समाप्त हुआ। थैंक यू डीजे। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। असलम शेख, उन्हीं के साथ सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, राजकिरण राठौड़ और मोहसिन तहसीलदार। साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2022 आज पहले दिन रात का ये क्रिकेट का मैच मैदान पर चलता हुआ। बहुत एक बड़ा आयोजन इस टूर्नामेंट का। 3 ओवरसीज खिलाड़ी जीसीसी फातोरडा जिनसे और से, और देखना होगा ये टोटल जो कि 52 का, लेकिन सामने से बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी में। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन 1 विकेट भी मिला, और बॉलिंग में परिवर्तन बंटी पटेल गेंदबाजी पर। बिल्कुल गुजरात का हीरा, गुजरात की खुशबू, ये खिलाड़ी मैदान पर। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। और इस बार अच्छी शुरुआत सामने से दूर वाले छोर से एक डॉट गेंद के साथ। कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं बड़े शॉट के लिए। मालूम है पहले पावर प्ले में सिंगल बना है, ये दूसरा ओवर जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर है, इस ओवर में कम से कम एक आध दूसरा बड़ा शॉट तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले 4 ओवर में थोड़ा सा दबाव बढ़ जाएगा बल्लेबाजी पर, रन रेट बढ़ता जाएगा। और इस बार ऑफसाइड पर खेला गेंद को गली की तरफ, फील्डर मौजूद, थोड़ा सा शायद अजब गरीब ढंग से के साथ, लेकिन सिंगल बना स्कोर में। गली पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, जब तक थ्रो करते तब तक एक सिंगल बना, सिंगल के साथ 2 पर पहुंचा टोटल स्कोर। सरफराज नवाज उर्फ चप्पू 2 पर, सामने नवदीप गांवकर, और बॉलिंग मार्क पर बंटी पटेल। शुरुआत जिग्नेश पटेल जो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार बंटी पटेल जो राइट आर्म ओवर द विकेट सामने से। इस बार और एक जो कि पुलर लेन की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से डॉट गेंद, शानदार गेंदबाजी। आने वाला मैच जो निर्णायक, बहुत ही अच्छा मुकाबला, अमेजिंग सुपर जायंट्स और 6 स्टार सुपर सिक्सर, ये 2 टीमों के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है 6 स्टार 6 सुपर क्रिकेट टीम ने, तो अमेजिंग को पहले बल्लेबाजी को मौका दिया। फिलहाल बंटी पटेल सामने से अपने बॉलिंग मार्ग पर, खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर।
इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, देखना होगा सिंगल बनेगा क्या, दूसरे की मांग होगी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन बड़ी देर के बाद स्कोर के खाते में जुड़ते हुए, और इन 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 4 रन पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। 52 का टारगेट है, 52 का 6 ओवर का मुकाबला है। आज 2 टीम पक्की होगी जो सेमीफाइनल की दावेदार होगी। कल के लिए बिल्कुल जो कि प्लेऑफ के लिए परसों जो कि इस मैदान पर, लेकिन फिलहाल कल भी बहुत सारा क्रिकेट इस मैदान पर खेला जाएगा। एक से बढ़कर एक जो कि खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, और आज देखना होगा फिलहाल आखिरी जो कि दौर में 2 टीम कौन सी होती है। फिलहाल अपने बॉलिंग बार पर बंटी पटेल अगली गेंद लेकर दूर वाले छोर से। और शॉर्ट पिच गेंद, बल्ला लगाया उस गेंद पर, विकेट कीपर गेंद के नीचे शायद एक अपर कट का शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी अंदर आई और वहीं पर बल्लेबाज थोड़ा सा धोखा खा गए, और एक सफलता मिलती हुई टीम को। विकेट नंबर जो कि दूसरा वापस निकलता हुआ, नवदीप गांवकर आउट होकर वापस सिर्फ 2 रन बनाकर, और टीम को यह लगा दूसरा धक्का। न्यू बैटर मैदान पर प्रीतम बारी, बल्लेबाजी है इस टीम के, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब तक जिस तरह से रन नहीं बन रहे मैदान पर, तो बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। 4 रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर, 52 का टारगेट, और न्यू बैटर मैदान पर प्रीतम बारी सामना करते हुए बंटी पटेल की गेंदबाजी का। ऑफ स्टंप पर हल्के से गेंद को टैप किया, ऑफ साइड पर गली पर फील्डर, सिंगल बना स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 5 रन पर। 52 रन का जवाब दे रही है मैदान पर, और 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और सिर्फ स्कोरबोर्ड पर 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद डीजे। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 2 ओवर समाप्ति के बाद एक धीमी शुरुआत मैदान पर 52 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर से जिग्नेश पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी, 24 गेंदों का
47 रन, अभी भी दूर है मैच। बढ़िया शॉट, हाफ वॉली पर लेकर इस बार एक अच्छा शॉट, और जब तक कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, सिंगल बना स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 6 रन पर। प्रीतम बारी और उन्हीं के साथ सरफराज नवाज उर्फ चप्पू बल्लेबाजी पर। जिग्नेश पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर तीसरा ओवर जारी रखते हुए 6 ओवर का मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। अच्छी गेंद मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ कट होकर बाहर की तरफ निकलते हुए, और ज्यादा घुमाव के साथ उछाल भी मिली इस बार जिग्नेश पटेल को। अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कहीं ना कहीं एक दूसरा शॉट होना चाहिए स्कोरिंग में, क्योंकि बिल्कुल अगर रन रेट की हम बात करेंगे तो एक धीमी बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। एक दो बड़े शॉट अगर बल्लेबाजी में हो जाए तो फिर से मैच जो कि ऑन हो जाएगा मैदान पर। बहुत बेहतरीन शॉट इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। जब तक इनको फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। जिग्नेश पटेल इस बार बेहतरीन शॉट देखना होगा, मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर बंटी पटेल कैच को पकड़ा और विकेट नंबर तीसरा वापस। थैंक यू डीजे। न्यू बैटर मैदान पर अब्दुल सलाम, स्कोर 8 रन 3 विकेट पर। ऑफ साइड पर शापल है इस बार एक बड़ा शॉट, थैंक यू डीजे। आइए थर्ड अंपर आइए। तो आउट, इसी के साथ
और एक सफलता मिलती हुई मैदान पर। बिल्कुल नाजुक स्थिति मैदान पर, स्कोर रुका हुआ 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 52 का टारगेट मैच को जीतने के लिए, लेकिन सामने से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बढ़िया फील्डिंग हो रही है मैदान पर और स्कोर रुका हुआ 8 रन सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग मार्क पर जिग्नेश पटेल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और न्यू बैटर मैदान पर सुहास पवार। दो पर प्रीतम बारी और सुहास पवार न्यू बैटर। ऑन हैट्रिक मैदान पर गेंदबाजी पे जिग्नेश पटेल। 500 रुपए का इनाम भी रखा है मोहसिन भाई ने, जो हैट्रिक मुकम्मल करने के लिए गेंदबाज के लिए। जिग्नेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क पर, अच्छी गेंद इस बार, हल्का सा अपील, गेंद चली गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। लेग बाइज का इशारा, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। 52 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए और स्कोर हो चुका है सिर्फ 9 रन 4 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी और मैच को जीतने के लिए 43 रन आने वाले 3 ओवर में, 18 गेंदों का खेल बाकी और 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 43 रन। बिल्कुल एक जो कि धीमी बल्लेबाजी, लेकिन बैटिंग है मैदान पर, अभी भी बल्लेबाजी है और देखना होगा सुहास पवार, प्रीतम बारी, दो बिल्कुल अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर है। किस तरह से मुकाबला समाप्त होता है फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता हुआ। आइए जुड़ते हैं सर हरीश काकोड़कर के साथ आगे का विवरण सुनाते हुए। .43 required in 18 balls. So in comes Sandesh Thakur with ball in his hand, one of the finest all-rounders of Goa. And so far, you can certainly say Rohit Indians are in the driver's seat. They have taken the important wickets of Sarfaraz Nawaz, Shahid Sheikh. This was very nicely bowled. I was talking about the wickets they have taken. Sarfaraz Nawaz, Shahid Sheikh, Navdeep Gaonkar also went back. Abdul Salam out of the very first ball. Golden duck for him. This was very nicely bowled by Sandesh Thakur. Should be only a single. They are bowling right in the good areas. Nothing given away easily. No freebies at all from the bowling side. And that's why they are reeling at the moment. We consider that Oxford Titans are a strong batting unit. Right now, Suhas Pawar and Pritham Bari, the outstation players, have to do the job. A difficult job, not an easy job to win the match here for Oxford Titans. Sandesh Thakur is not an easy customer. He has many awards against his name, and big player, big gone player, bowling at the right time here for Rohit Indians. This time to the right hander, Pritham Bari. Oh, what a ball. We have to wait for umpire's signal.
wide signal by umpire. So it was very close to the leg side, the leg wicket. But umpire says definitely I was sure that it will be a wide ball, signaled wide, 1 to the extras. In fact, 2 to the extras, 1 in terms of by and 1 wide. Score moves on to just 12. 52 is the target. 40 still more runs required. So once again, beautiful piece of bowling. Nothing much you can do when you are bowling consistently in the block hole region. That too just outside. This is very good here. What has started by Jignesh Patel, Bunty Patel has been continued by Sandesh Thakur. They have got good left arm bowlers. It's now very nicely struck. Is it in the gap? Fielder is running, but he has stopped it. Good throw towards Sandesh Thakur, but cannot stop the second run. They won't mind twos or singles at this stage. What they have to stop is the boundaries and sixes. The flurry of boundaries and sixes that can get the asking run rate way down. This once again up and over the inner ring. He's going for 6. No! Straight in the hand. The fielder was placed so perfectly. He did not have to move an inch. Directly landing in his clutches and he pouches onto it safely. So the required runs, 37 runs of just 13 balls, and is not looking good at this stage for the Titans. Now Nath Naik comes on to the wicket. Goes for the big one once again. It might be 6. Although once again straight to the same man, and once again he does not commit a mistake. 2 wickets of 2 balls and the same fielder, Bunty Patel. No mistake whatsoever. Stunning over once again from Sandesh Thakur. I'm Captain Jack Sparrow. Well, they have got a wonderful bowling unit, is Rohit Indians, and they are showcasing their talent at a time when it is required for their team. And captaincy also must be hailed. The reason is you can see the fielder placed in the deep covers. He knew exactly where he was going to bowl, full outside of stump. In comes Abhijit. This might be once again another catch. Fielder coming. Just a landing shot. Suhas was on strike.
Now he has no options left. He just have to go after the bowling. "35 runs required of 11 balls. This time also not getting a good feel. Just going at the backward of point region. Another single. So the bowlers, especially the left arm orthodox bowlers, are doing an excellent job. They have got 3 in their side, and all 3 are just like diamonds, coming right at the right time. Precious value is coming in crucial matches. This time also not a powerful shot. Catch taken easily. The force was not behind, and force was nicely taken by the fielder at long on region. Another wicket going down, and Oxford Titans are crumbling under pressure. So in comes Govind Prabhu Bappa. And he will be facing. Wickets have fallen almost every over. Not almost, but in fact every over. First wicket for Jignesh Patel, then Bunty Patel. 1 wicket of the second over. Jignesh Patel comes once again to bowl. The third over takes 2 wickets. 2 wickets for Sandesh Thakur. Now a wicket for Ijaz Qureshi. No chance. He just glided down the third man region. They want a big hit. Singles will not take them anywhere. Singles will not take them anywhere at this stage. Another single takes the score to just 19 on the board. 33 more runs required. 33 more runs required of 8 balls. So it is creeping high and high, and it is making difficult, almost close to impossible to chase this. Once again, just a mere swing without any conviction. Another dot ball, another stunning over from a left armer. The left armers are proving to be very handy here for Rohit Indians. This is not only causing them towards the clutches of defeat. Oh, that's nothing short. That was a full toss ball. You could have put it away for 6 or maybe a boundary, but in fact, it just goes for a dot ball. So Ijaz Qureshi bowls a good economical over after completion of 5. The score is just hovering at 19. 33 runs required in 6 balls. Well, the problem for Oxford Titans at this stage, not only they are at the mouth of a defeat, but also their run rate, net run rate is going to dip if this is a big marginal defeat. And that is certainly then their cause of entering into the semi-finals. That is a big worry for them at this stage. In comes Gurushant Mendes, the local boy. What a quick ball. What a quick ball.
And that will be a run out. Bappa was in no position to play that pull shot. A quick fast ball from Guruchan, prompting a run out at the non-strikers, and another wicket going down. 8th wicket for Oxford Titans. And in comes Mukhtar Khatri. Well, I don't understand him coming at number 10. He's a very good all-rounder. Certainly they must have got batting depth, and the team management must have thought we should put these players a little bit up front to get those sixes and boundaries. Can you imagine if Mukhtar Khatri is coming at number 10, how strong was the batting order of Oxford Titans? Suhas Pawar still there on the wicket. The asking run rate has gone beyond the possibility of winning them this match. That's a lovely ball. That's a wonderful ball. Yorker length just wide of off stump. Nothing much you can do. Gurishant has also a sheer pace, good pace that he bowls with. Clean action. This a local boy played on this ground from his younger days. This time not a convincing shot, not a powerful one which can fetch him only a single. He wants the strike and gets the strike as well. The throw was a little bit slow to throw the ball. He didn't expect the batsman to go for the second. With these 2 runs, score moves on to 21. 31 runs required of just 3 balls. So Rohit Indians, what a magnificent performance by them, especially the bowlers defending a mere low total. Once again, hit a carpet shot here down the ground. Once again, they go for the second. Oh, run out opportunity it was. Mukhtar Khatri was sacrificing his wicket in trying to get Suhas Pawar on strike. And finally, they get another 2. 23, the score moves on to. Once again, is it going for 6 runs? Finally gets a 6, Suhas Pawar. What a shot that was, but it's all coming too late. All coming too late when the ship has already drowned. Well, this time in the air is the fielder coming to take this catch, and he takes it easily. Suhas Pawar also disbarred, and Mendes also comes and will be in wickets column. That's it, all over for Oxford Titans. And they lost by a huge margin. That will definitely dent their net run rate. The total score after 6 overs was 29 runs. And they lost it by 22 runs. 22 is a big marginal defeat here for Oxford Titans. And we will declare the man of the match. I guess it's going to the bowler. It was not a high-scoring match. And definitely going to Jignesh Patel. What a magnificent spell that was from Jignesh Patel. And at a time when it required Rohit Indians that one of the bowlers to perform exceedingly well. It did exceedingly well. Bowled 2 overs, 4 runs, 3 wickets. Jignesh Patel, please come and take your Man of the Match award for your stunning bowling performance. Until then,
over to next updates of the further match. 6*6 Super Kings versus Amazing Super Giants. So over to Sagar Goswami. So now even it's time to honor the players, and the purple cap has been gained by Ram Purushottam Yadav. Lalla, orange cap for Ram Purushottam Yadav. Lalla, kindly come and collect your orange cap at the presentation area. And even the purple cap is bagged now by Jignesh Patel. So Jignesh Patel, please come once more. So now it's time to honor the highest wicket taker by giving him the purple cap. It's none other than Jignesh Patel will be handed the purple cap in a while. And the orange cap will be handed over to Ram Purushottam Yadav of Rohit Indians in a while at the presentation area. Meanwhile, the match is going to be played between 6-star Super Kings versus Amazing Super Giants. After winning the toss, Vikas Desai immediately decides to field. So man on strike, none other than all the way from Hubli, Arjun Bhosle. Swings the bat very hard, no proper connection. Takes the ball towards the short fine leg. And the signal from the main umpire is that this is an extra run to be written in form of leg by. So with that, Amazing Super Giants open their count. So definitely, Amazing Super Giants have won only one match and definitely will be looking for another victory. Another good strike along the carpet. There was a possibility of a run. Slight fumble from the fielder allows both the batsmen to change the ends and take one more single. That single takes the total to 2. So now Arjun Bhosle is back on the striking end. Switch it in act. No proper connection. Chance of a run out. Good throw from Vikas Desai. But it was hit onto the legs of the batsman who was running to retain the crease at the non-striker's end. Meanwhile, another single takes the total to 3. Good over so far by Rajesh Solte. Another good delivery onto the legs. Again, a single is on in form of leg byes. That's the signal from the umpire. So most of the runs have come in extras rather than from a convincing strike. So now hard-hitting batsman is on the striking, and so far he is not able to do the massive hitting for what he is known for.
Another swing, no connection, another extra to take the total to 5. So good over in the process. Good strong bowling displayed by Rajesh. Gradually onto his run-up mark with a moderate run-up right arm over the stumps. Another good pacey delivery straight to Vikas Desai. And what a over concluded by Rajesh Solte. Has given only 5 runs in which 3 runs in form of leg by and 2 convincing with the bat. So lovely over concluded in the power play. So let's see who is going to bowl the second over for 6*6 Super Kings. Meanwhile, a cut shot in act. A fielder has been placed deep gully, patrolling the fence, and a couple of runs. So Apali bowling the second over of the inning from far end. Another swing and a miss. Lovely delivery delivered by Apali. Right near the legs. Closing the room for the batsman. Not giving much elevation. Meanwhile, Arjun Bhosle is a little quiet. Cuts the ball, but straight to the fielder at the point. A lovely fielding inside the 30-yard circle for another single. So far, in the second half of the tournament, the boundaries and the sixes have been dried up in all the matches. Let's see what is going to come next. There's a strong connection. Strong hit. Fielder waiting under the ball and takes a decent catch. That was a wonderful effort, but straight to the fielder. Avinash Gavas back to the pavilion. Thank you, DJ. So new man in is Boom Boom Mathin. So as per the modern rules, the new incoming batsman will be at the striking end. So Mathin on the striking end, and he is also a very hard-hitting batsman. So let's see what he can do for his team. Switch hit was the attempt. Guides the ball towards the short fine leg. A throw from Omkar Desai, but not onto the target. Meanwhile, a single in form of leg by takes the total to 9.
So scoreboard is moving at the little lower pace. Low full toss, what a connection. Definitely the ball will be sailing out of the park, and that registers the first sixer in this match. That sixer takes the total to 15, and that concludes over number 2. So after completion of 2, score is 15 for the loss of 1 wicket. DJ. Meanwhile, requesting the captain of Rohit Indians and Royal Challengers Fatorda to kindly come for toss. Captain of Royal Challengers Fatorda and Rohit Indians, kindly come for toss as you are going to play the following match. Rajesh Sote to continue the second over of his individual quota. The think tank behind the stumps, Vikas Desai, mixing up his plans, and the right bowler is been introduced at the right occasion. So meanwhile, the field has been set up for Rajesh Sote, jersey number 3. Meanwhile, a pacey delivery straight to Vikas Desai. No clue for Matin. Slightly down the leg, some stretch of arms by the umpire, signaling that this is going to be called as a wide delivery. So that wide takes the total to 16. We are into the third over. Another similar sort of delivery down the leg stump. Another wide. Total moves to 17. There was another attempt. We have to wait for umpire's signal just to confirm whether it was off the bat. Not it is. It is. The signal has come as a leg buys. So with that, score moves to 18. We are into the third over. What a bowling display so far. Way outside the off-stump stretch of arms by the umpire. Wide is the signal, and that wide takes the total to 19. Meanwhile, requesting the captain of Royal Challengers Fatorda and Rohit Indians to kindly come for toss. Another good delivery. There was a definite swing of the bat, but no connection. So far, Arjun Bhosle has hit only a sixer in this inning. And that definitely the dugout of Amazing Super Giants will be hoping some more big blows. Another good strike straight to the covers. Will be a single. That single takes the total to 20. A good bowling displayed by the bowlers of 6 stars so far. Change in pace, way down the leg stump, deviating from line in length. This is going to be the fourth wide in this over. And that fourth wide takes the total to 21.
Oh dear, what a strike from Matin. Finally, a big strike has come right from the middle of the bat. Heaves the ball towards the square leg. A big six takes the total furthermore to 27. Whether Matin can strike one more time or Rajesh is going to deliver in the right zone. There's a connection, chance of a catch. Another wicket has been taken. A reply from Rajesh Sote takes a wicket off the dangerous looking Matin. Second wicket back to the pavilion. Matin Khan after scoring 6 runs from the bat. DJ. Thank you, DJ. We have the captain of Royal Challengers Fatorda waiting for the captain of Rohit Indians. Requesting this is the final call for the captain of Rohit Indians. Kindly come for toss. So the signal from the main umpire is that this is going to be the batting power play over, in which only 3 fielders can be kept outside the 30-yard circle. So that concludes over number 3, and now handling mic to senior commentator Ashok Jinaik. नए बल्लेबाज मैदान पर दर्शन बांदेकर. धन्यवाद सागर. प्लीज रिक्वेस्ट जो बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने दर्शक है दोस्तों, प्लीज थोड़ा सा बाजू हो जाए. स्ट्राइक एंड पर दर्शन बांदेकर. शॉर्ट पिच गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा. एक सिंगल बना स्कोर के खाते में. मुकाबला मैदान पर दोनों के बीच में अमेजिंग सुपर जायंट्स और 6 स्टार सुपर 6, ये 2 टीम आमने सामने. बल्लेबाजी करती हुई अमेजिंग क्रिकेट टीम. अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से खेला गेंद को डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को आटे उठाते फील्ड करते. एक सिंगल बना स्कोर के खाते में. कहीं ना कहीं रनों की सख्त जरूरत मैदान पर. थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी. शुरू में 2 विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं और सामने से राजेश सोरटे ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की. भूषण गोली इस बार बड़ा शॉट जो कि सीधा हाथों में गेंद चली गई. तो एक के बाद एक विकेटों का सिलसिला मैदान पर जारी दिखाई देता. अब पहला विकेट 8 पर गिरा. दूसरा विकेट बहुत जल्द जो कि एक छोटी सी साझेदारी जरूर बनी 27 पर, और उसके बाद 30 रन जो 3 विकेट के नुकसान पर. खेल जारी चौथे ओवर का. भूषण गोली जो कि सफलता हासिल करते हुए, उससे पहले जो कि अर्जुन भोसले एक छक्का लगाया. उनके साथ अविनाश गावस इस मैच में बहुत सस्ते में लौटे और मतीन खान एक छक्का लगाकर दर्शन बांदेकर फिलहाल मैदान पर खुद के व्यक्तिगत 1 पर और तीसरा विकेट. टीम का स्कोर 30 रन. खेल जारी चौथे ओवर का और न्यू बैटर मैदान पर. नरेश ससोंडेकर टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी
बिल्कुल दारोमदार रहेगी इस मैच में उनके बल्लेबाजी पर। और कहीं ना कहीं 6 ओवर के हम बात करेंगे, जिस तरह से दोपहर के सत्र के बाद लगभग शाम के दौर में मुकाबले हो रहे हैं मैदान पर, एक 50-55 का टोटल कम से कम होना चाहिए सामने वाले टीम के सामने। देखना होगा फिलहाल ये दो बल्लेबाज है, बड़े शॉट के लिए तो दर्शन बांदेकर जाने जाते हैं, और नरेश असरोंडेकर बिल्कुल एक अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर है। फिलहाल अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से भूषण गोली अगली गेंद लेकर। इस बार ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा और एक विकेट वापस निकलता हुआ। थैंक यू डीजे अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ, जो कि लगातार 3 दिन ये सिलसिला, ये क्रिकेट का कारवा चलता रहेगा। और नए बल्लेबाज न्यू बैटर रोहन सालगावकर, रोहन सालगावकर नए बल्लेबाज। तो असलम शेख टॉस कर रहे हैं और टॉस जीता। स्कोर 1 रन के साथ से 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दर्शन बांदेकर स्ट्राइक एंड पर, सभी की निगाहें मैदान पर इस खिलाड़ी के ऊपर। इस बार लेग स्टंप पर गेंद बिल्कुल लेग स्टंप से छोड़कर निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक और सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक होने के साथ राजकिरण राठौड़ और असलम शेख, ये त्रिमूर्ति इस टूर्नामेंट के साथ विराट तेंदुलकर हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, और सर हरीश काकोड़कर और उन्हीं के साथ सर सागर गोसावी और मैं अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत। तमाम उपस्थित मान्यवर, तमाम क्रिकेटर्स जो कि प्रेमी। इस बार आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। एक बेहतरीन थ्रो विकेट कीपर के साथ। तो थर्ड अंपायर के लिए कॉल आ चुका है, जांच परख होगी और उसके साथ जो कि निर्णय होगा मैदान पर। लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष मैदान पर हो रहा है बल्लेबाजी में। जो दारोमदार थी खास करके अर्जुन भोसले पर, वो एक छक्का जरूर लगाया लेकिन सस्ते में लौटे, मैं तो कहूँगा। उन्हीं के साथ अविनाश गावस शुरू के सत्र में पहले मैच में बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला था, वो भी लौटे। मतीन खान आज थोड़े समय तो कहूँगा हाथों के साथ चोटिले है, फिर भी अपने टीम के साथ जरूर हिस्सा ले रहे, खेल रहे हैं। जो कुछ है दर्शन बांदेकर पर और रोहन सालगावकर पर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी रोहन सालगावकर और उन्हीं के साथ दर्शन बांदेकर, ये 2 खिलाड़ी मैदान पर। स्कोर हो चुका है 34। नॉट आउट। तो हमारे तीसरे आग थे असलम शेख। कल के दिन में मोहसिन तहसीलदार वो भी जुड़ जाएंगे इस टूर्नामेंट के साथ। साउथ गोवा प्रीमियर लीग 2022 दिन रात का ये क्रिकेट का बहुत एक बड़ा आयोजन, 3 ओवरसीज खिलाड़ी हर टीम के साथ। और इसी बीच अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से प्रणय गावकर आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। टूर्नामेंट के साथ आप जरूर देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पर, यूट्यूब के साथ हमारे TennisCricket.in के सर्वा संतोष जी नानेकर और उनकी पूरी टीम कैमरामैन के साथ जुड़ चुके हैं। टेनिस क्रिकेट के ये टीम और उन्हीं के साथ एलईडी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से। देखो
आप जरूर देख सकते हैं किस तरह से शॉट लगाया, लंबी दौड़ लगाई फील्डर ने, लेकिन गेंद उनसे पहले निकलती हुई बाउंड्री लाइन को चीरती हुई 4 रन के लिए। बड़ी देर के बाद एक 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। रोहन सलगावकर स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगले गेंद का। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन ठीक से संपर्क नहीं, और विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रणय गावकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 38, लॉस ऑफ 4 विकेट, 38 रन 4 विकेट पर। बैकफुट पर जाकर बढ़िया शॉट, इस बार गेंद थोड़ा सा हवा में पहले आगे निकले थे, लेकिन जैसे देखा गेंद बहुत दूर है, 1 रन पूरा किया और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छा शॉट, 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पर पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं रोहन सालगावकर, उन्हीं के साथ दर्शन बांदेकर और प्रणय गावकर, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हाफ वॉली पर लेकर कारपेट के साथ खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, नॉन स्ट्राइकर एंड पर फिर से सिंगल जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 41, 41 रन 4 विकेट पर। मुकाबला मैदान पर अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी करते हुए 6 स्टार सुपर 6 क्रिकेट टीम के साथ। बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर, इस बार बिल्कुल कोई मौका नहीं, एक गजब का टाइमिंग, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। टेक 47 रन पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ, एक बहुत ही अच्छा ओवर। इस ओवर में रन जरूर बन रहे मैदान पर, 2 शॉट लगे, 1 चौका लगा, 1 छक्का लगा। ओ फुल टॉस गेंद, इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर का, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन, दूसरे रन के लिए हाना हाना कर रहे थे, लेकिन आखिर बढ़ते कदमों को रोका दोनों बल्लेबाजों ने। नो बॉल का इशारा, तो और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में, और उसी के साथ आने वाली गेंद, अंपायर का इशारा फ्री हिट की गेंद, सामने रोहन सालगावकर, एक मौका बन चुका है रोहन सालगावकर को, आने वाली गेंद फ्री हिट की, बिल्कुल एक बड़े शॉट के लिए शायद सोच होगी मैदान पर, और स्कोर हो चुका है टोटल 49, 4 विकेट के नुकसान पर, 39 रन, माफ कीजिए 49 रन 4 विकेट पर। वाइड बॉल का इशारा, तो 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के 50 रन। शुरू में बिल्कुल संघर्ष हो रहा था मैदान पर रनों के लिए, लेकिन ये 2 बैटर मैदान पर जमकर बल्लेबाजी। छोटी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, लाजवाब टाइमिंग, इस बार गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर, रोहन सालगावकर के बल्ले से निकलता हुआ नजाकत भरा छक्का। पांच ओवर के बाद 56, टोटल स्कोर 56 रन 4 विकेट पर। अंतिम ओवर का खेल सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर आखिरी ओवर की गेंद लेकर सोहेल गेंदबाजी करने के लिए अंतिम ओवर में, और दर्शन बांदेकर, इस बार गेंद निकले 4 रन के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
टैंक डीजे चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 60 रन पर, 4 विकेट पर 60 रन। सोहेल गेंदबाजी करते हुए सामने से और घूमकर मारना चाहते थे इस बार। दर्शन बांधेकर गेंद के लाइन से चकमका गए, थोड़ी सी गेंद लेग कटर थे, गेंद ने काटा बदला, गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर लगभग 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर, दर्शन बांधेकर के लिए 4 फील्डर तैनात बाउंड्री लाइन पर कैचिंग पोजीशन में। एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। सोहेल अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाली चोर से अगली गेंद लेकर ओवर पिच गेंद इस बार और सीधी निकली गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। तो जो स्लॉग ओवर था, जो जिस ओवर में बड़े शॉट की सख्त जरूरत थी, वहीं पर दर्शन बांधेकर और एक जगह सामने से विकेट चटकाते हुए 5वां विकेट वापस निकलता हुआ। थैंक यू डीजे अजय जी, धन्यवाद। एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया दर्शन बांधेकर 14 रन पर खुद के, लेकिन 30 रन की कीमती साझेदारी बनी 5वें विकेट के रूप में। 4 विकेट पर 30 रन, लगभग संकट में थी तब से लेकर संभाला रोहन सालगांवकर विकेट पर, और रोहन सालगांवकर का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर दर्शन बांधेकर आउट होकर वापस 14 पर खुद के व्यक्तिगत एक चौका छक्का लगाते हुए टीम का टोटल स्कोर 60 रन 5 विकेट पर आखिरी ओवर। और सोहेल अपने बॉलिंग मार्ग पर, सोहेल शेख बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। नए बल्लेबाज विक्रम और आते आते बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद, फील्डर गेंद के नीचे। एक रन कैच छूटा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 62 रन पर पहुंचा। 62 लॉस ऑफ 5 विकेट। अंतिम ओवर का खेल अभी भी जारी, सोहेल शेख गेंदबाजी करते हुए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट इस बार। सुंदर शॉट बल्ले के बीचों बीच, हाफ वाली पर लेकर एक बेहतरीन शॉट, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव का एक सुंदर शॉट लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विक्रम के बल्ले से निकलता हुआ खुद के व्यक्तिगत 6 पर, और टीम का स्कोर 66 5 विकेट पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ स्टंप पर, विकेट कीपर के हाथों में। 66 रन 5 ओवर 5 विकेट पर टोटल, जो कि 6 ओवर का मुकाबला, और 67 का टोटल जो कि टारगेट रखा है मैच को जीतने के लिए। देखने का एक अच्छा टोटल है, बैलेंस टोटल है, मैं तो कहूंगा फाइटिंग टोटल है, सम्मानजनक टोटल है। बल्लेबाजी की चर्चा, अर्जुन भोसले 11 रन बनाकर, दर्शन बांधेकर 14 रन बनाकर, रोहन सालगांवकर ने एक चौका लगाया, छक्का लगाया 13 रन पर, टोटल 66 और टारगेट 67 का, 67 रनों का टारगेट मैच को जीतने के लिए। शुरू में बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, अपाली कलंगोटकर की गेंदबाजी पर एक छक्का जरूर लगा, लेकिन राजेश सोरटे एक छक्का उन्हीं की गेंदबाजी पर लगा, लेकिन विकेटों को हासिल किया। और आखिर में जो कि 2 चौके लगे सोहेल शेख की गेंदबाजी पर, प्रणय गांवकर ने किफायती गेंदबाजी की, एक चौका लगा, छक्का लगा। तो ये था लोकाजो का पहले 6 ओवर का 66 रन 67 का टारगेट। दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई मैदान पर, और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोड़कर के साथ, उन्हीं की जुबान में माइक्रोफोन पर।
So very good score being posted here, 67 for the loss of 6. 66, 67 is the target in fact. Good piece of batting right from the start from Arjun Bhosle, scored 11. Handy knock here from Darshan Bandekar, 14 runs, and 13 for Rohan Salgaonkar. That's how they posted at 66. 67 is required. How Makta batsman Zatitle begin ground out there. Batsman. We have seen 55, 60 runs, especially at this time of the night when the ball is not flying across too much. It might be a very good total for Amazing Super Giants. 6-star, 6 Super Kings. Here comes both these batsmen. Power hitters, wonderful, stylish and elegant, and can clear any field at any time. So Amazing Super Giants requesting them to set the field fast. Taking a bit longer than expected. The batsmen are ready, umpires are ready, and Amazing Super Giants won 1, lost 1. I guess this is the last match here for 6-star, 6 Super Kings. So this is the last match for 6-star, 6 Super Kings. They won 2, lost 1, and now one innings is left them to win this and make a strong position to enter into the semi-finals. So in comes Avinash Gauss. 67 is the target. Omkar Desai and Vikas Desai. The field has been set here. Let's see whether 6-star Super Kings can win that third match or Amazing Super Giants win their second one. The two of the very good batsmen, Vikas, very stylish and powerful. Omkar. So very good shot. Has he found a gap? I don't think so. Short cover region fielder stops the ball and throws it to keeper. Gives a single. Starts off with a single and in comes Vikas Desai. Lots of supporters for this side right from the morning, right from the afternoon when the match tournament has started. 6-star, 6 Super Kings. They're still hoping that they win this match and make it into the semis. Oh, what a shot! What a shot! And 6 runs. I thought it might go in the hands, but Vikas Desai had hit it with enough power to go over the fence for 6 runs. Magnificent hitting.
Well, W has been very good with a ball and bat, has done a good job for Amazing Super Giants. But now he is facing the class of Vikas Desai. Once again, a lovely shot. What a lovely shot. He had got lots of options, over covers, mid wicket, square leg, but he shows straight down the ground, over baller's head for a lovely hit. He always intended to go up, but not up for a six, always for a boundary. This is a lovely batting, classic batting, skillful batting. Score moves on to 11. That shot has immediately prompted the keeper to stand in front. Maybe Vikas Desai was coming down the track and they want to stop him playing that shot, just going out of the crease. They don't want to give him movement going down the track against W. So slight bit of changes done here by Amazing Super Giants captain and the keeper. Once again, W to bowl to Vikas Desai. Went for that shot that got him 6 of the first ball he faced. This time, no connection, dot ball. We have seen some small changes done here and there. Can bring up the changes in terms of wickets. Should be wide, and are they going for the single? Yes, they get one in terms of bye as well. 2 more to the total. Keeper standing in front, that's the problem. If the ball is not pitched in the right areas, with the pace of W, it makes even difficult to take it in hand cleanly. Ball going down to the third man region, and single considered in terms of extra and a wide signal. Score moves on to 13. That was full toss in the air, up and over. Just had enough height to go over the covers region fielder. Full toss ball bowled by W. Expensive over here for Amazing Super Giants. So this over is turning out to be expensive one. 17 so far, and still a ball left. Oh, went for the switch hit. The fielders were inside. Option was good, but the execution didn't work as the batsman was hoping for. A dot ball to finish. Over number 1 score is 17 without loss. Setting the field for him. This is the 8th match. 2 more matches left after this one. This will be the end of the league for Super Kings, 6-star 6 Super Kings, and they'll be hoping with the start they got in the first over, it will be a good positive finish for them by winning the 3rd match out of 4.
So far, no team has won all their matches. One loss here and there for most of the teams. Amazing has won one, lost one. So again, a good start here. They want a run out, a direct hit. Has Vikas Desai made it in, and it's going to go down to the third umpire. It might be close. Vikas is convinced that he has made it in by dragging the bat inside the crease. So umpire is having a close look, third umpire Aslam Sheikh. So not out is the signal from the third umpire. Vikas Desai has made it in. So that single takes the score to 18. 67 is the target. There was a scare for a while. That's why umpire wanted to be absolutely confirm whether it was run out or not. Once again going for that cross-batted shot in the square leg region. Single. The single takes the score to 19. This time goes for the big one, straight in the hand. Oh, he drops the catch. He drops the catch. That would have been an important catch. It was in the mid-wicket region. And Vikas Desai could have been back in the pavilion. But sometimes because of the trajectory of the light, the ball is very difficult to gauge how it is landing. Moves on to 20, the score. This has been a good over. Just 3 runs conceded of the first 3 ball from Rohan Salgaonkar. Both are going after him. They are itching to go after him, but it's not landing in the spot where they are hoping to get. Once again, he goes for that helicopter shot. Once again, the timing is not right. Fielding has been good. And Vikas Desai goes back as no was said by Omkar from the non-striker's end. Good piece of quick fielding from the fielder from the square leg region. 4 singles of first 4 balls. Magnificent, you can say, for amazing super giant side from Rohan Salgaonkar.
This time a very nice shot. Can he get a boundary in the covers? This time also the running is not how the supporters would have liked. This could have been 2 runs. But maybe they thought it might go for a boundary at the start. The fielding was excellent. Good coverage of the ground from long off region towards the covers. 5 singles of the 5 balls so far. Score moves on to 22. A good comeback by amazing side Super Giants. Once again, right in the block hole. Fantastic over. Not a single loose delivery bowled by Ron Salgaonkar in this over for the batsman to swing the bat. And after completion of 2 overs, the score is 23 without loss. Target is 67. They have got 23, 44 runs required of 24 balls. Let's see who is going to be the bowler to bowl the all-important over. Very important as not a single wicket has been lost. Both the openers are still on the wicket. A chance gone begging in the last over of Vikas Desai. Just cannot drop catches in an important situation like this. Vikas can make you pay for that. So in comes Darshan Bandekar in the bowling attack and he'll be bowling to Omkar. (11 runs per over required. That's once again beautifully bowled. Wide outside, almost joker length delivery. Want to go for the second, but it was not found to be. 11 runs per over required. They got 23 of 2 overs. First over they got 17. Second over just 6 runs considered by Rohan. A good comeback from his side. This is way outside. Way outside of stump. We have to wait for the signal from umpire. No ball signal because it landed outside the pitch marking. It will be a no ball and also will be a free hit as well. And let's see what is in stores for us of this free hit. Vikas Desai will be on strike. The field does not change. Once again, an outside edge. A free hit has costed just 1 run. You can see the intention of the bowler. He's trying to bowl full. Maybe those cutters and just around Yorker length delivery, but outside of stump, where it is very difficult to swing. Let's see the reaction from Omkar of that bowling from Darshan so far. 26 the score moves on to. There's a good shot. That's once again a flick, a half helicopter shot. Fielder is placed. Another single. It's been all singles apart from the first over that gave them 6 and 2 boundaries. After that, it's been just in singles. Very intense match. You can see everyone is watching and people are viewing live also on Tennis Cricket. They are trying to hit a big one. Is not in the slot. Not a single ball has landed in the slot for them to get that wild swing on the leg side. Another single takes the score to 28. It's a lull. It's a lull out there on the ground in both the camps. Intensity high, close match. Last match for 6-6 Super Kings.
Big appeal. But it was hitting the legs. Umpire must be signaling leg by. Exactly, the signal has come from the umpire. Another single. 29 runs. We are into the third over and still a ball left. This ball is important. If this ball comes for a single or a dot ball, I say a very good job done by Darshan. So again, should be a single. They want to take two. Try and put pressure on the fielder. No chance of a second. Once again, another good over. Just 7 runs came. 6 singles and 1 wide. That will finish over number 3. Score is 30 for the loss of no wicket, and next 3 overs you require 37 runs to win. Exactly at 12 runs per over. So at the start of the innings it was 11 runs per over, and now halfway mark of the innings of run chase, 37 runs required of 18 balls. And it's over to Sagar Goswami. Thank you, DJ. More 37 runs required from 18 legal deliveries, and both the openers are out in the middle, hanging for a quite long time. So now a huge responsibility. A win will secure the place for 6-star Super Kings into the semi-finals. And if amazing Super Giants win this match, then definitely there will be a lot of flavor at the points table. So a must-win match for both the teams. More 37 runs required. And if we talk about the tennis ball cricket language, then just 6 hits away from the victory. 6-star Super Kings. So the captain of the fielding side is setting the field for his bowler. None other than a mystery bowler, I must say. Varad Davolkar has been handed the responsibility to deliver. A leg spin, chance of a catch. And the catch finally has been taken at the mid-wicket boundary rope. Vikas Desai back to the pavilion. First wicket goes down at the score of 30. DJ. So new man in is Bhushan Gore. And meanwhile, he was appealing for a wide delivery as ball has bounced a bit. Meanwhile,
The umpires allowed it as a legal delivery. Switch hit was the attempt. Meanwhile, 2 dot balls bowled by Varat Dabholkar in this crucial juncture. We are into the 4th over. Score is still at 30 runs and the fall of a wicket. So far, a decent delivery is bowled by Varat Dabholkar. Another googly as the ball is deviating away from the keeper towards the leg side. Wide is the signal from the umpire and a run. So now finally the scoreboard moves to 2 runs more. Score moves to 32. More 35 runs required. And now Omkar Desai on the striking end. Full pitch equally well played. The fielder is patrolling the fence. Ball bounces quite higher and even goes away from the fielder. So that boundary takes the total to 36. If the fielder had to attempt with one hand, then definitely there was a chance to put the ball inside the boundary rope. But the double hand attempt made it difficult for fielder himself. Let's see what is going to come next. Omkar Desai at the striking end. Varat Dabholkar waiting for Omkar to take the charge at the striking end. With the ball in his hand, here Varat right arm over the stumps. Another pacey delivery. No chance for Omkar. And another dot ball delivered. So word of advice from wicket keeper Arjun Bhosle to his fellow mate as where to deliver. Congratulate him for getting a dot delivery. Short pitch delivery down the leg stump as Omkar has sensed that it is going to be called a wide. Leaves the ball to travel towards the keeper and he has guessed it right. Wide is the signal from the umpire. Another couple of runs. Score moves to 38. A cross-batted hit only towards the fielder at the widest mid-wicket. Good throw towards the striking end. But both the batsmen are quick enough. Completes another couple of runs to take the total to 40. So 10 runs have come from this over. Score moves to 40. 40 for the loss of 1 wicket after the completion of 4 overs. So 12 ball, 27 runs is the requirement. So this is going to be the crucial over for either side. Dot balls will take the game away slightly from the batting team. And if a boundary or a couple of boundaries that come in this over, the momentum will be shifted towards the batting team. So fielding team, captain not to forget, 25 minutes. The clock is running. Take care of the proceedings. 12 legal deliveries to go. Two overs, 27 runs required. So Darshan Bandekar, the Australian player, has been handed over the ball to deliver in this penultimate over. 12 legal deliveries, 27 runs required.
Whether it is going to be the bat or the ball that will be topping in this over, the time is going to tell us. Meanwhile, Omkar on the striking end will be facing Darshan. Another good delivery, equally well played. Ball goes towards the bowler. Meanwhile, good running between the wicket. A single has been snatched. That takes the total to 42. More 25 runs required. Is Omkar going to be a storm in this inning? Cause so far he has been quiet. Whether he can hit or Darshan is not going to give an inch here and there. The time will tell us. Fifth over in progress. Good delivery, no chance whatsoever. Beautiful delivery, but won't be able to stop the single. One more single, taking the total to 43. From here on, if either of the batsmen is capable of connecting the ball right from the middle of the bat, then only 4 shots, 4 sixes is the necessity. A fancy shot attempted, but not getting the placement right. Ball goes towards the point area. And that is the signal from the main umpire that it is going to be a leg bye. So far, singles have come in this over. Score moves to 44. Down the leg stump, equally well kept. Otherwise, definitely there would have been more runs. Wide is the signal from the umpire. With that extra, score moves to 45. A word of advice to his fellow mate from Arjun Bhosle, immediately walking towards his bowler, telling him which are the right areas to deliver as Omkar is on the striking end, and how to keep Omkar little busy with the singles rather than going for the fancy shot. The time will tell us whether this strategy of word of advice is going to work for the fielding side, or Omkar is coming out with some of the plans to shatter the dream. Oh my dear, what a lovely strike, shuffling towards the off stump. A sweet connection takes the ball out of the park. That is even the most handsome strike from the bat of a dude, Omkar Desai, taking the total to 51. Score moves to 51. More 16 runs required. Still a short meeting is on. Let's see who is going to be the bowler, who is going to take the responsibility, who is going to ask the ball from the captain. Give it to me and I'm going to deliver it for our team. So let's see who is going to be that courageous bowler. As 16 runs required. 3 sixes to defend if we talk about the tennis ball cricket language. Whether amazing super giants have enough strength in their shoulders to restrict the batting team from scoring those 15 runs. 15 runs to tie the match. 16 runs is the required target in the final over. And the man on strike is Bhushan Gole. So let's see, many strategies will be seen in the final over. 16 runs required. Omkar, who has struck a beautiful 6, is at the non-striker's end. So we have to see what is going to be the strategy of the batting team as well. Whether Bhushan is going for the glory or he holds on his nerve. And it looks to be Deep Kerkar, the lucky factor for most of the teams in Goa.
And I've also seen a bright smile on the face of Ashok Ji Naik, as we have called it. Deep Kerkar, 16 runs to defend, and he is capable. He has done it at the numerous occasion, and he has been included in the team for the first time in this tournament. And what an occasion for him. 16 runs to defend. Bhushan on the striking end. First delivery into the zone. A single is on. And that single brings Omkar on the striking end. 15 runs required. Still 3 sixes to be hit in this over. 5 deliveries remaining in this over. Deep Kerkar, right arm over the stumps. Whether this is going to be the spoiler in this match, whether Deep Kerkar is going to be that spoiler, the time will tell us. 5 deliveries remaining. Omkar Desai on the striking end. So far, a beautiful sixer, handsome sixer has come from the bat of Omkar. Good contest is on. Deeptesh versus Omkar. Lovely delivery, but slightly outside the off-stump stretch of arms by the umpire, saying that this is an illegal delivery. Wide is the signal. That minimizes target by 1 more run. More 14 runs required. Maybe Omkar is finding it difficult to hold on the grip. That's why some treatment is happening out in the middle. Maybe the gripper, a sort of cream that has been available in the market has been brought so that he gets the better grip of the willow. So after doing that arrangement, here we are back with the crucial juncture in this match. Lovely delivery, there's a wonderful strike, chance of a catch, whether it is going to be held, yes it is. Deeptesh Kerkar strikes in the final over. Omkar Desai back to the pavilion. Second wicket goes down and the lucky charm has striked into the final over. Still the match can be at anyone's plot. 4 deliveries remaining, 14 runs to get. So now the big guy, strongest man of the side has arrived out in the middle. Riaz Khan, who has hit 2 sixes in the previous encounter where 13 runs were required. So let's see whether he can repeat the history. Deeptesh Kerkar, the bowler. And here Deeptesh is not going to give things easy. 4 deliveries remaining of this over. 14 runs to